Yes, good evening everyone. Welcome to the day number 4 of this prestigious MSc Trophy 2025, which is proudly presented by Moodbidri Sports Club as they're celebrating their 35 years of journey in sports and games. So that, yes, Gopi, the fourth day, most excitement day of cricket, because the top teams from South Canara district, Mangalore will go into play in this the fourth night, and definitely it's going to be a more exciting day of cricket. Of course, first 3 days, the very successful cricket tournament which is organized in this most beautiful Suraj Maidan cricket ground. And Gopi, the team Moodbidri Sports Club has got a history of 35 years. It's been outstanding journey, isn't it? And the organization which is organized the first time in floodlight in 1999. So they got a fantastic history here. So it's one more big tournament, a prestigious cricket tournament, MSc Trophy 2025. First of all, we would like to congratulate Moodbidri Sports Club, their outstanding journey in this Underarm cricket. And now, Gopi, coming back to this particular day, the team which is participating in this cricket tournament, of course, we are going to start with the top performers of the South Canara district. Team Gori Young Boys takes on Young Friends Suruva, and that might be the most excitement day for cricket lovers. And at the same time, Gopi, coming to the condition, the condition here, of course, by the grace of God, we are completed 3 days, and yesterday night might be a little bit rain interrupted, but not totally. And after a few minutes, we restarted the match, and we finished the 3 night matches under floodlight. And hopefully, Gopi, we are expecting that the same kind of the grace of God will going to continue till the tomorrow night will be the last day of this cricket tournament. And Gopi, what about your opinion? I just want to know your opinion about that arrangements, the organizing skill of the Moodbidri Sports Club. It looks like, Gopi, it was an international setup, isn't it? Especially the very attractive stages, we can see that it's absolutely outstanding, isn't it? What do you think about this particular MSc Trophy 2025? यस एब्सोल्युटली सतीश, जैसा कि मैं कहना चाहूँगा इस वक्त एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजिंग जहाँ तक सवाल है, इस वक्त मूडबिद्री स्पोर्ट्स क्लब ने जिस तरीके से इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर चल रही हो, और 3 दिन में एक बेहतर क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। और 3 दिन हालांकि तो कुछ हद तक वर्षा ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो मैचेस थे वो मैचेस पूरे हुए। और आज टुडे इज़ अ बिग डे, एंड मैंगलोर के जो प्रतिष्ठित टीमों का मुकाबला आज यहाँ पर होगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम फैंटास्टिक बैटल इन दिस डे नंबर 4 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MSc Trophy 2025. They are celebrating their 35th year, and because of that they are organizing this such a fantastic tournament in the name of MSc Trophy 2025. Once again हम अभिवादन करेंगे मूडबिद्री स्पोर्ट्स क्लब के सर्व सदस्यों को, अध्यक्ष और सर्व सदस्यों को, कि हमें भी इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट का एक हिस्सा बनने का मौका हमें प्रदान किया, बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट का। और जहाँ तक आज का सवाल है, टुडे इज अ बिग डे, डे नंबर 4, एंड वी होपफुली वी आर गेटिंग अ फैंटास्टिक बैटल इन दिस डे नंबर 4. Young Friends Suruva takes over Gori Young Boys in their regular match. After that, KFC Kodikal will take over Torpedoes का नासनिया मालेमार का मुकाबला MSc Moodbidri के साथ। और उसके बाद NM मैंगलोर और नजमा Moodbidri यहाँ पर भिड़ेंगे मैच आज के चौथे मैच में। और उसके बाद दूसरे दौर का मैच खेला जाएगा। तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर एक उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक यादगार श्रृंखला होने की पूरी छाप की तैयारी में। और निश्चित रूप से कई वर्षों तक क्रीड़ाभिमानी याद रखेंगे। और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं सतीश, आज और कल एक बेहतरीन क्रिकेट हमें इस श्रृंखला के अंतर्गत देखने को मिलेगा, इस फैंटास्टिक टूर्नामेंट, इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत MSc ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत। और एक बार फिर से हम अभिवादन करते हैं मूडबिद्री स्पोर्ट्स क्लब का कि उन्होंने इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। Exactly, Gopi. It was nevertheless it was an international standard cricket tournament which is organized by team Moodbidri Sports Club. And just coming back to the fourth day, Gopi, slight a bit of change in weather condition, isn't it? And 3 days we witnessed some hot condition in the evening itself. But today we are seeing some cool breeze is passing in the middle of the ground, isn't it? And it might be not a good news, but having some breeze in the ground,
might be the cloud can clear immediately because the black clouds which is covered, but hopefully there will be no rain. Just coming back to the condition of the pitch, Gopi, it's absolutely fantastic. It's not looks like it's going to be a fourth day cricket pitch. Such a wonderful job done by the curators of the pitch. Have a look at the Gopi. It's a very strong. The very strong is edited. Never looks like it's going to be anything is spoiled in this particular 3 days of cricket. This is the way that we are talking about the efforts which is given for this particular cricket tournament. Because Gopi, we are only talking about the successful cricket. But if you want to make a cricket successful, I think the first thing you have to do the very good pitch. You have to do the very good pitch. It will going to match for batters as well as the bowlers. So 3 days we are witnessing some both batters as well as the bowlers. They are dominated. That means it was a very good the pitch which is given by the pitch maker, and a slight bit helpful for the spin bowler. But today, Gopi, looks like it's going to be the high scoring game, because seeing the weather condition, of course, in underarm cricket, the more than the condition of the pitch, Gopi, we have to see the weather condition. The shot selection is going to be very key. Which side the air is flowing. At the same time, the ball which is used for the particular tournament, that will be comes into play. And of course, in this particular tournament, it's not that much of soft. This is not that much of hard ball. It's a medium, so that it's going to be a benefit for both the bowler as well as the batter. Hopefully, Gopi, we are just expecting some good battle from all the 8 teams which is participating in this prestigious MSC Trophy 2025, and wishing every teams please play well and play fair and play hard, and respect the decision of the umpires. That's very important in cricket. At the same time, Gopi, all the best for the all 8 teams. That's it from the middle of the pitch. Thank you.
Club in this most beautiful and historical Sauhard. Swaraj Maidan here in Moodbidri. And we are going to start the match number 1 of night number 4 of this MSC Trophy 2025. Meanwhile, I request all the players, those who are not signed yet, Gori young boys as well as young friends Urua, kindly request you to complete your formalities of signature. Already you exceeds the time limits. And this is a humble request from both the teams. Please complete the signature and please get ready for the tossing ceremony.
So thank you, Rafiz Moodbidri. Thank you very much, DJ. And we are going to start. And first of all, I would like to um, say sorry for all the cricket lovers for waiting for almost an half an hour. To a little bit delayed for the beginning of the fourth today. And we are going to start now after the winning the toss. Captain of Gori Young Boys elected to ball first against Young Friends Hurwa. And the Young Friends Hurwa and Gori Young Boys, the top teams in the South Kenda district, will going to have a contest in this first match of fourth night of this cricket tournament. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So, Moodbidri Sports Club presents MSC Trophy 2025 Underarm Floodlight Cricket Tournament as they're celebrating their 35 years of journey in cricket. Just they wanted to make this journey memorable one, organizing this prestigious cricket tournament in the name of MSC Trophy 2025. After that, a very successful third night of this cricket tournament, we are into the fourth night and most excitement day of this cricket tournament, because top ranking teams will going to have a contest in this fantastic day for cricket. After the fielding team enters the ground, now two umpires and a drone camera, just like an international standard. They are covering our two umpires, a very experienced umpire Roland Pinto, along with him Arish Patel is the one more experienced umpire, are walking towards the middle here. And after that, there are a lot of effort in the three night. It's almost late night. It's not easy for the umpires, especially when you are standing in the late night. The first day it's 1:30, second day of course till 2:30, and yesterday it's at 3 o'clock, till 3 o'clock. These three umpires absolutely did a great job for the success of 3 nights of prestigious MSC Trophy 2025. So opening batters already they made their way to the middle of the pitch for the team Young Friends Hurwa. Young Friends Hurwa, one of the most successful team in the season, the 24-25. After being some lifting the prestigious titles under their name, they play against Gori Young Boys. Gori Young Boys, one more historical team, has got a lot of the history as far as their journey is concerned. The more than 35-40 years of history what Gori Young Boys has got. Now the drone camera straight away coming to our commentary box, and first time I think the drone camera which is coming towards our commentary box, just focusing over the commentary box, because in the last 3 night the commentary box is missing in that screen, and today the Irfan of Bedra Media, he is the operator of drone camera, so he is just wanted to show who are there in the commentary box. My right side, Habib, one of the most seniors, the scorer operating scorebook here, and myself Satish Salyan. In English, my friend Mr. Gopi will going to have a mic, and Rafiz Moodbidri, the voice of Moodbidri, will going to join here in the commentary box soon. And altogether, it's been outstanding. The officials panels for this prestigious MSC Trophy 2025. Opening batters, most destructive left-hand batter in the present Underarm cricket, Arshad Bajal will be the batter. Came into bat along with one more stylish right-hand batter, the Sajid, the man in terrific form, came into bat here to open the innings for the team Young Friends Hurwa. Quite interestingly, because I'm watching Sajid, sometime is coming in a number 1 and number 2 position, but in this big format of a game, isn't it? 8 overs format of a game. It's been outstanding concept from the organizers to have a full 8 overs game.
And this is going to be a great one to see, because in the present cricket, in the most of the tournaments, we are seeing that it was 5, 4, 3, 6 overs. But it's not good enough for the players to showcase their actual talent, isn't it? And even for the teams, very difficult to bounce back when if you are having a 4 or 5 hours game. But if you have got a 8 hours game, that will be good enough for any team to back in the game, and good enough for any the players to showcase their exact talent what they got, because that will give enough time for even for the batter or for the bowlers. So the bowler will going to start the proceedings from the far end for team Gori Young Boys. As always, Fayaz, who starts from the far end, that is MSC, the main stage end. None of the good starter as far as Underarm cricket is concerned. So, coming to this match, the Fayaz will going to start from the far end, and Arshad Bajal has got one deep square leg and one at the deep long on the two fielders in the deep. The first ball, and first ball, the first run in the form of looks like umpire Roland Pinto has not given any decision yet. Now he's giving the decision either wide +1, 2 wides to start with. And young friends have already got 2 runs without any delivery. And batter now they got they crossed here. Because of that, Sajid will go in to take the strike. Just I want to see the field set here. There is fielder at short mid off, extra cover, short cover, and short gully, short fine leg, short square leg in behind the square, short mid wicket, deep mid wicket, and long on for Sajid. This time straight to the fielder. Oh, he drops the catch. The young man Pritesh, absolutely the drop of the lollipop, isn't it? The wicket, what could be for Fayaz. The Pritesh, the fielder at extra cover. The young man, a very young talented boy there at extra cover, couldn't manage to hold that catch. Just ball is popped up from his hand, and Sajid has got a life. This time, lovely shot. This is Arshad Bajal for you. What a glorious lofted extra cover drive. What the name he has got, the killer of the ball. Absolutely the first delivery itself. It's a killing instincts which is already opened from his bat. It's been a great shot, I want to tell you. Nothing much wrong with the line of the ball, but it's the exquisite timing from Arshad Bajal. You know exactly the 2 protection which is given in the onside division. No one there in the deep in the offside. And quite easily dispatch that one onto deep extra cover boundary for 4 runs. Arshad Bajal, the big name as far as Underarm cricket is concerned. Not only in Underarm, but he has got a name and fame in the overarm cricket as well. Whether it's going to be a soft ball or a hard ball tennis ball. Oh, this is what Arshad Bajal can do in the power play. Why you are calling is a killer of the ball? Because of his killing instinct, it is going to be very dangerous for any bowler. He's not seeing who is bowling to him. He just seeing the ball which is coming to him, and he just wanted to kill that ball. That's been an outstanding start here from Arshad Bajal. Back-to-back 2 boundaries here. That stroke will going to frustrate the bowler, isn't it? Because ball almost targeting a midland off stamp. The way that the batter is having a bat speed, and you can't believe you are playing a stroke, this cross-batted stroke against the big pace bowler. Everybody know what Fayaz can do in his bowling. He's got a lot of pace in his bowling. Hitting him is not easy. Again, this time in the other way. This time he got a distance. Absolutely a magnificent stroke here from Arshad. What a player he's been. What a player he's been. Even though
Swaraj Maidan, everybody knows, as the dimension of this cricket ground is concerned. It's not easy to get the distance towards a deep long on, wideish long on. How easily done that one. Just stand and delivered. Have a look at the replay again. Perfectly struck. Electrifying start here for young friends. Again, one more. This time fielder is in the deep long on. We're going to cut it off, just moving to his right, and ample time for the batter Ashad to complete the single. Runs are coming like a fast flowing waters of the river in the first over itself. 18 runs coming from this over already. Came from this over already. Sajid, the man has got a life. The first ball he faced. Wait and see how we're going to capitalize that life. Fayaz balls. This time Sajid, classical. This is a classical Sajid for you. This is the combination what we are watching. One is a destructive, one is a classical. And first over which is completed. After completion of first over, young friend Surua has got an electrifying start here. They scored 19 runs in 1 over. It's a great start from opening batter. Especially Arshad Bajal, absolutely going with a big gun. Thank you, DJ. Welcome back. After that, the first over, which is highly expensive over, which is bowled by Fayaz, not regularly, because Fayaz is the bowler is a kind of bowler who always gives good start for team Gori Young Boys. But it's a different ball game, isn't it? If you're having a batter like Arshad Bajal in front of you, it's not so easy job. Now Fall is the bowler. The great all-rounder, one of the top all-rounder in the present cricket, will go into bowl second over of the power play. Using his feet, Sajid so good in that shot. We are witnessed his footwork in that JD Trophy 2025, which is completed the last week. And the young friend Surua, of course, they couldn't manage to reach to the final. But the way that they fought that match, against the team Torpedoes Khana, especially the Sajid is a man. He's played a wonderful innings, but unfortunately his wicket has changed the complexion of the game. The Mansoor, one who took the one spectacular catch at Cowers region, really changing the game. And Torpedoes Khana, they become the champion in that JD Trophy. Here is the next one. And outside the line of leg stump, well within the reach of the batter. And very lucky escape here for bowler Naufal, because he's got a dot ball, which is one of his strongest scoring zone of Arshad Bajal. That is outside the line of leg stump. He swings his bat, but couldn't manage to make any contact for that ball. Naufal, experienced campaigner, how to put some break on the run rate. This empty one didn't quite time it properly, played it down to mid-off region. And before Prajwal will go into move to his left little bit to field the ball, ample time for the batter to complete the single. So with that single, little correction, there is no run at all in that occasion, dot ball, and scoreboard remains 20 on the board. Swept the ball nicely down to square leg region for a walkable single. With the addition of single, the scoreboard moves under 21 on the board for the loss, without loss of any wicket. So far it's going to be a good start here from Naufal. Takes keeping that tight line and length. You know exactly, first over which is expensive. They have to get one good over here for Gori Young Boys. Again using his feet, straight to the answer fielder. Oh, underarm throw. Again that young man. Of course he need to give some power in the throw, not like an underarm throw, because you are trying for the big wicket. Sajid, of course, Sajid today dealing with some luck. The second opportunity for him, the same fielder has gave that opportunity.
Pritesh. Of course, some excuse for him, the young man. It's not so easy to come and perform with a tournament, big tournament like this. It takes a little bit time for the young man to settle down for the situation and condition. They're going to be a wide. This is going to be a wide and a frustration for the captain of Gori Young Boys, because so far in this over, Naufal did a lot of hard work, but that hard work which is gone in vain. That was a couple of runs which is good enough for the team, Young Friends Surva, to keep the momentum what they got in the first over. This time played it towards extra coverage, not quite intended from Sajid. He just wanted to work the ball on the onside region, just like a helicopter shot, roll up the wrist which is comes into play. So compared to the first over, this is a better over. And after completion of over number 2, it's 26 on the board. 7 runs which is came from this over of Naufal. Time for DJ. Thank you, DJ. 2 overs which is comes to an end, and the 26 on the board in 2 overs. Young Friends Surva has got a very good start with that for the first 2 overs, which is the power play overs, which is belongs to team Young Friends Surva. They scored runs exactly at 13 runs per over, and wait and see how well Gori Young Boys will going to bounce back. Gori Young Boys, one more very popular team, just like Young Friends Surva. And especially when you are coming to this region, the Moodbidri, Karkala, they got their own followers, the fan followers, always behind Gori Young Boys. Even Young Friends Surva as well, they got their own fan followers. So we can witnessing some good crowd in the first match itself here in this Swaraj Maidan. Excellent crowd. The starts with the wide. Ansar brought into attack. One more experienced campaigner brought into attack from the far end. Starts with the warm-up delivery of the evening. Gone outside the line of leg stump. Point called by umpire. 27 on the board without loss of any wicket. Ansar. Short run up. Pass umpire Roland Pinto. This time again Arshad Bajal wanted to go for the one more expansive drive. Doesn't get hold up that properly, but good enough for him to complete the single. With the addition of that single score, numbers on to 28 on the board. 28 without loss of any wicket. Both opening batters, left and right combination. Absolutely doing a great job so far for the Young Friends Surva. The Gori Young Boys bowlers have to do something special. They have to get 1 or 2 wickets quickly if they wanted to put the break on the run rate. This time, reverse sweep comes into play. And Riaz, the man, quick running between the wicket. What Sajid wanted to do this time. They wanted to go for the second in the negation. And good piece of fielding there from Riaz. Quickly is moving to the direction of the ball, denying the second from the batter. Sajid not realizing that he thought it might be a second run because the ball is went in the gap. But the way that Riaz is chased that ball and quickly realizing the ball is in the hand of Riaz. Then he stops his runs, and otherwise definitely is asking for trouble if they wanted to come back for the second. Now Arshad will go into face Ansar. This time have a look at the wrist work here from this man. He's been outstanding. How strong wrist he's got that one. Absolutely perfectly struck. Have a look at that one. What a magnificent stroke. That was absolutely glorious.
Effortless, isn't it? Just a roll of the wrist. Minimum effort, maximum result. Fantastic display of batting. Oh, this time he went for the big one. This is quite a big one and a huge one. One of the biggest six I want to tell you in the last fortnight. This is the huge six came from the bat of destructive left-hand batter Arshad Bajal. Have a look at the stroke. High and handsome. Almost ball is landing in front of the main stage. What a player he's been. The spectator definitely, they got excitement from this man. He's definitely an entertainer. If you get going. What a striker. Boundary followed by six. The bowler under pressure. Ansar. Sam again after he played some horizontal cricketing stroke. Orthodox cricketing stroke. I don't know why he's trying for that unorthodox cricketing stroke. Because he's so good in that orthodox cricketing stroke. All we can see that the classical and orthodox cricketing stroke. This time he's trying for the reverse sweep. Missed it completely. Sweeps it very hard in the gap. Riaz behind the ball. He won't get that one. This is what classical and clever cricket here from Arshad Bajal. Again we can see that effortless. Just using the pace, isn't it? You know exactly the fine leg inside the ring. Just a classical touch. The classical sweep is good enough to defeat the fine leg. The outfield is so quick in that occasion. The ball winning the race against the fielder. This is turning out to be a one more expensive over. 17 runs came from that over after completion of 3 overs. The team young friends Urva, they're cruising towards absolutely a mountain of runs. 43 in 3. Thank you, DJ. And what an explosive knock here from Arshad Bajal. 31 in just 13 deliveries he faced. And one of the best innings I will tell you so far in this fourth night of this cricket tournament. Next match, KFC Kodikal takes on Torpedoes Khana. So that I request all the players of both the teams, kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. Please cooperate with the organizer. No change in bowling. No fall to continue. Starts with slower and classical. A classical cover drive from Sajid. So coming back to Sajid, this is what the combination what I'm talking about. One is explosive batter, destructive batter. Another one is classical batter. And Sajid knows that his duty is to just pick the single, rotate the strike and get Arshad Bajal into the strike. This is what the game plan is all about, isn't it? That will definitely needed for the opening batters. The combination, why the captain is sending him this to batter, to do the same job. It's not like the Sajid is not having any potential of hitting a big shots. He's a different kind of batter. Oh, Arshad Bajal, he's unstoppable today. He's unstoppable. He's absolutely playing some unbelievable, phenomenal cricketing stroke from Arshad. This is one of his favorite. 50 comes up here for young friends who are in that sixth. Have a look at the stroke. This has been amazing. Incredible batting performance here from Arshad Bajal. The slower one, but negotiated very well by Arshad, seeing the slowness of the delivery. Chipped it away half-heartedly. You know exactly there is a deep field and a deep cover point. Just a single, the 51, the total score, but more than 80% of the runs which came from Arshad Bajal's bat. This is what Sajid is doing here. This is what Sajid is doing. Excellent job rotating the strike and getting Arshad Bajal into strike. Again, no foul.
Right arm over the kiddie balls. One more single added total with the addition of that single score. And moves on to 52 on the board. Outside the line of off stamp, and Sajid wanted to go for the reverse sweep, and seeing that line of the ball, he can't play that one. But just like a left-hand batter steering the ball down to third man, he's managed to rotate the strike. One more expensive over which is comes in, and after completion of 4 overs, the total score is 54 on the board, 54 without loss of any wicket. It's absolutely good start for team Young Friends Surua. The Young Friends Surua are 54 on the board, and now 4 overs remaining, and wait and see how much Young Friends Surua will going to get the run. They got all 10 wickets stand. They're cruising towards a huge one. They got, if the projected score in the same run rate, they got a chance to get 3 figures, 100 in the same run rate. And Gopi, what a batting display from killer of the ball, and Gabbar is on fire. And in the first 4 overs, we are just seeing the ball is which is going all around the ground. One of the most destructive batter in the present underarm cricket, absolutely going after the bowlers of Gori Young Boys. And Gopi, something special which is required from the bowlers of Gori Young Boys, how to break this partnership, especially the wicket of Bajal is very important for the Gori Young Boys if they wanted to put the break on the run rate. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। इस वक्त गोरी यंग बॉयज को इस वक्त चाहिए विकेट अरशद बजाल का, लेकिन पहली गेंद पर इस वक्त रनआउट के मौके से बच चुके हैं। और निश्चित रूप से द फर्स्ट 4 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बैट्समैन ऑफ यंग फ्रेंड्स। दे आर डोमिनेटिंग इन द फर्स्ट 4 ओवर्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त कम बैक करना है, तो इस वक्त खासकर अरशद बजाल का विकेट इस वक्त उखाड़ना होगा गेंदबाजों को गोरी यंग बॉयज का। तो देखते हैं यहाँ पर उनके गेंदबाज बचे हुए 4 ओवर में क्या करते हैं। गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। फयाज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा था और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा। और निश्चित रूप से यहाँ पर गोरी यंग बॉयज के लिए परेशानियां काफी हद तक बढ़ते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट फयाज की गेंद अरशद के लिए इनसाइड आउट क्रिकेट खेला। गेंद को इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। जस्ट स्कूप्ड इट अवे इनसाइड आउट क्रिकेट। ही प्लेड एट द लास्ट मोमेंट and he finds the gap as well and a couple of runs added to the total। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 57 रनों पर। 57 on the board, yet to lose a wicket। So what a fantastic partnership is now building up here। Opening partnership for young friends between Arshad Bajal and Sajid। फयाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अरशद के लिए। गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके और रन्स यहाँ पर नहीं मिला। निश्चित रूप से अरशद बजाल इस वक्त, और यहाँ पर अपील जारी है विकेट कीपर जो कि इस वक्त अपील करते हुए अंतिम क्षण में अरशद बजाल ने गेंद को रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहता, लेकिन आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा अरशद बजाल कुछ कहते हुए इस वक्त अंपायर से, इसको अलग अंपायर से। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 57 रनों पर। तो दोनों अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए और लगभग ज़मीन के सहारे गेंद आई थी और आखिरकार रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके थे अरशद और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच। तीसरे अंपायर के लिए रिव्यू हुआ इस वक्त लिया गया है और देखते हैं तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धारित है। क्या गेंद स्टंप आउट के लिए, तो क्या गेंद को विकेट कीपर ने जब विकेटों पर लगाया था तब अरशद बजाल क्रीज पर मौजूद थे या नहीं, ये देखने के लिए। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, KFC कोडिकल वर्सेस Shortput Scona। वन मोर फैंटास्टिक मैच इज नाउ कमिंग अप right after this match between KFC कोडिकल वर्सेस Shortput Scona, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। आज बेहतरीन मैचेस खेले जाएंगे। तीसरा मैच होगा स्नेहा मालेमार और MSC मुडबिद्री ए के बीच जो कि मेज़बान टीम है, और उसके बाद चौथे मैच में भिड़ेंगे NM मैंगलोर और नज़मा मुडबिद्री।
तो निश्चित रूप से इस श्रृंखला के इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एक रोचक और बेहतरीन क्रिकेट इस चौथे दिन में इन बड़े टीमों के बीच हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, एमएससी ट्रॉफी 2025 एक बेहतरीन श्रृंखला शानदार प्रगति करते हैं। बाउल्ड आउट, इन फैक्ट द बॉल स्टक टू द स्टंप एंड द बिल्स आर डिस्टर्ब्ड एंड दैट इज द एंड ऑफ द फैंटास्टिक इनिंग्स फ्रॉम अरशद बजाल। तो अरशद बजाल ने जो काम उन्हें करने के लिए भेजा था वो काम वो पूरा कर चुके हैं इस वक्त, और पेविलियन वापस लौटते हुए 41 रन उन्होंने बनाए। और जहां तक सवाल है, 18 गेंदों में 41 रन उन्होंने बनाए। ही स्कोर्ड, अरशद बजाल स्कोर्ड 41 रन्स इन जस्ट 18 डिलीवरीज, almost 230 plus strike rate. So this is going to be absolutely fantastic display came from Arshad Bajal. 41 of 18 deliveries, and at last the opening partnership has been broken. Now the score is 57 on the board for losing one wicket. 57 runs opening partnership has been broken. और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, अजमल इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और आखिरकार विकेट तो जरूर गोरियांग बॉयज गेंदबाज प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी लेट, काफ़ी देरी से। लेकिन यहाँ पर कमबैक करने के लिए अब ऐसा कहना पड़ेगा, एक उत्कृष्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा गोरियांग बॉयज को बचे हुए 3+ ओवर्स में। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार फयाज अजमल के लिए। ये गेंद अजमल ने क्लासिकल, एब्सोल्युटली क्लासिकल। और जहां तक अजमल का सवाल है, तकनीकी और आक्रामक मिश्रित बल्लेबाजी वो करते हैं, और यहाँ पर इस स्ट्रोक को हल्के से उन्होंने चिप कर दिया था, उछाल दिया था इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साजिद जो कि अब तक सपोर्टिंग किरदार अदा करते रहे अरशद बजाल का, इस बार गेंद को स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। फील्डर काफी पीछे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 रनों पर। 59 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दर्शक लगभग मैदान पर भर चुके हैं, और भरनी भी चाहिए, क्योंकि आज जो कि बेहतर टीमों के बीच, मंगलूर के प्रतिष्ठित टीमों के बीच मैचेस इस वक्त खेले जाएंगे। और पहले मैच में इस वक्त मंगलूर की 2 प्रतिष्ठित टीमें इस वक्त भिड़ रही है, यंग फ्रेंड्स और गोरियांग बॉयज। और निश्चित रूप से जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, एमएससी ट्रॉफी 2025 सेलिब्रेटिंग 35 years of cricket, and because of this they are organizing this fantastic Underarm floodlight cricket tournament in the name of MSC Trophy 2025, proudly presented by Moodbidri Sports Club. और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए कमेंटेटर एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मुर्शीद तो मुर्शीद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज साजिद। और इस बीच मुर्शीद अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा साजिद ने, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली इन फैक्ट, बट ही गॉट अ सिंगल साइड बिट ऑफ फंबल देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कम बैक फॉर द सेकंड रन। अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए थे, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 61 रनों पर। 61 for 1। दे आर हेडिंग टुवर्ड्स टू अ ह्यूज टोटल एट दिस सिचुएशन यंग फ्रेंड्स। और इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त मुर्शीद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए साजिद के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद था। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला, गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 62 रनों पर। अरशद बजाल का विकेट गिर जाने के बाद रन की औसत में कुछ हद तक गिरावट इस वक्त जरूर आई है, लेकिन क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज साजिद और अजमल इस वक्त एक साझेदारी निभाने की कोशिश करते हुए, और गेंदबाज मुर्शीद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, इस वक्त कुछ हद तक गेंद डिविएट होते हुए गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 62 रनों पर। 62 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और मुर्शीद अपने ओवर की
अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार शेयर करना चाहा, एक बार फिर से चूके बेहतर ओवर साबित होता हुआ मुर्शीद का। इस वक्त बल्लेबाज को खामोश रखने में लगभग इस ओवर में वो सफल हो चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज अजमल का, तो अजमल की और इस वक्त नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज साजिद बड़े, वो कुछ इस वक्त कहा उन्होंने, और कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए इन हालातों में। हालांकि इस वक्त 62 रन बन चुके, एक सुस्ती पर नजर आता हुआ यंग फ्रेंड शुरुआ। और इस बीच मुर्शीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक। इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। और इस बार अजमल का विकेट यहाँ पर देखना पड़ेगा बच चुका है या गिर चुका है, तो तृतीय अंपायर के लिए यहाँ पर मांग की गई है। और देखते हैं यहाँ पर अजमल इस गेंद पर बचते हैं या नहीं। तो निश्चित रूप से अजमल दूसरे रन के लिए इस वक्त दौड़ पड़े थे, जो कि काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था। और यहाँ पर देखना है कि जब देखिए थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ, और यहाँ पर अजमल शायद इस वक्त खतरे में पड़ सकते हैं। यहाँ पर थ्रो पहुंच चुका है, विकेट उखाड़ चुके हैं। यस, इज गॉन, अजमल इज गॉन, बैकिंग टू पेविलियन। अजमल इज बैकिंग टू पेविलियन नाउ एंड दैट इज द विकेट नंबर 2। दूसरा रन काफी जोखिम भरा उनके लिए साबित हुआ, और अजमल का विकेट यहाँ पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। दूसरा विकेट इस वक्त गिर चुका है, स्कोर है 63 रन, 63 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन all the players of KFC Kodikal as well as Torpedoes Khana, please to report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और एक और बेहतर मैच इस मैच के बाद खेला जाएगा KFC कोडिकल और टोरपेडोस खाना के बीच में। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, और राजेश, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, इज नॉट कम्स आउट टू द मिडल। और इस वक्त वो गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार मुर्शीद का। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को फ्लिक कर दिया, कदमों के सहारे मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 64 on the board for losing 2 wicket and a 6th over came straight. और अजमल, ऐसा कहना पड़ेगा, अरशद बजाल का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक नियंत्रण प्राप्त कर चुके हैं गोरी यंग बॉयज की गेंदबाज अंतिम 2 ओवर में। और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 54 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। अब 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है इस वक्त 64 रन। लेकिन और अंतिम 2 ओवर में सिर्फ 10 रन प्रदान करते हुए गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज एक बेहतर कमबैक यहाँ पर कर चुके हैं। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और इस वक्त 7वां ओवर हमसे दूर वाले छोर से यानी स्टेज एंड की ओर से इस वक्त शुरू होता हुआ। और गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त राजेश उबर। और इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए निश्चित रूप से अरशद बजाल की विध्वंसक बल्लेबाजी की बदौलत यहाँ पर यंग फ्रेंड्स हुआ एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, अंसार इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और प्रमुख गेंदबाज गोरी यंग बॉयज की ओर से, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार राजेश उबर। फ्लडलाइट्स की रोशनी 8 टावर्स जो गाड़े गए हैं, और उन 8 टावर्स के फ्लडलाइट्स की रोशनी, फ्लडलाइट्स की बत्तियों की रोशनी इस वक्त मैदान पर गिरती हुई इस मैदान को प्रकाशमय और बनाते हुए गेंद को स्वीप करते इम्प्रोवाइजेशन करते हुए राजेश ने डीप फाइन लेग की दिशा में और दूसरे रन के लिए आसानी के साथ दौड़कर पूर्ण करने में सफल। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 66 रनों पर, 66 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर। Still in overall calculation it's going to be 11 balls remaining in their innings। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज अंसार, बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश उबर के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए। और 4 खिलाड़ी जो कि इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। और ये गेंद अंसार की राजेश के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, लेग स्टंप पर गेंद टकराई और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। Just wanted to play the reverse shot, not succeeded. The ball passed below of his bat and stuck to his leg stump. Pills are disturbed.
राजेश उबर इज बैकिंग टू पेविलियन और राजेश उबर अपनी टीम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, सिर्फ 3 रन बनाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए अंसार की गेंदों पर बोल्ड आउट होने के बाद और यंग फ्रेंड्स वो अपना तीसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है। इस वक्त 66 रन, 66 for the loss of 3 wicket in the over number 7th in progress in young friends Urva's innings और तो 7वां धन्यवाद रिफाज। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ वैशाख the new batsman is now comes out to the middle for young friends और अंसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट पर ये गेंद इस बार ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स बाय विकेट कीपर। निश्चित रूप से जैसे ही वैशाख ने गेंद को खेलना चाहा क्रीज से एक कदम आगे निकले, जैसे ही एक कदम आगे निकले इन ए फ्रैक्चर ऑफ सेकंड विकेट इस वक्त तेजी के साथ उखाड़ दिया विकेट कीपर नौफल ने और इसी के साथ ये विकेट पहली गेंद पर गिर चुका है वैशाख का गोल्डन डक के रूप में। Absolutely brilliant piece of work made by the wicketkeeper behind the stumps. Naufal, the wicketkeeper, who made fantastic work behind the stumps, and because of that, the batsman Vaishak departs. तो जुबैर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। स्कोर रुक चुका है 66 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर और एक बेहतर कमबैक कर चुके हैं गोरियंग बॉयज के गेंदबाज 5वें ओवर के बाद। और इस बीच जुबैर के लिए अगली गेंद, यह गेंद जुबैर ने गेंद को खेलना चाहा, इस बार गेंद शायद देखना यह है कि गेंद टकरा चुकी है नहीं। विकेट कीपर नौफल ने जिस तरीके से जस्ट अपने हाथ खुची के साथ उठाया उससे एक बार ऐसा लगा कि गेंद स्टंप्स पर टकराई है, लेकिन जी नहीं, वहां पर गेंद ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकल रही थी और बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं। और गेंदबाज अंसार एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट है। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद मिड ऑफ द बैट नॉट कनेक्टेड, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ 67 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 67 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक एंड का, तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार साजिद। हालांकि साजिद आरंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे थे, अभी तक क्रीज पर डटे हुए, हालांकि सेंसिबल बल्लेबाजी उन्होंने अपनाई है, लेकिन अच्छा साथ उन्होंने निभाया अरशद बजाल का आरंभिक विकेट के साझदारी में। और जहाँ तक अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है कि दे आर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और अंसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, मौका एक्स्ट्रा कवर फील्डर के लिए और आखिरकार ये विकेट गिर चुका है साजिद का। So fantastic innings came down from साजिद, सेंसिबल इनिंग्स कहना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल्स और कपल के साथ उन्होंने अपनी ये इनिंग्स बांधी और आखिरकार एक बेहतर पारी अपनी टीम को खेलने के बाद 15 रनों के पेविलियन वापस लौटते हुए 5वां विकेट गिर चुका है, 67 for 5 now and 7 overs completed, now just a last over remaining in यंग फ्रेंड्स उर्वासी इनिंग्स। और जहाँ तक इस श्रृंखला टूर्नामेंट का सवाल, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MSC ट्रॉफी 2025 which is proudly presented by Moodbidri Sports Club in the celebration of their 35th year. They are organizing this such a fantastic tournament. और जहाँ तक इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर्स का सवाल है, तो निश्चित रूप से मुख्य स्पॉन्सर्सों ने कई बेहतरीन योगदान इस श्रृंखला की सफलता के लिए दिया है। यहाँ पर जैसे श्रीमान मुश्ताक अहमद द ट्रांस ओवरसीज़ के
श्रीमान शादाब बशीर आईडी विजन, श्रीमान अब्दुल पुत्तिगे फॉर्च्यून प्रमोटर्स, पॉपुलर ट्रेडिंग कंपनी, अरशद मारनाड और सुरेश प्रभु टीएमसी मूडबिद्री, टीम 10 रेसिंग। तो इन तमाम दानियों ने इस श्रृंखला की सफलता के लिए अपना योगदान दिया। एक बार फिर से इन स्पॉन्सर्स का हम हार्दिक अभिवादन यहाँ पर करते हैं एमएससी संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से। और इस वक्त मैच के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। मुर्शीद अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। 8वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज दाहिने हाथ के, तो बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त गेंद को खेलना चाहा। गेंदा इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाहता, चूंकि नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। क्वाइट क्रिकेट इज नॉट गोइंग ऑन हियर। और तो इस वक्त एक गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है और एक बेहतरीन कमबैक गोरी बॉस के गेंदबाज कर चुके हैं। खासकर अरशद बजाल का विकेट गिर जाने के बाद, अरशद बजाल का विकेट जब गिरा था तब स्कोर था 57 रन और उसके बाद सिर्फ 10 रन प्रदान कर चुके हैं 2 ओवर में, 2.2 ओवर में। तो एक बेहतरीन कमबैक कहना पड़ेगा जो गोरी बॉस के गेंदबाज ने इस वक्त किया है। और इस बीच मुर्शीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई। इसको ना बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 68 रनों पर। 68 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 4 ओवर्स रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। 4 ओवर का खेल बाकी। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद मुर्शीद की गेंद को ऑन साइड पर स्वीप करना चाहा लेकिन कनेक्ट ठीक तरह से कर नहीं पाए। फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, बल्लेबाज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड वन ऑफ देम इज बैकिंग टू द पाइपलाइन इन द फेस ऑफ रन आउट। थोड़ी सी झिझक दोनों बल्लेबाजों के बीच में और आखिरकार नतीजा यहाँ पर उनमें से एक बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन में वापस लौट चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंदों का, तो 3 गेंदें इस वक्त बाकी उनकी पारी में। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 69 रनों पर। 69 द स्कोर स्टेज फॉर लूजिंग 6 विकेट। न्यू बैट्समैन रिजवान इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त धीरे धीरे हौले हौले क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे मुर्शीद की गेंदों का। सिर्फ 3 गेंदें यंग फ्रेंड्स उरुआ की पारी में बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और इस बीच गेंदबाज मुर्शीद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रिजवान के लिए दाहिने बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गोरियंग बॉस के कप्तान यहाँ पर मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद। शॉर्ट थर्ड मैन 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और एकमात्र खिलाड़ी ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात 20 गज के दायरे के अंदर। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर फ्रॉम द बॉलर मुर्शीद और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 69 रनों पर। 69 ऑन द बोर्ड। नाउ जस्ट 2 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स और गेंदबाज मुर्शीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान के लिए अगली गेंद कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, स्टंप आउट करते हुए इस वक्त विकेट कीपर और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। रिजवान की पारी समाप्त। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट आफ्टर कम्स डाउन द ट्रैक वांटेड टू लॉफ्ट दैट वन बट नॉट सक्सीडेड और जैसे ही गेंद उनके बल्ले को वंचित करके विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। 69 for the loss of 7 wickets. Now just a last ball left in their innings. और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद में जो बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता है रिफवान जो कि नए बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं देखना पड़ेगा इस बचे हुए अंतिम गेंद में। और अब तक मुर्शीद का बेहतर ओवर यहाँ पर साबित हो चुका है और अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर और यंग फ्रेंड्स उरुआ की पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ यंग फ्रेंड्स उरुआ's innings is now coming up from the hands of मुर्शीद to the right-handed batsman रिफवान और बाएं हाथ
राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को, गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके, दूसरा रन लेना चाहते, दौड़ पड़े हैं लेकिन यहाँ पर विकेट, ओ इस बार रन आउट करने में शायद असफल रहे। गेंद उनके हाथों से चूकी और हड़बड़ाहट पे गेंद उनके हाथों से चूकी और 2 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल होता। Innings is up for young friends Urwa. They finished with 71 for the loss of 6 wicket. So fantastic comeback made by the Gory young boys after being conceding 54 in the first 4 overs. They conceded 17 in this next 4 and this is an absolutely comeback, fantastic comeback made by the bowlers of Gory young boys. तो 72 रनों का लक्ष्य, 72 the target for Gory young boys. A huge target in front of them set by young friends Urwa. 72 they have to score in the stipulated 8 overs with a required run rate of exactly 9 runs per over. देखते हैं यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला है यहाँ पर आने वाले दिनों में खेली जाएंगे। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड इनकी ओर से यहाँ पर उर्वा क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट यंग फ्रेंड्स ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत दिनांक 12 मई से 17 मई तक यंग फ्रेंड्स ट्रॉफी विल बी प्लेड ऑन राइट फ्रॉम 12th मई टू 17th मई। 6 दिनों तक ये श्रृंखला चलेगी और इस श्रृंखला के विजेता के लिए 60,666 रुपए 60,666 will be rewarded for the winners along with the young friends trophy, and runners will rewarded 40,444 along with the young friends trophy. And this tournament will be held right from 12th May to 17th May. That means next month 12 to 17, which is proudly presented, and this tournament is proudly presented by Young Friends who are registered in the name of Young Friends Trophy 2025. तो एक और ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭುರವರಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭುರವರಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬುಲಾಲ್ ಪುತ್ತಿಗೆರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಬುಲಾಲ್ ಪುತ್ತಿಗೆರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರ್ಷಾದ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಐಡಿ ವಿಷನ್ ಮುಸ್ತಾಕ್, ಟೀಮ್ 10 ಶಾಮಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫಹಾದ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಷದ್ ಮಾರ್ನಾಡ್, ಫಾರ್ಚೂನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಬುಲಾಲ್ ಪುತ್ತಿಗೆ, ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಸೈಯದ್ ಫೈಸಲ್ ದುಬೈ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ದುಬೈ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. धन्यवाद रफीज. तो जहाँ तक सवाल है 72 रनों का लक्ष्य, और जहाँ तक सवाल है एक और क्रिकेट श्रृंखला का, गुड लक फ्रेंड्स क्लब पुसोट जो कि अगले महीने के 7 से लेकर 11 तक एक श्रृंखला आयोजन करने वाली है. इस श्रृंखला के विजेता को दिए जाएंगे 7 लाख नगद पुरस्कार और रनर्स अप 3 लाख नगद पुरस्कार along with good luck trophy will given, and this tournament will be held right from 7 to 11th May on the next month on Mother India ground Kadambar. So fantastic cricket tournaments are coming up in forthcoming days, और हम उम्मीद करते हैं कि इन आने वाले दिनों के इन श्रृंखला में इन टूर्नामेंट में रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो 72 रनों का लक्ष्य. तो आइए सतीश एक बार फिर से आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं. एक्जैक्टली 9 रन पर, हालांकि कमबैक बेहतर किया गोरी बॉस की गेंदबाजी में. 4 ओवर के बाद सिर्फ 17 रन उन्होंने प्रदान किया, लेकिन यहाँ पर 72 रनों का लक्ष्य कुछ हद तक लंबा सा लक्ष्य है और एक गट्सी बैटिंग की ज़रूरत है और बेहतर शुरुआत उनको मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है सतीश कि दे हैव टू प्ले अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, और निश्चित रूप से एक शक्तिशाली गेंदबाजी के लाइनअप के खिलाफ बल्लेबाजी करना, तो एक बेहतरीन शुरुआत और एक गट्सी बल्लेबाजी के साथ इस वक्त उन्हें शुरुआत कर रही होगी. खासकर 2 पावर प्ले ओवर्स का फायदा उठाना होगा सतीश गोरी यंग बॉयज के सलामी बल्लेबाजों को.
Thank you very much, Gopi. Exactly, you mentioned about yes, the first 4 overs which is belongs to Young Friends Surua, but next 4 overs, the Goryang was absolutely unbelievable comeback, and they managed to restrict them in just 71 runs and 72 target. First ball of the innings, and the ball is just down the leg side fielder behind the ball, but ball winning the race. My goodness, what you are talking about? What me and Gopi is mentioning about the first 2 hours is going to be a key for the Goryang boys if they wanted to win this match. Just like what Arshad Bajalis did for his team. The same thing, the same treatment which is required for the batters of Goryang boys. And here you go. The first ball itself, Prajwal, it's got a boundary, just defeating the fine leg fielder. Even though the ball is almost shaping, almost outside the line of leg stump, and Prajwal quite... able to, he's just managed to get that one into the fine leg boundary for 4 runs. Zubair balls up and over. Beautiful shot there from Prajwal. Down to deep. Wideish longer boundary for 4 runs. Now what we're talking about, the electrifying start here for Goryang boys as well. Zubair has been punished in consecutive 2 boundaries. Compared to the previous boundary, this is absolutely glorious extra cover drive from Prajwal. What we are talking about, the potential of the batter like Arshad Bajal and Sajid. You cannot underestimate these 2 batters in the middle. Prajwal, if he managed to spend little bit in the sense at least 4 to 5 hours, if he's going to stay in the middle, he's got a potential of changing the complexion of the game. Even the man in form in the non-strikers end, and Naufal has got a ability. This time, one more. The back-to-back 3 boundaries. Hat-trick boundary comes up. The Goryang boys are in charge. The Goryang boys are in charge through Prajwal's bat. Now, all in sudden, the Mangalore Express, the nickname which is given for the bowler. Everybody knows this potential. Zubair has been punished with the 3 back-to-back boundaries by Prajwal. Now a little bit headache here for the captain of the side. Where to set the field for this man, because this is a power play. You can't keep more than 2 outside the circle. Now the fielder coming towards the deep mid-wicket, 1 at long off, which is a bit wideish. Third man coming to the cover point, because Prajwal so good in that area. Short fine leg, short square leg in front up and behind the square. Short mid-on. Oh my goodness, this is full toss delivery. All we can see that the 3 quality cricketing stroke which is punished for not a bad deliveries. Once it's going to be a bad delivery, this one, the previous one what we are talking about, Prajwal fails to take advantage of that full toss. But it's unexpected full toss. So Prajwal is not ready this time. Again, low full toss. Chance of run out in the non-strikers end. The fielder trying for the shy at the stumps in the non-strikers end. But fortunately for the batter Prajwal, the fielder couldn't manage to hit the stump. The jersey number 14 of Young Friends Surua. It fails to get the stumps. Izaz down at short mid-wicket. Switch it. No need to run for that. Now for what we are talking about, the man in form. 4 boundaries in that over. Just I want to see that comparison between these 2 teams. After the completion of first over, they are 18, 19 and Goryang boys is 17. This is what the crowd wanted to see. Of course, losing and winning is the part of cricket. But losing with the great fight, the people, the spectators, the cricket lovers will going to remember you for a long time. This is absolutely what we told, that the gutsy and brave batting which is required from the batters of Goryang boys, and 17 runs in the first over. It's absolutely opened the gate for Goryang boys. Now the equation, 55 required from 42 deliveries. The 17 runs in first over. The Goryang boys, they are not going to forget the day what they had in the last week in the JD Trophy.
when Naufal is got a flying start chasing a big total. But unfortunately, they're short by 2 or 3 runs. They doesn't want to repeat the mistake what they did in the previous week. Prajwal will going to take the strike. The first ball, which is ball by Rifan from the far end, right on the money, right on the target, outside the line of stump. Prajwal just wanted to play that across the line, misses the line completely. Straight away Naufal walk towards Prajwal, has had some word with him. Maybe he's telling him after we got a 17, the match is in our hand. Don't be excited with that dot delivery. Keep going, keep going. Maybe that message which is coming from Naufal. The wait and see. Rifan, one of the quick bowler in the side of young friend Surva, is in operation from the far end. Round the wicket, right arm. Again, just try to force that one, dragging that one from outside the line of off stump towards the mid-wicket region. Rajesh Ubar, the fielder in the mid-wicket, one of the quick fielder in the deep. The fields the ball, return the ball, ample time for the batter to complete the single. 18 without loss of an wicket. Fantastic crowd we are watching here in this beautiful historical cricket ground, Swaraj Maidan. The ground which has witnessed so many prestigious cricket tournaments. And the crowd knows that, Underarm cricket lovers knows that this is a one day, they doesn't want to miss, even though IPL fever is going on, but they're not really bothered about that IPL. They're only bothered about this day, the MSC Trophy 2025. It's going to be the most excitement day of cricket today. Again, played it down to extra cover region. Couldn't manage to get the placement right. Zubair, the fielder at extra cover. The fields the ball. No chance of any run. Great start there from Rifan. The same thing has happened for young friends Uru as well. After they got 19 in the first over. Then second over, little bit quiet over. 4 time in this over. Rifan. This time straight to the hands of Zubair. Slash it hard, but couldn't manage to get past Zubair at extra cover. Zubair is like, you can see that the reaction coming from Zubair after he taken the catch. He shows all this frustration because he's conceded so many runs in the previous over. So after he got the catch of Naufal, he's so excited saying that, yes, I want you. I want your wicket. The wicket number, the first which is back in the pavilion. Naufal couldn't manage to continue the format is left in the previous tournament at JD Trophy 2025. Unfortunately, he couldn't manage to find the gap. Hit pretty hard, but straight to the hands of extra cover. The new batter in his captain himself is walking towards the middle with one of his favorite, red cap. Red in the sense it was a danger. And can he become the danger batter for the opposition? Lot of experience behind him. The jersey number 10, what he is wearing, says everything. And you need to justify that jersey number as well. Only the legends are wearing that number. Here is the bowler from the far end. Rifan, the successful bowler. Round the wicket, right arm. Pass umpire. Balls played it down to extra cover. Quickly they're going for the single. Ajmal, the one of the quick fielder in the side. Couldn't manage to stop the single from Riaz. He's off the mark. With that single score by Namuzan to 19. This is turning out a great over from the point of view of young friend Suru. After that huge, the first over of 17 runs. The Rifan absolutely bowled a tidy and wicket taking over so far. But this man, can he disturb the economy of this over? Just a single ball remaining in this over. And Prajwal will going to take the strike. This time lofted, but I don't think he'll go to get this. Oh, he got the distance. No. He taken. Longer fielder taken a screamer. Everyone thought it might be a maximum. But have a look at the way that
The fielder in the deep long off. Just I want to see who is that fielder in the deep long off. Outstanding catch taken in the long off. He had to jump a lot to get the catch. Have a look at that replay. Played it very high. And the field, oh my goodness. It's absolutely fantastic high jump catch taken by the long off. I think Vaishak, the young man, down at long off, taken absolutely a screamer. 2 wickets in that over for Rifan. What a great over for young friends Furwa. Just lost the momentum, isn't it, Gori young boys? What they got. So Vaishak is holding his now in that pleated signatures. Team KFC Kodikal takes on Torpedoes Khana in the next match. Now, the man with the golden arm, Arshad Bajal, brought into attack. Full toss, Riaz lofted, but straight. Oh! Feed wicket, fielder slipped. He's lost his balance. Couldn't manage to grip properly. Misjudgment costing a boundary. What could be a wicket here for the Arshad Bajal, because the full toss delivery. Riaz hit that one into the mid wicket. Izaz the fielder. Because of the wind a little bit in the cricket ground, the ball is deviated just to change the direction. And the fielder Izaz couldn't manage to control the speed what he has got. And he just missed that ball. And not only missed the catch, but ball went into the boundary. 23. Lucky here for Riaz. Arshad again. Balls slower one. Negotiated very well by Riaz by showing that horizontal bat reverse sweep to pick the single there with that single scope at Namuzan to 24 on the board for the loss of 2 wickets. You're watching the great contest between two very good teams of South Kent district. Young Friends Surua versus Gori Young Boys. So new batter we are just talking about. One more the very promising left-hand batter Asha Paddayuru came into bat here. Is a very good striker of the ball. And wait and see how we're going to contribute from the bat. Top edge is not a clever. It's not a clever. Asha, you are sent for do something special. Uses your technique what he has got. Hitting the ball. You are powerful striker of the ball. But you are choosing that improvising scoop shot. It's not good enough in tennis ball cricket. Ball which is not too hard to get the ball over the head of the fine leg. And ball went straight to the hands of short fine leg region. The wicket number 3 is back in the pavilion. All in sudden, Young Friends are strongly back in the game. Arsha Padayur so far is outstanding performer, but when coming to the big tournaments, and of course his opportunity which is given for him, he need to grab the opportunity when you are representing for the big team like Gori Young Boys. This is a perfect time to become a hero. The grabbing the opportunity is so important in cricket. Once you are given the opportunity, you have to justify. So new batter in. The promotion coming for the batter. Outside the line of off time, just wanted to get the ball on the offside region. Samraz is one more very talented player. Left arm. Balls outside the line of leg stump. He got a little bit bat onto that. One more single. One more single has been added total. I'm just missing Saifullah, one who batted in the JD Boys Trophy as an opener for Gori Young Boys. He's not hit this time. Quick run. It's always going to be a striker's call. It's always going to be a striker's call. Riaz call.
because he is the one is a danger running towards the danger zone, and Samraz has to respond for that run because he is the one is running towards the safer end. So over number 3, which is comes to an end. One more successful over. 3 completed after completion of over number 3. Chasing 72 to win this match. Still Goryang boys searching for the right track. They are 26 for the loss of 3 wickets. This is what the Swaraj Maidan are witnessing this match. The crowd we can see here so excited. And once they thought when the 17 runs came from the first over, they thought it might be a nail biter. And this is what the Underarm cricket is all about. The fan and followers. You cannot imagine their love and affection towards Underarm cricket. And especially when they're coming to watch their favorite players, their favorite teams, the Goryang boys has got a number of supporters. I've already mentioned when you're coming to the Moodbidri and Karkala, they always loves to back up that team. Some conversation is going on here, I don't know for what, between umpire and the players of Young Friends Suruva. So I don't know what the discussion is going on here. What a fantastic tournament. It's a time for giving some thanks to our donors. Of course, we are witnessing it's 6 days of floodlight cricket tournament. It's not a joke organizing such a big tournament, isn't it? Without the support of our sponsors. Of course, we are thankful and grateful for our official sponsors. We'll start with Mr. Suresh Prabhu, the councillor of TMC Moodbidri. Mustaq Ahmad, Trans Overseas. And we are the ID Visions, the one more, the sponsor of this cricket tournament, United Arab Emirates. Shahbad Bashir. Abdul Puttige, the Fortune promoters. Christian Abulal Puttige. Fortune promoters, Popular Trading Corporation, Mr. Arshad Marnad. Suresh Prabhu, I have already mentioned his name, is a councillor of TMC Moodbidri. And special thanks to team 10 Racing, Mohammad Shamil and Sheikh Pahad. They are all the pillars of this cricket tournament. Without their support, it's not so easy to organize such a big tournament. Some discussion which is going on. After the discussion, I don't know what, even organizers also, they are joined here. I have some clarification here. So next match, KFC Kodikal versus Torpedoes Khana, one more high voltage match. Lot of cricketing action which is coming in the coming days, because almost we are in the end of this season and we have a big tournament. Good Luck Friends Club Posot presenting one more big tournament, and the season 6 of Good Luck Premier League 2025 day and night cricket tournament will be held on Mother India ground, Kadambar, our neighboring district, Kasaragod district, from 7 to 11 2025. Huge cash prize of rupees 7 lakh, and runners will going to get 3,000 cash with the attractive trophies, and total 12 lakhs cash prize which is announced for this tournament, and so many attractive individual prizes. One of the attractive part of this cricket tournament is that just like IPL, they are borrowing the international players, and in that tournament also every team has got 4 top players from Mangalore pools, Mangalore pool teams, and from these top ranking teams from South Kendra district, they will going to borrow 4 top players. So this is going to be most exciting in that tournament. Don't miss the date, 7 to 11.
And after that, of course, Young Friends Urwa. Now the team which is performing in the middle, and Young Friends Urwa also they are organizing Young Friends Trophy 2025, and which is the tournament which is commenced on 12th to 7th May at lots of Underarm cricket, UCG cricket ground, and there will be a more cricketing action. 60,666 will going to be a first cash, and 40,444 will be the second cash and attractive prizes. So discussion is going on, and I think it's a time for the spectators to have some very beautiful and melodious music from our DJ. Thank you.
Welcome back once again after that slight bit of interruption in the game. We are going to start here. And sorry, once again, I need to beg a sorry from all the cricket lovers because already we have started late and still this match is interrupted and we are going to continue here. And the bowler brought into attack from the far end to bowl the over number 4th, and scoreboard is remains on 26 for the loss of 3 wickets. The batters are in the middle. The bowler brought into attack from the far end. Looks like the new bowler brought into attack from the far end. Right arm over the wicket, he bowls to Riaz. This time like a appeal for leg before wicket, and umpire says the ball slight a bit of pitching outside the line of leg stump, so that no question of leg before wicket. If the ball is pitched outside the line of leg stump, then the batter Riaz just thought it might be a delivery which is he wanted to punish the ball on the onside region because of extra deviation in the delivery, and he couldn't manage to judge it well. Again, right arm over the wicket, he balls outside the line of off stump. Wicketkeeper fumbles, taking the advantage of that one. A chance of run out, but both the batters are so quick so that they completed a single. With that single, scoreboard moves on to 27 on the board. 27, which is the total score. Karthik again from the far end. Right arm over the wicket, he balls. This time, oh, ball, just like ball, the deflected or it is gone or not, just I want to see. The batter is walking. He's bowled him. The bails are off in that occasion, and Samraj just tried to swap the ball and couldn't manage to get the ball into his bat, and one more wicket is back in the pavilion. Now Gori young boys are looking in deep trouble. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3. Check. Hello, check. Testing mic testing 1 2 3. Check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3. Check. Hello, check. Yes, thank you. So Fayaz is a new batter in for Gori young boys. Got a promotion up in the order. Karthik nicely pedaled that one down to square leg region by the batter. The jersey number 13 just came into middle and off the mark with a single. Total score now moves on to 28 for the loss of 4 wicket. They are chasing a huge total of 72 to win this match. This time he wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold of that one properly. And Riaz has got sweet memories in this particular cricket ground when the Gori young boys are dominated in the last 5 to 10 years back. They're one of the favorite team to coming here and lifted some prestigious titles, so that the Gori young boys has got their own fan followers outside the line of off stump, and lovely delivery, and Fayaz the batter just wanted to go for and powerful chip shot, missed it completely. Great over there from Karthik, excellent over after completion of 4 overs, chasing the total score of 72 to win this match. Gori young boys absolutely struggling in the middle. It's 29 for 4, 43 required from 24 deliveries, and looks like it's going to be a difficult task in front of Gori young boys. And Gofi
the difficult road often leads to beautiful destination. And if they wanted to get that destination, what we are talking about, the 72 for the team Goryang boys out. 1999ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಲೋಗೋವನ್ನು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1999ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮೊದಲ ಲೋಗೋವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರಿಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Thank you very much, Rafi. Is a warm welcome for Lokesh Acharya, the one who organized the first tournament, floodlight tournament in the history of Moodbidri. Welcome for him on behalf of MSC Trophy 2025. It's over to Gopi. Just we're talking about Gopi, the difficult conditioning for the Goryang boys after they got a flying start in the first over. They just lost the momentum, and not only they lost the momentum, they lost 4 wickets as well. So that now do or die situation for the team Goryang boys. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त डू और डाई सिचुएशन फॉर द बैट्समैन ऑफ गोरियंग बॉयज. और पहले ओवर में जब 17 रन बने थे तब ऐसा लग रहा था गोरियंग बॉयज के बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करेंगे, लेकिन उसके बाद 4 विकेटें गिरे और खासकर विकेटें गिर जाने के बाद प्रज्वल और नौफल का विकेट गिर जाने के बाद ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್. तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त यहाँ पर निर्धार सौंपा गया और देखते हैं तीसरे अंपायर क्या दिख रहे हैं. और जहाँ तक प्रज्वल और नौफल रियाज का विकेट गिर जाने के बाद और इसके बाद आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज थे हर्षा. तो सम्राज, हर्षा, नौफल और प्रज्वल का विकेट गिर चुका है, जबकि रियाज और फयाज क्रीज पर मौजूद. और निश्चित रूप से इस वक्त ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೌಂಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. not out is the call, not out is the call and the batsman survived. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर का 30 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 4 विकेट के नुकसान पर. 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर अरशद बजाल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और फयाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और जहाँ तक सवाल है फील्डिंग के नजरिए का तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. और इस बीच ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद इस वक्त अंतिम एक्शन में ऑफ स्टंप पर आती हुई, लेकिन ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए. हालांकि विकेट जरूर इस वक्त उखड़े, लेकिन गेंद जो की थी कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं. एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाज अरशद बजाल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और फयाज फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. ये गेंद ऑफ कटर गेंद स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर. It just scooted that one, but can't find the gap as well. ऐसा कहना पड़ेगा धीमी ऑफ कटर गेंद इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज अरशद ने और इस धीमेपन को समझते हुए गेंद को उछाला जरूर, लेकिन एक्स्ट्रा कवर फील्डर जो थे सीधे गेंद उनके हाथों में खेल दिया. और इसी के साथ 5वां विकेट गिर चुका था. लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ Goryang boys 30 for the loss of 5 wicket. Meantime, Topaz Khana will take over KFC Kodikal in the next match. One more good match is coming up now exclusively right in front of you right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है. एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम. वी आर जस्ट वॉचिंग हियर. और मंगलूर के प्रतिष्ठित टीमों के बीच का मुकाबला इस वक्त जारी है. पहला मुकाबला यंग फ्रेंड्स और गोरियंग बॉयज के बीच इस वक्त प्रगति पर. और निश्चित रूप से कई संकटमय परिस्थितियों का इस वक्त सामना करता हुआ गोरियंग बॉयज और कमबैक करना है तो निश्चित रूप से इस वक्त उन्हें चौके और छक्के की सख्त ज़रूरत है. और नए बल्लेबाज का आगमन अब यहाँ पर होता हुआ. स्ट्राइकर एंड पर वो मौजूद और इस वक्त गेंदबाज अरशद बजाल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया. गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा.
करना इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, जो कि अपना खाता पिछले गेंद पर खोल चुके हैं। करना और रियाज काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज, कई सालों से गोरी यंग बॉयज़ का प्रतिनिधित्व करते हुए वो आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जहां तक गोरी यंग बॉयज़ के विजय तक पहुंचने का सवाल है, उनकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं इस जोड़ी पर निर्भर। इस बार गेंद कौन साइड पर खेल दिया, फाइन लेग की दिशा में। गेंद जब तक फील्ड हो, एक रन का इजाफा हो चुका है। ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्ले डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है या नहीं देखना पड़ेगा, लग चुका है। और अंपायर तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त निर्धार सौंप चुके हैं। शायद नजदीकी मामला यहां पर हो सकता है। और डायरेक्ट हिट इस वक्त जो कवर पॉइंट का फेंका गया वह सीधे स्टंप्स पर टकरा था। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा, करना इस वक्त पेविलियन को प्रस्थान करते हुए, शायद वो जानते हैं कि वो क्रीज से बाहर है। यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, तो डायरेक्ट हिट इस वक्त। और करना इस वक्त तीसरे अंपायर के इशारे का, निर्णय का इंतजार ना करते हुए पेविलियन की ओर वो कदम बढ़ाते हुए, और आखिरकार बेहतरीन थ्रो इस वक्त सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ। और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सो करना डिपार्ट्स एंड वन मोर विकेट फॉलन। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग फॉर गोरी यंग बॉयज। नाउ दे आर 32 in fact, 32 for the loss of 6 wickets. तो इस वक्त we are just waiting for the number 8 batsman. So new batsman, number 8 batsman is now coming out to the middle. और ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವಂತಹ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ಬಡಸ್ ಖಾನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನ ದಾಣಿಚಿವಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಾಣಿಚಿವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಟೌನ್ ಸಿಡಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ಬಡಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. इस बार गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ वाइड स्लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। स्ट्रियल तो इस वक्त गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी। इस वक्त पैरों पर गेंद टकराई, गेंद को उछालना चाहता और गेंद सीधे पहुंची। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। 33 still have a long way to go, in fact for 39 more runs now they have to score for victory with every ball. The problems is now, the equation is now mounting up for them। और इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी। वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 34 रनों पर। रन से सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए, और चाहिए इस वक्त चौके और छक्के यहां पर कमबैक करने के लिए गोरी यंग बॉयज को। और गेंदबाज इस वक्त रिफॉन गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद उछालना चाहा इस वक्त, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। और गेंद को फिर आगे की ओर आकर विकेट कीपर अरशद बजाल ने फील्ड कर लिया, रन नहीं मिलेगा। रिफॉन एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और So wide 2 for Asadi off stump in fact। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 for the loss of 6 wicket in the over number 6 in progress। और रिफॉन अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बीच ये गेंद को खेलना जरूर, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, एक रन का इजाफा। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 37 now with that single for losing 6 wicket। तो छठा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। 6th over of their innings is now progressing here। तो 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, 14 गेंदें बाकी हैं इस वक्त। 35 रन और चाहिए। और इस बीच ये गेंद स्वीप किया इस वक्त फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक रियाज के बल्ले से इस वक्त लगता हुआ, खाली क्षेत्र चुनते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के दरमियान गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। 31 नाउ रिक्वायर्ड फ्रॉम 13 डिलीवरीज। 31 रनों की दरकार 13 गेंदों पर। और इस बीच निश्चित रूप से कहना पड़ेगा यहाँ पर चंद चौके और छक्कों की उन्हें सख्त जरूरत है इस वक्त इस मैच में कमबैक करने के लिए। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। गेंदबाजी इस वक्त
आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फीडर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल इन फैक्ट, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 6th over came to an end. Now 30 runs required from the last 2 LTWs. Absolutely difficult task, but not impossible. If they batted bravely, it would have been a possible for them. तो 12 गेंदों में 30 रन चाहिए इस वक्त, और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए जुबैर, जो कि अपने पहले ओवर में पारी की पहला ओवर उन्होंने फेंका था जिसमें उन्होंने 17 रन प्रदान किए थे, और यहाँ पर अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ओवर की पहली गेंद। रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, और 30 रन चाहिए 12 गेंदों में। ऐसा कहना पड़ेगा गोरी यंग बॉयज को, सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में अब वापस ला सकते हैं। और ओवर की पहले गेंद लेकर जुबैर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। विकेट कीपर अरशद बजाल इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए। So 43 in fact the score। इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त सीली मिड ऑफ पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। 44 नाउ द स्कोर फॉलोइंग 6 विकेट। और गेंदबाज एक बार फिर से जुबैर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंसार बल्लेबाजों के सामना करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल करना चाहा, अपील, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट, और अंसार का विकेट गिर चुका है। शफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहता, गेंद लाइन पर टिप्पा खाए, मिडिल स्टंप को केंद्रीकृत कंसंट्रेट कर आते हुए, और शफल होकर गेंद को साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। अंसार डिपार्ट्स and now one more wicket fall, and the problems are now more building up for Gori young boys. Now the score is 44 on the board, 7 wickets down. तो अरशद ने एक बेहतरीन पारी खेली थी, 41 रन उन्होंने बनाए थे 18 गेंदों पर। तो इसके लिए उन्हें 2000 रुपए का नकद पुरस्कार, जो कि श्रीमान तिलक गुरु, जो कि यंग फ्रेंड्स हुआ के श्रीमान तिलक गुरु ने 2000 रुपए का नकद पुरस्कार यहाँ पर अरशद बजाल के लिए घोषित किया, और उन्होंने 2000 रुपया गूगल पे भी इस वक्त कर दिया है। और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ देर के बाद अरशद बजाल उन 2000 रुपए के इनाम के हकदार बन जाएंगे। तो इस वक्त जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो जुबैर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। 2000 रुपए का नकद पुरस्कार तिलक गुरु ने जो घोषित किया है अरशद बजाल के लिए 41 रनों के बेहतरीन पारी खेलने के लिए। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, लेग कटर गेंद थी इस वक्त। अंतिम क्षण में गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 9 balls लेफ्ट नाउ, 28 रन रिक्वायर्ड। और गेंदबाज जुबैर दाहिने हाथ राउंड द विकेट अपने और के अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछालना चाहे, एक बार फिर से फैंटास्टिक डिलीवरी, और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 28 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमाइनिंग 8 डिलीवरीज। नाउ द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। और अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इनटू द गैप एज वेल, इज गॉट अ सिंगल। इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दे कम बैक फॉर द सेकंड रन। और डीप बैक थर्ड मैन पर थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद जब तक इनको फील्ड करे, फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total, it's 46 now for the loss of 7 wickets. Now 7 balls remaining, 26 to get. और गेंदबाज जुबैर इस ओवर में अंतिम बार फुल टॉस के तौर पर गेंद, धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर अपील जरूर, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ओवर की समाप्ति। नाउ द कंप्लीशन ऑफ 7 overs. Gori young boys are really struggling now. 46 for the loss of 7 wickets, 26 required from the last over. 6 balls remaining, 26 runs required. और निश्चित रूप से अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के ही इस अंतिम ओवर में गोरी यंग बॉयज का भविष्य बदल सकते हैं। तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एम्बेसी ट्रॉफी 2025, विच इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय मूडबिद्री स्पोर्ट्स क्लब। और निश्चित रूप से यह श्रृंखला अंडर फ्लड लाइट इस चौथे दिन में एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक सवाल है, तो इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए
दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रियाज के लिए। फर्स्ट बॉल कम्स। इस बार गेंद को उछाल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त हमें पता चला है कि यंग फ्रेंड्स उरुआ के मैनेजर हनीफ जो है उनका आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन की मुबारकबाद उनको हम देते हुए जन्मदिन की बधाई। हनीफ जो यंग फ्रेंड्स उरुआ के मैनेजर है, हम एमएससी ट्रॉफी संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हनीफ जो कि यंग फ्रेंड्स उरुआ के मैनेजर है, इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। हार्टली हैप्पी बर्थडे टू हनीफ द मैनेजर ऑफ यंग फ्रेंड्स उरुआ। तो एक बार फिर से उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए हनीफ को हम आगे की ओर बढ़ते। इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, और जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर अब वाइड घोषित करते हुए। और एक और इनाम के हकदार इस वक्त साजिद के लिए इनाम घोषित किया गया है। उनकी बेहतर पारी 15 रनों की पारी उन्होंने खेली, तो इसके लिए 1000 रुपए का नगद पुरस्कार श्रीमान तिलक गुरु इस वक्त घोषित कर चुके। 1000 रुपये कैश प्राइज फॉर साजिद फॉर हिज fantastic knock of 15 runs declared by Tilak Guru. So this time the wicket fallen, bowled him, and one more wicket fallen. मुर्शीद की पारी समाप्त। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, गेंद लगभग स्टम्प्सों को वंचित, बल्ले को वंचित करती हुई स्टम्प्सों को जा टकराए, और इसी के साथ 8वां विकेट गिर चुका है। 48 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स नाउ 3 balls रिमेनिंग। तीन गेंदें इस वक्त बाकी, और ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकता ही अब इस मैच में बाकी रह गई है, अगर कोई चमत्कारी घटना यहाँ पर ना घटे तो। 3 balls लेफ्ट एंड 24 रन्स रिक्वायर्ड। तो गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। कार्तिक का गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार कार्तिक का। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाह चुके, बेहतर गेंद थी, डॉट गेंद। द स्कोर स्टेज एट 48। तो जहां तक सवाल है इस वक्त 2 गेंदों का, तो देखते हैं 2 गेंदों में क्या होता है। तो इस बीच कार्तिक, और अंपायर ने इशारा किया कि उनका निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है। तो इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट कार्तिक। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। 49 ऑन द बोर्ड, 49 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। एंड नाउ जस्ट लास्ट बॉल रिमेनिंग इन द रिंग्स। अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी का, और अंतिम गेंद 2 balls left in fact, 49 for the loss of 8 wickets. और गेंदबाज कार्तिक का ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, और छोड़ दिया इस वक्त गेंद को। और जहां तक सवाल है इस वक्त वाइड का, और वाइड के रन के साथ 50 कम्स अप गोरियंग बॉयज फॉर गोरियंग बॉयज। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन खुशी की बात इस वक्त नहीं है, क्योंकि 22 रन और बनाने बचे हुए 2 गेंदों में, और कार्तिक अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद रियाज ने गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फीडर मौजूद, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 51 ऑन द बोर्ड, 8 wickets down, and now just a last ball remaining, 21 runs required. Absolutely impossible task in front of the batsmen of Goryang boys. Now if the bowler cannot bowl no ball or wides in this last delivery, and the last delivery of the match is now coming up. Karthik दाहिने हाथों पर the wicket misses. That's it. 20 runs comprehensive victory for Young Friends Urwa against Goryang boys in the first match of the day 4 of this prestigious cricket tournament, MSC Trophy 2025, and with that 20 runs comprehensive victory against Goryang boys, Young Friends Urwa through to the next round of this tournament. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಜಿದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಜಿದ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು
ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So the first match is now ended and one more big match is now coming up live and exclusive right in front of you between KFC Kodikal versus Torpedoes Khana और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद. Undoubtedly, there's no doubt about that. Arshad Bajal entered man of the match for his fantastic batting of 41 and just 18 deliveries. I request Arshad Bajal, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. In fact. So the match number 2, KFC Kodikal will take over Torpedoes Khana and that match starts within just short while. Till then we'll take a short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर दूसरा मैच शुरू होगा KFC Kodikal और Torpedoes Khana के दरमियान. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. Now it's time for break and also it's time for DJ. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿ ಜೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ದ ಸೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಟ್. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
So we're going to start the match here. Torpedoes Khana takes on team KFC Kodikal after winning the toss. Captain of Torpedoes Khana, they elected to the field first. Welcome back. Thank you, DJ. So the bowler Chetan will going to start the proceedings here, and Izaz will going to take the strike and in the non-strikers, and Harris is one more the batter as an opener for the side. Signal came from umpire Mohan Iyadi, and signaling towards our scorer, our senior most Habik sir are ready here, and just wanted to see the field set. The short off, short extra cover, short cover point. Short third man, and the fielder down at short fine leg, short square leg, short mid wicket, and the fielder in the deep long on, and the fielder down at deep long off. In the first ball, right arm over the wicket balls, swept the ball very nice to deep square leg in fact, and one run completed. They come back for the second before Sharan will going to return the throw from the deep in the deep square leg in front of square. So Izaz is up the mark with a couple of runs. The team Torpedoes Khana, they came into this cricket tournament with the positive frame of mind after the victory in the JD Trophy 2025, which is played in the last week at SVS College Bantwal cricket ground, and they are absolutely came into this tournament as one of the favorite team to come into the final. This time quick run taken, extra cover fielder tried to make that run out in that occasion but couldn't manage to hit the stump. Harris the fielder at extra cover, and both the batters completed the single. With that single, scoreboard numbers on to 3 on the board. Even KFC Kodikal also, they played a wonderful game of cricket in that JD Trophy 2025, and especially when they played against NM Cricketers Mangalore. NM Cricketers Mangalore, they upsetted with their perfect performance, and now they came into this tournament with again they just this is the one team I want to tell you, KFC Kodikal, and any team, they will not going to underestimate KFC Kodikal, because they got a potential, they got a good players in the side and some silent killers in the team. That lovely delivery there from Chetan. The batter Harris just wanted to go for the drive. Luckily that ball just misses his off stump. The Chetan, what a bowler, is a great starter for Torpedoes Khana from his bowling, and you know exactly the condition of this particular cricket ground as well. Right arm over the wicket balls. This time wanted to go for the reverse sweep. Mansoor this time wicket keeper missed it. Izaz just wanted to go for the risky single in that occasion, because behind the wicket at short fine leg region, and Jackie is just trying for that run out. If it is a direct hit, I think is all over. It's definitely going to be all over for the batter Izaz. And they try to drag the bat into the crease. It is close one for umpire if a ball is hits the stumps. Anyhow, right arm over the wicket balls. This time, up and over. The fielder behind the ball, but I don't think they will going to get that one. The ball winning the race against the fieldsman. The welcome boundary coming here for Izaz as well as his team. The full toss delivery, little margin for error. You can't do the mistake of bowling a full toss in the power play. There is no ample pace in the bowling, and he didn't got adequate field for that. Just over Ashwin, the right of Ashwin, and ball went into the fence for 4 runs. Welcome boundary. With that boundary, scoreboard numbers on to 8 on the board.
Chetan. Again from the far end. Right arm over the kitty balls. Swept that one. A lovely stop. Lovely stop there from Sinan. Of course, he won the fielding in his wrong hand, left hand. But he's getting his left hand in the right time to get that ball. So first over completed. It's a decent start. Good start here from the opening batters of team KFC Kodikala. 9 without loss of any wicket. Time for DJ. Thank you, DJ. Sharan brought into attack the ball the second over for the team KFC Kodikals innings. The first over, 9 runs came from that over. Izaz got a 1 boundary in that over. That will is good enough for the team KFC Kodikal to get a good start here. And Jump Pack Stadium here in this beautiful cricket ground here in Moodbidri. Swaraj Maidan, the very popular for the prestigious cricket tournament. And here is the first ball. Sharan, right arm over the wicket. Balls. Izaz wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up that one properly. And he will going to pick the single for that. With that single, Skobana moves on to double figure 10 on the board. And just... Here is again the bowler will going to continue second time in this over. Sharan, experienced campaigner for the side of Torpedoes Khana, away from us. Pass umpire Roland Pinto. Slower one, change of face, and Arish negotiated very well by pushing the ball. Soft end comes into play, and sometimes it's not so easy to read the slowness of the delivery. The Sharan is master of doing that. Sometimes he can surprise with the slower one. And Harris picked up a single. So they start with the singles, both the batter. So 11 on the board for the loss of, without loss of any wicket. A very interesting field set. Is a very different field set for different technique of the batter. Long off and deep square leg are the fielders in the deep for Izaz. And protection is given in both onside and offside region. Here is Sharan again. This time, high up in there, who will going to take this catch? The short mid-on will going to take the catch. Harris complete the catch. That's the end of Izaz. Just wanted to go for the lofty drive over the head of the bowler, but he couldn't manage to connect that one properly. Gone very high. And the 3 fielders, like of course, closing fielders came to that catch. But at last, Harris is the right fielder to come and take the catch. And he absolutely taken that one comfortably in the end. Danger man Izaz departs. Again, Izaz, he got a start but fails to continue the start what he has got. He got a potential of playing long innings. Again, Izaz disappointed because in this kind of cricket tournament of when there is 8 hours format of a game, the batter like Izaz absolutely need to be a little bit cool and calm. Because a lot of time for the batters like Izaz to play a big innings. But a very good breakthrough there from Sharan to get the wicket of Izaz. Not so easy to come and bowl in the power play over. Nizam is a new batter in. The one more batter who dominated the day and that JD Trophy with this fantastic batting performance outside the line of off stump. Wide call by umpire. With that addition of that wide, Skobana moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. You're watching the match number 2 of 4th night of this MSC Trophy 2025, which is proudly presented by Moodbidri Sports Club
in this most beautiful venue. Oh, what a delivery! What a delivery there from Sharan. Absolutely fantastic here from Sharan. Again, Nizam. They came into bat with some kind of game plan. He just wanted to take Sharan in this particular over. But so far, Sharan is absolutely holding his now. And bowled excellent line and length. But job which is not yet over. Last time in this over. Right arm over the kitty balls. Improvised that one. That was a miss. Calculation by both the fielders. The ball went between the two fielders. Went into the fence for 4 runs. Just like I mentioned, the job which is not yet over. Job which is not yet over. And Nizam has got improvisation into the deep third man boundary for 4 runs. Last ball remaining. Let me correction. The one ball remaining in this over. All we can see that when the batter is went for that reverse sweep, the fielder in that gully region is moved to his right, and fielder in the short third man region, he thought it might be going very fine. So altogether, that was a miscalculation, a misjudgment by the fielder. Ball went into the fence for 4 runs. The clever cricket there from Nizam. You know exactly in this over, they needed a boundary, needed some runs for his team, and at last they managed to get that very important runs. 16 for loss of 1 wicket. Sharan away from us, passes on by Roland Pinto. Right arm over the kitty balls. Again, I wanted to go for the expansive ride, missed it completely. Maybe the ball is got outside edge of the bat. Lovely over, even boundary which is conceded in that over. But still, considering the fact that under power play, it's a good one. 2 gone after completion of over number 2. KFC Kodikal a 16 for 1. Yes, so this is what you are watching in the LED screen. Yesterday's the match and the player of NFC Katileshwari Rajesh Kodiadka, umpire Roland Pinto. It was a great catch from Roland Pinto, because after seeing the bowler's finger, he just wanted the cameraman to please focus on his finger, because he's not really having that all 5 fingers, isn't it? It's unfortunately with a small accident in the sense of in this factory, that was a cutting machine. When I was using that cutting machine, unfortunately the finger which is cutted, and is not having of all fingers. The one fingers we are talking about is proper, but all that is not having the proper the fingers. But still, you need to appreciate his determination, dedication towards the cricket. It was absolutely fantastic, and one day that video is become a viral in social media. And if you have enough dedication and determination, what you are doing here, nothing will going to stop you. Oh, pot and ball opportunity missed by Chaki. Rare occasion, he is doing the mistakes. He is a very good fielder of his own bowling. This time checked stroke there from Nizam. Half-hearted stroke. The leg cutter which is came from the hands of Shakir, and the ball which is slipped out of his hands. Again, ball is in the air for a while, but out of the reach of Mansoor. And one more single. Great gesture from umpire Roland Pinto yesterday night. Leg by call by umpire. We need to appreciate his observation. Again, the 1 run in the form of extra. One more single with the addition of that single score by Namuzan to so 19 for 1. Have a look at the crowd here. Absolutely jam-packed stadium, electrifying atmosphere. Needed to be in each and every cricket lovers here in Moodbidri.
knows that this is a special day for cricket. And they will going to witness some excitement. There's up and over, just over the fingertips of that fielder. But what a throw there from the fielder. Sinan has been outstanding. Everyone thought it might be a couple of runs. But the way that Sinan is covered the ground from the cover point to extra cover, it's absolutely fantastic. Have a look at it in a replay. He won the collection, which is great, but more than that, look at the throw that came from the fielder. Unfortunately, the batter, umpire asking for the third umpire for the one shot. There will be a call from the run which is completed, and just the little bit part of the bat is across the line. So one run, but wicket in the form of run out. This time, lovely field there by Chetan, excellent one. So just number 77, the new batter in Nazim. So one more over which is comes in, and after completion of over number 3, KFC Kodikal are searching for the right track. I'm not saying they're struggling in the middle. They're struggling in the middle in the sense of in the form of fall of wickets. But if you look at the run rate what they managed to maintain, it's a good one against a formidable team like Torpedoes Khana. I think it's a good run rate. 21 for 2. They're going exactly 7 runs per over. The very interesting move there from the captain of the side of Torpedoes Khana. Ashwin is known to be a magician in underarm cricket, but in the present season he is not being used regularly by Torpedoes Khana. Maybe just not having that much of good form in the particular season, but it's a good move, I will tell you, because seeing the condition of this ground, it's a huge ground. It was a 360-degree ground. At the same time, 8 overs format a game. You need to use the kind of bowler who Ashwin has got, the history what he has got, the record what he has got behind him. It's untouchable. Again, played it down nicely down to deep backward point region for a single. They wanted to come back for the second, but no chance for the second in the negation. Only a single there, 22 on the board for the loss of 2 wickets. Needed some partnership here for KFC Kodikal. Needed some partnership here. This time outside the line of off stamp. Going to be punishable not from the batter but from the umpire. So this is what we can see in the LED screen, and of course in international cricket also we are seeing some the grounds are field set, where the fielder is. Of course that was a fantastic innovative thinking here from Bedra Media, having some international touch for underarm cricket as well. Thank you Irfan Bedra for your all this dedication. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೆರಾವೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Thank you Ashwin. The name you can remember why he is called a magician. He's got magical fingers and the master of leg cutter, and ball that delivery again the third time in this over. Right arm over the wicket balls. One more beautiful delivery, but umpire will going to call that wide, and absolutely perfect call from umpire Roland Pinto. And the Mansoor is having some word with the umpire Roland Pinto about that wide decision. Roland Pinto will going to stick with this
decision now they're asking for the third umpire to see, because it's going to be the bowler's review, the fielding team review, to see that whether it's good enough to call the wide or not. Wait and see. The cameraman, the technicians of Bedra Media, of course, more than anything else, those who are sitting in the mixing department have to give the angles, which is third umpire will going to ask you. The wait and see whether the sometime Ashwin he will going to get some extra deviation, extra turn in the ball. What to see where the bowler is, where the wicket keeper is collect the ball, and where the ball is moving after the ball spun away from the right hand batsman, and wide decision which is retained by the third umpire as well. So field umpire decision is final here. So one more extra is which is added to total. 23 for the loss of 2 wicket. 24, little correction, 24 on the board for the loss of 2 wicket. In the over number 4 is in progress. Deep square leg, deep mid wicket, long on, which is wideish, extra cover, and deep backward point. They're going for the quick single, no one there to collect the throw. After follow throw, it's not easy for the bowler to come behind the wicket. One more addition to total. With the addition of that, the single scoreboard moves on to 25 for the loss of 2 wicket. Ashwin to Nizam. What innings they played earlier, what we're talking about, the JD Trophy 2025. Oh, that was a beauty! That was absolutely a beauty! Unplayable leg cutter from the magician. What a comeback here for Ashwin. I wanted to mention he's not having a good season from the ball, not getting a opportunity in the playing 11 of Torpedoes Khana. This is what hunger I can see in his face. He's absolutely humble person. I will look at that one in a replay. Fantastic. The batter just wanted to go for the drive, expose his stumps, try to go inside out cricketing stroke, but always asking for trouble against the spin. This is not a right shot selection here from the batter. Faces a penalty for that. A huge fish in the net. The man in terrific form, Nizam, is back in the pavilion. Now, Captain Cool, Akeem, is walking towards the middle. Known to be a queen of underarm cricket, Akeem is coming to the middle in the right time, where his team required some partnership. The patience which is key to everything. It's not a 5 hours game. It's not a 6 hours game. I will tell you. This is the 8 hours game. This is what you're watching, the cinematic camera. Just like in international live coverage, we are watching the close view of the players. The good piece of fielding there by Imtiaz in the relegation. The quick collection from Imti, experienced campaigner. The side of Torpedoes Khana. Successful team lifting up for JD Trophy 2025. A huge success for the team and this particular season. It's 26 for the loss of the switch. It is comes into play, and ball is one bounce collected by Sharan in the deep, and ample time for the batter to come back for the second. Direct, it is gone. Mansoor, you can't get away from this man. He's always there to hit the stump. See even the throw which is little bit in front of the stump, but the way that Mansoor collect that throw and immediately turns back and hit the stump, that was a certain couple, I will tell you. Have a look at that. A lot of time for the batter to come back for the second, but a throw coming from Sharan. Have a look at the reaction of the wicketkeeper Mansoor. Absolutely perfect one. This is what you call the presence of mind. Watching that striker is struggling to reach his home, hits the stump, one more wicket is back in the pavilion. It's not a good going, and KFC Cortical absolutely they're lost their momentum what they got in the first 2 overs. There looks like they will going to get 60 to 65 runs, but all in sudden the wickets are tumbling here. (27) for the loss of 4 wickets. 4 overs which is comes to an end. After completion of 4 overs, KFC Cortical are 27 for the loss of 4 wickets.
Again, played it down to cow point region for a single. The new batter in is Taivik is came into middle and ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಎಸ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಸಹ, ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹ ಅಲುಗಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. So before the next over going to start here is a time to change in commentary box. Already started here, and Gopi will going to take over the microphone. And Gopi, it's going to be a big match. Everybody knows that the two teams definitely they got a good press inside. Those looks like one more wicket is back in the pavilion. Davik departs. Tarpadas Khana, the taking that success what they got in the last week to this tournament. They came into the tournament as a favorite, and they're playing like a favorites here. One more wicket is back in the pavilion. They're all short of trouble now. KFC Kodigal Gopi. They lost 5 wickets. Nothing wrong with that run rate, but something wrong with that. The partnership what they are not getting. And looks like now the team Tarpados Khana is looking. They are in absolutely complete control over this particular match. It's over to Gopi. Thank you. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा इस वक्त और KFC कोडिकल इस वक्त निश्चित रूप से एक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। जहां तक सवाल है इस वक्त 29 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका। 5वां ओवर प्रगति पर 3 गेंदे फेंके जा चुके हैं और विकेटें इस वक्त गिर चुके हैं 5। तो गेंदबाज शाकिर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, शाकिर ने गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 3 गेंद अब तक को फेंक चुके हैं। सो न्यू बैट्समैन नंबर 7 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल। हकीम इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। शाकिर दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद पहुंचे गेंद को वहां पर जब तक फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। सिंगल रन एडेड टू द टोटल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 30 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 5 wickets at the start in the over number 5 in progress in fact। और हकीम इस वक्त अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े और इसी के साथ यहां पर दक्षित का विकेट गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। हकीम के पैरों पर गेंद टकराई थी और गेंद कहां गई है ये बिना देखे हुए इस वक्त रन के लिए दौड़े और इस वक्त दक्षित का रिस्पांस कुछ देर से आया और आखिरकार कोई मौका नहीं यहां पर दक्षित को स्ट्राइक रन पर पहुंचने का। तो इस वक्त 30 रनों पर 6वां विकेट गिर चुका। दे आर रियली लुकिंग इन ट्रबल नाउ। KFC Kodigal struggling out in the middle. In fact it's 30 for the loss of 6 wicket in the over number 6 in progress and just 5 in progress in fact। So 5th over in progress, 30 for the loss of 6 wicket और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए निश्चित रूप से जहां तक सवाल है एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का, इस वक्त एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। इस वक्त KFC Kodigal को जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, खासकर जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 50 के आंकड़े को उन्हें इस वक्त पार करना होगा। अगर टारपाडोस खाना के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर उन्हें दबाव डालना है तो कम से कम 50 के आंकड़े के ऊपर अपने टीम की कुल रन संख्या को इस वक्त ले जाना होगा। और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ न्यू बैट्समैन और अपनी ओवर की अगली गेंद इस वक्त शाकिर की गेंद को ड्राइव करते इस वक्त मिड ऑफ पर। और इस बीच जहां तक सवाल है कुछ तो जरूर हुआ था यहाँ पर, लेकिन सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। तो 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर। 31 for the loss of 6 wickets, 5 overs had been bowled, 3 overs left in overall calculation in the innings, 3 ओवर का खेल बाकी। और जहां तक का सवाल है KFC Kodigal का तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट टॉकिंग अबाउट बिफोर इन फैक्ट। और जहां तक सवाल है अगले मैच का, स्नेहा मलेमार का मुकाबला होगा MSC मूडबिद्री A के साथ अगले मैच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। स्नेहा मलेमार ಹಾಗೂ MSC ಮೂಡಬಿದ್ರಿ A ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और
इस बीच गेंदबाज अश्विन जिन्होंने पिछले ओवर में एक बेहतरीन गेंद के जरिए विकेट प्राप्त किया था, इस वक्त अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। छठा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई और गेंद को इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल बेहतर तरीके से। फील्डर जो वहां पर थे शायद शरण जो फील्डर थे, जिन्होंने काफी लंबा दौड़ लगाते हुए अपने पैर के जरिए गेंद को उन्होंने रोका और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। और जहां तक अगली गेंद का सवाल है तो ये गेंद अश्विन की इस वक्त आशिक के लिए बेहतर गेंद, perfect leg cut, just missing outside the off stump at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. और तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है तो रिव्यू इस वक्त लिया गया है और देखते हैं इस बार तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धारण यहाँ पर देते हैं। निश्चित रूप से दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम और एक प्रतिष्ठित श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई यहाँ पर मुख्य स्पॉन्सर्स है इस श्रृंखला के श्रीमान मुश्ताक अहमद ट्रांस ओवरसीज, श्रीमान शादाब बशीर आई डिवीजन, श्रीमान अब्दुल फुत्तिगे फॉर्च्यून प्रोमोटर्स, श्रीमान अरशद मारनाड पॉपुलर ट्रेडिंग कंपनी, श्रीमान सुरेश प्रभु टीएमसी मूडबिद्री और टीम 10 रेसिंग इस वक्त इस श्रृंखला के मुख्य स्पॉन्सर्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर के निर्णय का तो इंतजार है इस वक्त तीसरे अंपायर के निर्णय का और मुकाबला इस वक्त जारी दोनों टॉप सीडेड टीमों के बीच टॉर्पेडोस खाना और केएफसी के दरमियान। और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धारण यहाँ पर देते हैं। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एमएससी ट्रॉफी 2025 सेलिब्रेटिंग 35 years of cricket. They are organizing this fantastic tournament under floodlights. And this tournament is proudly presented by Moodbidri Sports Club. It's a fair delivery. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रन से कोई भी नहीं जुड़ेगा इस वक्त केएफसी कोडिकल के खाते में। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज अश्विन का तो अश्विन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे आशिक के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त लेकिन फील्डर वहां पर को मौजूद है जरूर डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जस्ट सिंगल गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के से गेंद को पुश कर दिया, रक्षात्मक तरीके से गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर। जब तक बासी तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। रन्स आर कमिंग इन सिंगल्स नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ केएफसी कोडिकल और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त टॉर्पेडोस खाना के अगली गेंद अश्विन की बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। अश्विन एक बार फिर से तैयार आशिक के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद इस बार खेलना चाहा चूंकि एक बार फिर से मंसूर ने टाइमिंग लगाते हुए गेंद को रोक नहीं पाए, बैकअप होता हुआ इस वक्त फील्डर शाकिर द्वारा ओवर की समाप्ति सफल ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अश्विन के 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 overs completed, 35 on the board, 6 wickets lost and now still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. धन्यवाद। और जहां तक सवाल है इस वक्त क्रिकेटिंग एक्शंस का तो यंग फ्रेंड्स उर्वा के क्रिकेट श्रृंखला के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं और जो गुड लक पुसोटो जो श्रृंखला आयोजन कर रहा है उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं। अब एक और बेहतरीन श्रृंखला केएफसी कोडिकल केएफसी ट्रॉफी 2025 केएफसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक और बेहतर और मशहूर श्रृंखला का आयोजन होने जा रहा है इस महीने के 29 तारीख पर 29th of May KFC Kodigel organizing a fantastic tournament in the name of KFC Champions Trophy 2025 and that tournament will be held at the Lords of Underarm Cricket Urwa Cricket Ground UCG Mangalore। निश्चित रूप से
ये श्रृंखला एक बेहतरीन श्रृंखला होने में कोई शक नहीं है। और देखते हैं इस श्रृंखला में आखिरकार विजय कौन होता है, चैंपियन कौन बनता है। KFC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दरमियान पहली गेंद इस वक्त गेंद को मोड़ दिया डीप फाइनल की दिशा में। 1 रन का इजाफा, जस्ट सिंगल गॉट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार और आशिक का सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा और इस बार गेंद शायद वहां पर स्टम्पसून का उखड़ कर इस वक्त गिर चुका है। स्वीप करने के प्रयास में चूके और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। आशिक इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन, 7th विकेट गॉन and the problems are now more building up for the batsmen of KFC Kodigal at this situation. 36 for the loss of 7 wickets and now just they got 3 wickets in their hand. तो कुल मिलाकर 10 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में और देखते हैं इन बचे हुए 10 गेंदों में उनके बल्लेबाज बचे हुए 3 विकेटों की मदद से और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। अब तक के हालात को देखते हुए ऐसा कहना पड़ेगा टोरपेडो शकाना के गेंदबाजों ने बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी इस वक्त की है। और इस बीच नंबर 9 बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए उन्हें कुछ समझाते हुए दूसरे छोड़ के बल्लेबाज हकीम की बचे हुए गेंदों को किस तरीके से इस वक्त खेलना चाहिए। और इस वक्त तो स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए चेतन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। डीप बैकवर्ड स्कोर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद जबकि लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन फैक्ट इन द ओवर नंबर ದುಬೈ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ MSC ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಇವರ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರಿಗೆ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So a fantastic strike this time came from the bat of the batsman. हकीम इस वक्त गेंद को जिस तरीके से इस वक्त स्कूप किया था काबिल तारीफ है। और यहाँ पर चेतन की गेंद थी और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंद को इस वक्त उन्होंने उछाल दिया डीप मिड विकेट पर 4 रनों के। तो जहाँ तक KFC कोडिकल के एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है इस वक्त हकीम की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है। और यहाँ पर जिस तरीके से इस स्ट्रोक को हकीम ने उछाला था निश्चित रूप से काबिल तारीफ। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था इस वक्त, फैंटास्टिकली लॉफ्टेड बाय हकीम एट द लास्ट मोमेंट and he's got a boundary for that stroke. 41 now for the loss of 7 wickets और चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट रिवर्स शॉट इस वक्त खेला कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। The placement was absolutely wrong and he just paid the penalty for that. हकीम का स्ट्रोक रिवर्स शॉट लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और डीप कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, शायद बासित वहां पर फील्डर थे और इसी के साथ हकीम का विकेट गिर चुका। उनका विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त सहज रूप से दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ KFC कोडिकल के ऊपर। सिर्फ 2 विकेट इस वक्त सुरक्षित और देखते हैं बचे हुए 2 विकेटों की मदद से बचे हुए 7 गेंदों में और कितने रन KFC कोडिकल के बल्लेबाज यहां पर बटोर पाते हैं। तो नंबर 10 बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ। नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए और चेतन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। हालांकि लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर पीछे की ओर जाते हुए अजय इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद नंबर 10 बल्लेबाज की हैसियत से और चेतन अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजय जो कि सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद इस वक्त एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विकेट उन्होंने उखाड़ दिया लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। 7 overs completed and after completion of 7 overs, still the problems are continuing here for the batsmen of KFC Kodigal. It's 41 for the loss of 8 wickets after completion of 7 overs with 1 to go in their innings.
ಆ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. धन्यवाद। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो शरण गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ केएफसी कोडिकल की पारी में। और देखते हैं इस अंतिम ओवर में केएफसी कोडिकल के बल्लेबाज बचे हुए 2 विकेटों की मदद से और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और शरण की गेंद का सामना करने के लिए तैयार इस वक्त बल्लेबाज एरिस। और ओवर की पहली गेंद लेकर शरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार एरिस इस वक्त सामना करते हुए शरण की गेंदों का। और शरण ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट, पहली गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, एनफील्ड क्लियर करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ते हुए और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर फील्डर गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। खूबसूरत स्ट्रोक, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट क्लियरिंग द एनफील्ड एट द लास्ट मोमेंट, प्लेड दैट वन, लॉफ्टेड दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल। और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके फील्डर थ्रो करे। बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 3 रन प्राप्त करने का और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त एरिस का। 44 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 8 विकेट, 5 बॉल्स लेफ्ट। और सामना करने के लिए तैयार अजय, जबकि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शरण। और जहां तक सवाल है फील्डिंग के नजरिए का, तो लॉन्ग ऑफ पर इस वक्त बासित मौजूद, लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिड ऑन पर इस वक्त एक फील्डर मौजूद है, डीप मिड विकेट मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजय इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन not so power in that stroke, in fact not quite get that one right from the middle of the bat and because of that he just got a single। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स नाउ। तो स्टेज पर गण्य अतिथि इस वक्त विराजमान और हमारे अजीज दोस्त बेद्रा मीडिया के मालिक इरफान, इनके पिताश्री भी इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से उनके इरफान के पिताश्री और सर्व गण्य अतिथियों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। इस बीच ये गेंद इस बार गेंद को उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर बासित जस्ट अ सिंगल ही गॉट और थ्रो वहां पर पहुंचता हुआ बेहतर फील्डिंग। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर। 46 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 8 विकेट। नाउ जस्ट 3 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स। और गेंदबाज इस वक्त शरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट अजय सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है। यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल बाई के रूप में। और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 47 रनों पर। 47 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। एक बेहतर साझेदारी इस वक्त बनती हुई एरिस और अजय के बीच और सिर्फ 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। और इस बीच गेंदबाज शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विक वन, मच स्ट्रेटर लाइन और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर मंसूर के हाथों में। तो अंपायर ने इशारा किया है कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, सो वन फील्डर दे हैव टू ब्रॉट इनसाइड द 20-yard circle and as far the rules and regulations of this tournament is concerned and now the last ball remaining in the innings। और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार शरण दाहिने हाथों पर द विकेट, जबकि एरिस इस वक्त सामना करते हुए। The last ball of their innings is now coming up. Sharan to the right-handed batsman Aris। और इस बीच शरण अंतिम गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से रोक ली गई है। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का, चौथा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े हैं लेकिन यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। तो 3 रन अंतिम गेंद पर बने, बेहतरीन तरीके से गेंद को स्वीप किया था इस वक्त एरिस ने स्क्वायर लेग फील्डर के सिर के ऊपर सेंफील्ड क्लियर करते हुए और 3 रन यहां पर बटोरने में सफल। और इन 3 रनों के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर केएफसी कोडिकल। दे बैट टू स्कोर एग्जैक्टली 50 रन्स फॉर लूजिंग 9 विकेट इन द स्टिपुलेटेड 8 overs। नाउ सेट अ विकेट टारगेट ऑफ 51 फॉर टॉर्पेडोज खाना। तो जहां तक सवाल है टॉर्पेडोज खाना का लक्ष्य का, तो 51 रनों का लक्ष्य, 51 द टारगेट फॉर टॉर्पेडोज खाना इन 8 overs। दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री with a required run rate of 6.3
8 runs per over. जहाँ तक सवाल है, required run rate 6.38 runs per over. They have to score for victory. 51 they have to score out of their 48 stipulated delivers with the help of 10 wicket. They have to score for victory. The present equation shows for them against KFC Kodikal. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से छोटे से ब्रेक के बाद आज पहली बार दो प्रतिभाशाली कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद है. हमारे करीबी दोस्त श्रीमान सैफ और श्रीमान शरवन जो कि हमारे साथ मौजूद है. इस मैच की दूसरी पारी के लिए इन दोनों महारथियों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा. आइए श्रीमान सैफ और शरवन, और वो इस वक्त माइक्रोफोन संभालेंगे जब KFC कोडिकल की पारी की शुरुआत होगी. तो अब और उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो अब वक्त है एक ब्रेक का और वक्त है DJ का. थैंक यू, धन्यवाद. MSc, Tilak Guru Young Friends Surva Mangalore, Plant Wonders Nursery and Farm, Mayuri Silks Moodbidri, Modern Developers, Riaz Handel, Honey Fall Paddy, New Regal Furnishing, Karnataka Sawmill ಹಾಗೂ Wood Plus ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ MSc ಟ್ರೋಫಿ 2025ರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ Hello. Hello. Very good evening, Bedra. Very good evening, Moodbidri. Absolutely delighted to be witnessing this such a beautiful looking MSc Trophy 2025, surrounded by a flood of fans, witnessing a great minds, great batters, great deliveries here. What a fantastic environment. We have been seen in the past, the achievement, the hosting, the structure, the template of MSc organization. And here they are with absolute underlight tournament. This year we are now looking at the second innings of this very crucial, very exciting contest between Torpedoes Kana versus KFC Kodikal. With me I have a very talented, exceptional cricketer.
for being part of MPL Mangalore, wide delivery called, who's played for a state, excellent cricket analyst, great cricketing knowledge with me here, safe Mangalore in the combox. He will join me in the absolute presentation of this game to entire Bedra Media audience and all the audience out here in the Swaraj Maidan. Privileged to be here, Sharwan. Thank you so much for the introduction. What an atmosphere here in Moodbidri. Moodbidri Sports Club presents MSC Trophy 2025. One of the biggest cricket tournament of this year. For past 4 months in 2025, we have seen a lot of wonderful cricket tournament in past previous week. JD Boys Bantwal presented a great tournament where Torpedo won the tournament. This time they are against KFC Kodikal. The second match of the Mangalore pool. The previous match, Young Friends Urva won against Gori Young Boys Pandeshwara. Today we have a lot of good matches. Good players all around Mangalore will be participating in MSC Trophy 2025. Now coming to the match, Torpedoes Khana begin the chase. Ashraf Mutur and Bashit Ulal, the captain of Torpedoes Khana, Bashit in the non-striker, and Ashik. ಅಪ್ರತಿಮ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂಎಸ್ಸಿ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್. Thank you. After welcoming the dignitaries to this MSC Trophy, 51 is the target for Torpedoes Khana. What do you think, Sharwan? Will Torpedoes Khana batters in the air towards the final leg region, just a drop. The fielder was a little slow to move. That's what Hakim, the wicket keeper, is shouting to the fielder. A good effort would have got the first wicket. Basit and Ashraf, two hard hitters, checking to see will Torpedoes Khana chase 51 or will the KFC Kodikal bowlers defend with Nizam, their best all-rounder, yet to begin his spell in this innings. So well safe. As far as Swaraj Maidan is concerned, the total on the board is really on the par. However, we just need to wait and watch how the batsmen will pull this off and how well will they build the innings. Will they stick to the template of how to execute the plans under the lights? Very well different from how they play under the sun. So really excited. Let's wait and watch. Good shot. A cheers coming from the Torpedoes Khana dugout. You usually don't see Ashraf playing those kind of shots. He is a power hitter who targets the long off long on region boundaries. But looking at the dimension of the ground, looking at the floodlights, he realized that this is what he needs to play. Rotating the strike, asking Basit to take charge. Torpedoes Khana just requires 6.5 runs per over. And if both the batsmen calculate their innings and play sensible cricket, Torpedoes Khana is on the driver's seat. There was a little bit attempt towards the square leg region, going a little bit hard. Doesn't look like they want to settle with the singles there. Steady start. However, the thinking looks quite different from how the score is going to be. I think singles and doubles will still do the job. Very vast ground, 360-degree opportunity to grab the runs. All the sides. That's the beauty about this Swaraj Maidan cricket. So I think the another batter is looking to take the charge. I think that's a good strategy for both of them to have one looking a little bit sensible and get the strikes rotating, another one kind of looking for the charge and in the safer side not to let the wickets. So that seems to be like a kind of a strategy of the batters. Safe. Your Torpedoes Khana going in the right track. 7 for no loss. Beginning of the second over. What improvement in underarm cricket. As far as I've seen underarm cricket in past 10-15 years, the improvement, the standard of underarm cricket has changed to an extent where nobody believed that people residing, working in other parts of the country, other parts of the world will witness their hometown boys playing cricket. All thanks to Irfan, started off his career just by recording a video in this own Swaraj Maidan. Here he is streaming live in YouTube with more than, I'm assuming 50k to 1 lakh subscribers. Congratulations on those effort, Irfan.
keep raising the bar. Underarm cricket has gone to a level where nobody would have even witnessed or dreamt of that they will be playing cricket live on a YouTube channel. Back to cricket now. Haris played crucial innings in the first innings for KFC. What a brilliant delivery. This is what the coach says for every bowler. Keep it on the off stump. Ask the batsman to come forward and play the stroke. Experienced batter, the skipper of Torpedoes Khana, back to the pavilion. Torpedoes Khana lose the first wicket. What a thinking by the bowler here. He was looking to kind of take the shots which kind of across the line. Bowler looking at pinpointing that mistakes and approach of the batter, trying to keep it wicket to wicket, and batsman absolutely does that, slightly trying to play out across the line, and here you see the fall of wicket number 1. What a blow here. Great breakthrough for the bowling side. Yes, very big breakthrough. Bashit, known to chase the scores for Torpedoes Khana, has won the match a lot of times for Torpedoes in the chase. Now the batsman entering number 3. One of the most favorite cricketer, favorite all-rounder for all of Underarm cricket spectators. Shakir Jaki for Torpedoes Khana coming in at number 3 to join Ashraf. This is a partnership Torpedoes Khana will look to build, but KFC Kodikal does have that bowling lineup with Haris making a statement on the very first ball he has bowled in this spell. Came over the wicket, just kept it simple on the off stump, uprooting the stump, and Bashid back to pavilion. Score currently is on 7 for the loss of 1 wicket. Haris for the second time, second over in progress, power play in progress, just 2 fielder outside the 30-yard circle, 1 in the deep, I would say a fine leg region, and another fielder in the long on region. Haris for a second time to the batsman, new batsman Shakir, known for unorthodox cricket. What a beautiful ball that is outside the off stump. Just a hint of movement from the pitch. Well kept by Hakim. 8 for the loss of 1 wicket. Sharwan, 43 to get from 41 balls. Do you think Torpedoes Khana would chase this down, or KFC Kodikal has that bowling lineup to defend the score? My hunch is that this is going to be very, very crucial neck to neck. The way the delivery that is coming from the bowler, even though it was far little bit outside the wide, but the way he was executing it wide, ball caressing the ground, and it was really a treat to watch straight from here behind the wickets. What an absolute delivery. But nothing, I think as long as Shakir is in the strike, the man well known for rotating the strikes and take the big blows when the situation demands. He's well known, and he's the standalone pillar for a lot of cricket teams here. He can single-handedly get the game and take off the game from the opposition. So he is still on the crease. So it's going to really be a neck-to-neck, is in my opinion. So let's wait and watch. It's going to be really exciting. The call for the third umpire has been made. Ashraf looked lazy when he took that single. Shakir ran off as quickly as possible as soon as he hit the ball towards the mid-off region. But Ashraf was a little hesitant to react. He thought the ball was directly in the hand of the fielder. But umpire Roland Pinto made a decision to go to the third umpire, and Harish Padil, just looking at the TV screen, looks a close call. The bat is slightly in the air. Hakim did a brilliant job. It's a very close call. The third umpire taking a good look at the screen of Bedra Media. If this is a run out, then that's a big ask for Torpedoes Khana, because Ashraf is such a kind of player who will dominate any kind of bowlers. But Haris is bowling a beautiful over for KFC Kodikal. He's just conceded 2 runs so far, 1 in the form of extra. So far just 1. If this is declared as not out, that would be 2, but let's wait for the decision from the third umpire.
Still taking a close look at that umpire Harish Padil, a pretty experienced umpire. He just looks at. Not out is the call. Ashraf made it easily to the crease. 2 runs so far in this over. Haris is bowling a brilliant over. Just checking at the balls to be bowled in this over. I guess it's 3 more deliveries left. So how do you see this ground? I think one of the best I have seen. See how flawlessly it has been designed, tuned, and made it very, very friendly to the fielders, bowlers, and batters. I can see from the com box here how flawlessly they have managed to get it so neat, very evenly. Very even surface. All the 360-degree opportunity for the batsman to grab the score. Very true. Good ground to play cricket. What an effort from the MSC people. They have made sure that the ground is prepared in a way that everybody gets a good opportunity to showcase their talent for the batsmen, bowlers. The dimensions of the ground, I'm assuming it's just 60-meter boundary, but it's under floodlight. It's still a hard task for the batsman to hit. Ashraf trying hard to clear the boundary. This is a power play, but Haris has kept him quiet so far. In the air, and the man under it, and no mistake there by the fielder. What a great execution from the batter, but no making a mistake there from the fielder. What a great effort. It was easy situation for a fielder to grab in. Each dotted delivery was creating a pressure, power play pressure for the batsman. It is always advantage for the batting side to grab extra runs, and every extra 4 or 6 can add up to the total and make their chasing total a little bit easier to accomplish. So that's what was the mindset of the batter. 1 dotted delivery, 2 dotted delivery, and it's a very natural instinct that they should start looking for the good one. And that's what exactly bowler was focusing on. He wanted the batter to look for the big one, and batsman falls for the prey of the bowler. Wicket fallen here. Great thought. Yes, the pressure got into Ashraf's mind. He was not timing the ball as he would like in this game so far. He tried to whack a few balls over the long on long off region, but a good captaincy by Hakim, placing 2 fielders on the long off and long on region. Now the batsman replacing Mansoor Rantadka. Good ball. What a shot. To start off the innings, flicking the ball towards mid wicket, similar to an helicopter shot. It's not an easy for the pace of Haris. What an over this has been from Haris. Just conceded 3 runs, picked up 2 wickets, and he has made sure that KFC Kodikal is back into the game. Now the run rate, required run rate has moved up to almost 7 runs per over. With score on 10 on the board, they still require 41 runs to get from 36 balls with 8 wickets in hand. The bowling side slowly trying to catch the momentum, putting more under pressure, putting batsmen under pressure, trying to get those dot deliveries and capturing the wickets. What an excellent spell from Aris. That's exactly what the side of KFC Kodigal would require. What a game plan here. Aris just letting 3 runs, capturing 2 wickets off his over. What a great contribution to get started in this second innings. Long way to go in this innings. Still the balanced momentum. 1 good shot can change the momentum towards the Torpedoes Khana side. What a great batters still on the crease. Very well known faces. Mansoor and Shakir. Mansoor, someone who can go as hard to the extent that he can belt the bowlers in every possible way. It was always treat to watch him punch the ball outside the 30-yard circle. He has well-known set his records in capitalizing on the power plays in the past. So I can see him looking for the gap, some extra field placements, because the fielding side is well aware of his
potential that what he can do when he can take away the game from the bowling side. Once again, taking Mansoor, taking on the delivery. Well bowled there. Straight down the line towards the short covers region. Fielder making no mistake there, dotted delivery. 2 overs from this man is going to be crucial for KFC Kodikal. He is the most experienced cricketer for this side. In the air, Ijaz wasn't trying to get to the catch as well. He was very slow to move initially, but indeed it was a difficult chance in the mid-wicket region. As I said, Nizam's 2-over spell would be a crucial 12 deliveries for KFC Kodikal. So far, Haris has been brilliant in his bowling. This partnership is what KFC Kodikal needs to break. These two experienced cricketers, if they build a partnership up to 25 to 30, KFC Kodikal is in the back foot. But Nizam, his experience matters here. He has played alongside with Shakir for a long time. Good ball, good thinking. He knows Shakir plays under the carpet really well. He plays the sweep shots really well. So just a change in length. He pulled the length back, bowled a full toss delivery, surprising Shakir, and that's resulted in a dot ball. 3 balls completed, just 1 conceded so far in this over. 11 on the board after losing 2 wickets. Torpedoes Khana. Not getting a connection straight down the bat, trying to sweep the ball. Shakir, the man who can take the responsibility, is the man who estimates the chase. I can say he's one of the best chaser of the game. Little difficult to get him beaten. He knows to take the singles. He can advance and get the single. He can advance and, if required, dispatch it outside the boundary line as well. Once again, Mansoor taking the strike. Huge appeal there. Yes, umpire is interested there. Fingers towards the sky, and what a great reward for the bowler after continuous and constant attempt for getting the ball swept there. There is a miscommunication between the ball and bat, trying to sweep the ball towards the square line region. Mansoor is not happy with this now. He has to depart. One of the striker of the game for Torpedoes Khana unfortunately has to depart to the pavilion. Big wicket, big blow for Torpedoes Khana. So do you see the spirit raising from the fielding side with each deliveries getting dotted and the pressure building towards the batting side? I think that's very natural, and we have to see if this will remain throughout with the coming of big shots as well. Very true, Sharwan. At the beginning of Nizam's over, I made a statement saying that the 12 deliveries from Nizam would be a big ask for Torpedoes Khana. But looking at their batting lineup, one batter after the another, all masterclass players. New batsman Imtiaz, known as the wall of underarm cricket. Look at that, first delivery, confident sweep towards the fine leg, in fact the square leg region. These two batters, the history they have together is they pick up singles and doubles very easily. This partnership would be crucial for Torpedoes, where they have lost 3 big hitters already within the 3-over mark. Bashit, Ashraf and Mansoor, all 3 hard hitters of the cricket ball are back to the pavilion. But now it's up to these two gentlemen, Shakir and Imtiaz, steady the ship. They know what they're chasing. This 51 is a target. So far they've only scored 13 in the 3 overs for losing 3 wickets. This partnership needs to build for Torpedoes Khana. The dugout looks a little dull now, but they don't have to worry. They have still batters to come. They have Akram, another hard hitter. They have Sinan, the young talented Sinan, who has been the man in form so far for Torpedoes Khana. They have a lot of good cricketers still waiting in the dugout to showcase their talent and win this match for Torpedoes. But it's up to these two gentlemen now. Shakir, Imtiaz, 13 for the loss of 3 wickets. It's 38 runs to get, 30 balls to go, 7 wickets in hand. I think good strategy from the captain of Torpedoes Khana. That's what they need. Rotators of the strike. They experimented with the 1 striker and the 1 rotator, but unfortunately could not get that capitalized in the initial overs. I think now these two, very well known, who can build the wall. A good partnership between these two will definitely cost the fielding side. But however, the way, the execution, the clarity the fielding side has with the delivery, with the keeping there, with the fielding set, it looks absolutely flawless there. Now this is what Shakir and
Imtiaz will focus on just rotating the strike, gently taps the ball, pushes the ball, not interested to punch it outside the 30 yard. They are happy with this single. That's what they need. They don't actually need a big ones to get to the total, but the wicket is something that they need to retain and keep the momentum going and build some good partnership. Indeed, Mansoor had a brain fade moment. He didn't have to go to that shot actually. Nizam was bowling a brilliant over. A rotation of strike would have been a good score at that moment of the game, but Mansoor thought that that ball was in his arc, so he kept his front foot away from the stump and just swept it towards the mid-wicket region, but the ball hit the pad first and umpire adjourned him LBW. But now these two gentlemen, known for their sensible cricket. This is really bad bowling from Dikshit. This is really bad from Dikshit. The first 3 overs, KFC Kodical bowlers build up that pressure, picking up 3 wickets, keeping the batters of Torpedoes quiet. But now he has come and bowled 2 extra deliveries, conceding 4 runs with those deliveries, but just completed 1 ball and conceded 5 runs so far. Score has already jumped to 18 on the board now. So it more looks like batsman is focusing on targeting the mindset of the bowler rather than the ball itself. Do you see? They just need to keep rotating, and that's what frustrates the bowler, and that's what is. You can see their bowler missing his line at the moment with just 1 or 2 singles. So he need to stay composed there because Shakir and Imtiaz can cost them. 1 more single there. Sweat towards the short leg region. Not more than the single. They don't look to be provocative. They don't look to be greedy for the big ones. I think in the initial, this is not a. Since this is a knocker, I don't think so. There was a necessity, even though it was a power play. Looking at your board is how you need to plan the scores and not necessarily always for the big ones. And what a attempt for the run out there, but huge appeal. Decision pending there. Ball crosses the boundary line, but was that considered to be dead? Was it an attempt to the run out? I think we need to wait and watch. It looks a bit confusing. The bails lit up when the bowler threw the ball to the stumps, and Shakir was absolutely out of the crease. But a quiet discussion with what has happened with those bails. I'm assuming the bails is not. The KFC Kodical fielders are celebrating, and that's a wicket. What a big wicket this is. The anchorer for Torpedoes Khana's chase, Shakir. It was not at all a run. Those risky singles for a caliber of Shakir is not at all required. You know, if Shakir even plays 2 to 3 dot balls, he is a batsman who can make up for it. But Imtiaz had other ideas. He just defended the ball straight to the hand of the bowler, and Shakir called for the run, and now he is back to the pavilion. Replacing him, another batsman similar to Shakir's caliber, Chetan, into the middle. I think this is what cricket can do for you. I think it was a kind of a lazy intent to cross the crease, but little did he realize that it was coming straight towards the stumps, directly hitting onto it, and he would be required to sacrifice his wicket, and that's what happened. The fielding side was just trying to build the pressure towards the batsman. With that, the batsman was trying to get those strike rotated, build some momentum, get some partnership. It could be a good strategy to go for them, but unfortunately, a little irresponsible approach costing the wicket. Dikshit needs to make a good comeback. He has bowled 2 wide deliveries so far in this over. Chetan is similar to how Shakir bats, more of a square of the wicket player. He relies more on his sweep and reverse sweeps, whereas Imtiaz, known for his classical cricket shots, looks to score on the front foot strokes. Imtiaz and Chetan, 26 balls to go, 30 runs to get. Beautiful delivery, beautiful bowling. This is from Dikshit, just keeping it simple. This is what the bowlers of KFC Kodical needs to do. The pressure is on the Torpedoes batters, not upon you guys. You've already picked up 4 wickets. They still need 30 runs
it's very hard to get 8 runs per over under the floodlights because it's not easy to clear the boundaries unless you are very powerful hitter. Dikshit needs to end this over. Score is on 20. Over up. 4 overs completed. Score is on 21 for the loss of 4 wickets. Exactly 30 runs required from 4 overs. 24 balls left. 30 runs to get 6 wickets in hand. We are coming towards a very big fight match here. KFC Kodikal, what a comeback. Haris, he came as a number 9 batsman, scored crucial 8 runs, bowled a brilliant second over in the power play. And Nizam followed it up. Now he is again back into the attack from the commentary stand. And Chetan and Imtiaz planning the chase. They still need 30 runs to get from the last 4 overs. Torpedoes Kana needs to apply. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The next match. ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. A single towards the covers region. Nizam. So do you think it would be wise from the captain's side to pull in some of the fielders inside the circle, because the way they would want to progress with the batting, they would just looking for the strikes, bringing in some of the fielders inside might put the batsman under more pressure and maybe provoke to get for the big shots, or maybe it might be a little too risky as well. A run out miss there from Ijaz. With the history of cricket in and around Mangalore, if you have followed cricket, if you follow underarm cricket from a very long time, the field position behind the wicket keeper is the most crucial one. The keeper is always blindfolded when the batsman comes across. So the fielder, top edge, Haris under it, that's the number 5, that's wicket number 5. The big wicket of Imtiaz, the anchor is back to the pavilion. Now it's up to the next batters. Chetan standing in the middle. Torpedoes Kana lose their 5th wicket for the score 23 on the board. Lack of clarity, lack of strategy to take it forward. I think batsmen not getting their sweet spots as well, edging down the line, not getting good connection to the bat, missing the sweeps. These are some kind of observations that puts bowlers and boosts their confidence and kind of drops the confidence of the batsman. So it's kind of more of how the mind is operating from both the sides. But it's just about one good over, one good partnership, or probably one good strike outside the boundary that can change the momentum and everything from the bowling side could be shaken. But so far, KFC Kodikal looks with a great spirit, on point with the strategy. It's a pressure of the tournament, it's a pressure of the chase, it's a pressure of the putting a score on the board. KFC Kodikal scored 50 in their first innings. I'm a little surprised with the Torpedoes Kana's movement here. The man in form for this season, Sinan, is yet to enter the ground in this chase. He has the capability of scoring big on the chase, and I guess there is another wicket. What is Torpedoes Kana doing? Why is Akram so slow? It was indeed a 2 runs. It was hit to the left of the fielder. The fielder was in the long off region. The ball was struck to the covers region. It's always a difficult pickup for the fielder coming to the left of his side and throwing it from the right arm. But Hakim, he had a good plan, came in front of the stump and picked the ball and hit directly towards the striker's stump. And Akram is still waiting. The third umpire decision is still waiting.
And if this wicket is lost for Torpedoes, they will lose number 6. So kindly request all the spectators sitting along with the camera tripod, please make space. Please get down from the camera pod. It is creating a problem for the broadcaster here. Bedra Media kindly requests all the spectators seated on the tripod area. Thank you very much for your cooperation here. It makes the match much better for all the spectators out here and also all the cricketing fans throughout the world witnessing this great contest, great cricket festival through the Bedra Media telecast in the YouTube. Yes, that is out. We have a decision from the third umpire here. Unfortunate situation. I think Torpedoes Khana still got a strong lineup. They just need to refresh the thinking. Near the camera area, kindly request all the spectators to not lean on the barricade. It is almost about to collapse. Please cooperate with the organizers. It takes a lot of effort to put together a show. Such kind of a beautiful structure and hosting requires a month together of effort, sweat and dedication. So kindly support with the organizers by not leaning onto the barricade. The spectators towards the square leg region near the camera, please support by not leaning towards the barricade. Thank you. Coming back to the pitch, some refresh of thinking required. There is no scarcity of batting lineup in Torpedoes. Leg by is called there. Not making connection again. So far the momentum towards KFC Kodigal. They are all committed to keep the momentum going. Keep the spirit going. Each and every fielder, the bowler looks in good communication. And what an absolutely fantastic delivery. Wicket to wicket delivery, not making any mistake there. The bowler strikes the stumps. LED lights up. Another wicket fall for Torpedoes Khana. Torpedoes Khana is halfway marked towards their target. Still, I wouldn't say that there is a complete shift of momentum, but so far, all good for KFC Kodigal. Everything seems to be working for that side. Good strategy. Hakim looking very good with the tactics. Nice field placements. So, Saif, as you mentioned, I think there is no scarcity of the lineup for Torpedoes Khana. Any one batter could be destructive and pull the game away from the momentum and shift the complete momentum. That's what they need to refresh their minds and just start thinking from that lines that how can they think by not looking back at what happened so far and by looking forward from how can they get towards the total. Got all the potential on the lineup. Very strong team on the paper. Really appreciate the way KFC Kodigal is not giving any opportunity to lose the momentum, keep the spirits high, stick to their plans, not fumbling much. Once again, trying to reverse sweep, nicely done there. Third man fielder making no mistake. Comfortable run completed. Good connection. If they keep getting this, and maybe here and there, something outside the boundary line. We couldn't see any single strikings from this side so far.
Maybe something of that sort can start some noise from the dugout of Torpedoskana, but let's see. I would still back Torpedoskana to chase this down, because the two batters in the middle, two are the powerful strikers. Haris usually used to open for his home side. I've seen one of those innings which I can still refresh in my mind in Paradise Ground, where a lot of sixes were towards the square leg region, and Sinan, as I said earlier, he is a man in form so far for Torpedoskana in this season as a batter. But these two are facing Haris. What a match this guy is having. Runs with the bat, wickets with the ball, outside the leg stump, chance of a run out. Unnecessary throw that is from Haris. Umpire calls it as a wide. One added to the extra, one added to the scorecard. Haris needs to avoid all these. Torpedoskana have lost 7 wickets. They just need to break this partnership. They still have 2 batters to follow, Ashwin and Sharan, to follow after this wicket. Haris just needs to keep calm. Haris just needs to calm down and just realize that he's been fantastic so far in this match. He just needs to hold his nerves and win this game for KFC. Haris, right arm over the wicket to the hard-hitting Sinan. Nicely played towards the covers region there. This kind of rotation is all they require. Still not too late to pull the momentum. Bowlers need to see how they can pressurize the batsmen and continue doing that, not let build the innings which can take away the game from them. Everything seems to be good. If you have noticed, Sev, I think the strategy wise, I don't see much of a fumble from the fielding side, where they kept on changing the fielding side. I think they're sticking to the plans and everything seems to be working for them so far. So let's see how we can progress the rest of the innings. Good field setting so far, I would say. Good field setting. They've kept the long off inside. They know that it's not easy to hit the ball straight down the ground. They've kept the covers. They've kept a third man deep. They've kept the fine leg deep. Good field setup so far, because the ball and the difference between the ball and the runs is almost 7 runs. There, 4 balls completed. Good shot. Good bowling so far. This is from Haris. He's keeping it simple on the stump. This is what he needs to do. He just has to end his over in a brilliant way. Last 1 delivery to go. Score is on 31. 20 more runs required. 13 balls to go. It's not a tough ask, but I would still say KFC Kodikal 60, Torpedoskana 40 is what the current win predictor is so far in this match. But having witnessed a lot of cricket in the past, Haris and Sinan are the 2 match winners for Torpedoskana. Haris to Haris, last time of for the 7th over. Good ball. What a brilliant performance so far. The spectators of Moodbidri, what a performance you have witnessed so far from this young lad from Krishnapura. Haris representing KFC Kodikal scored 9 runs, ball 2 crucial overs. What a bowling, what a batting. Good all-rounder Haris. 12 balls to go, 20 runs to get, 3 wickets in hand. Would you think Torpedoskana has upper hand, or KFC Kodikal is in driving stage, Sharwan? So the way you are taking the brave bet on the Torpedoskana, I wouldn't say the match is completely with the shifted momentum. I think the way we have the balanced lineup for Torpedoskana, it's just about 1 or 2 deliveries that can change the momentum. At the same time, KFC not making any compromises with the effort, the commitment, the spirit, which is keeping them up in this game, in this innings. They need to stick to the plan, stick to the basics, and believe the instincts and keep going without trying to do something different, something experimentative. And so batsman is definitely now has to think something beyond the 30-yard circle. Is if they have to estimate to get closer to the total, I think just a gently push or a slight cut will not do the job. There needs to be something that is coming in. I don't think so this has to happen in the last over. It should start coming from this over, and I think as a batter you need to plan it that way. Again, trying to the reverse sweep, not a... So yeah, we have a timeout there.
Umpire announces a timeout. KFC Kodikal has not completed their over so far on time. So as a penalty, they needs to get one fielder inside the 30-yard circle. They're pulling. Surprisingly, they're getting the third man back. The previous ball, Sinan tried to play the reverse sweep, but surprisingly, they've brought that same fielder towards the short third man region. This is the penultimate over. 11 balls to go, 20 runs to get. Can Sinan Shokas is class. Good shot. This is one of the shots that Sinan plays. Just a short arm jab towards the mid-wicket region, but just resulted in single. He's targeting that mid-wicket region. 19 runs to get, 10 balls to go. Can Haris pull off those big muscular heave towards the square leg region? Ashik, good bowler from Ulal side this time for KFC Kodikal. Ashik just needs to keep it simple. That's what Hakim behind the stumps is saying. Just keep it on the stumps. Let the batsman take risk. 10 balls to go. 19 runs to get. 3 wickets in hand. We are towards a crucial match. That's what I was just saying a few seconds ago. A long strike towards the off stump. Picking the ball towards the square leg region. Ashik just gave him as the gift. This is what Haris Farangipete is. He is the man to chase this for Topodoskana. Sinan just needs to say, now the score is on 38, where just 13 runs required from 9 deliveries. What a flawless shot. Such an ease. I did not see any of the effort coming from the batsman. Such an effortless execution, straightly dispatching towards the fine leg region outside the boundary. Here comes the noise from the dugout of Torpodoskana. Saif, I think very well agree with the instinct that you were talking about. It's another time trying to capitalize off that pitch delivery towards the trying to reverse sweep it. Bad connection between the ball and bat. Dot delivery. Hard appeal for the stumping there. Umpire is not interested. Couple of more runs required for them to keep the rotation going. They need to take consolidation of that maximum that they just contributed within the scoreboard. Having the dotted deliveries will not do the job. I can keep looking at that shot again and again. What a neat shot it was. What a clarity. Simply played. That was a classical execution that simply shows his. So that shot just reminded me the blinder shot from Hardik Pandya, that where he says that when there is 2 to 6 or 6 required from 2, 6 required from the body language that you see from him, that's exactly the kind of body language I could see from the batter here when he got that maximum. It's just sounded like it's a cheeky one, not a big score, I'll get it done, kind of an body language with that shot. Such a simple one and effortless shot. That's his go-to shot. Haris has been playing this since the time I've seen him watch. Again goes to that shot. This is what is required for Torpodoskana. As far as the Torpodoskana batsmen are concerned, I knew that the partnership KFC Kodikal had to break. As soon as they lost the top 3 batters, Basit, Ashraf and Mansoor, they had only 3 hitters, that too in the lower order, and out of those 3, 2 are doing the job. Sinan staying and doing what he has to do in this situation, and Ari is taking the risk, striking 2 beautiful sixes towards the square leg region. Torpodoskana back in this game, back in this chase. The score moves on to 44 on the board, just 7 runs required from 7 balls. So R is keeping up all the jinx that you gave me, Safe. I think he seems to be very well confident with the scoreboard. Doesn't seem to be even a pinch of an additional pressure. Looking for the gaps. Bowler seems to be a little bit under pressure now. Yes,
He needs to keep going there. His plan was simple. Keep it rotating and get one big one, and that's where they are now slowly marching towards closer to the total of the target. 6 ball to go, 6 runs to get. As predicted in the very beginning, it would be going to be neck to neck. The way we see the lineups for both the teams. The way KFC Kodigal kept on bringing on the momentum for them, kept on accuracy on point so far, but somewhere losing the momentum in the over number 7, costing them a bit, giving some momentum, slight shift of momentum towards the Torpedoes here. I think to be on the neutral side, I would definitely interpret it in such a way that bowler is someone who would be under pressure now, because the man and the strike is the man who bought a brilliant maximum in the last over, and if you are not able to hold him back, it could have been a difficult job for the bowler to stop him, because his execution doesn't seem to be coming from a lot of effort. He is neatly executing. He seems to be well planned of what he needs to do. I don't see any predetermined shots there. He is playing towards the merit of the ball. Is he going to rotate it, or does he plan to get a big one and close the show for this innings? What do you think, Saif? Looking at the bowler now, Dikshit, I would still say Aris would going to take a risk this time. He will target the square region. That is sensible cricket. This is very smart cricket. This is what the top order need to do, and that is what Aris is showing to the top order's dugout. This is how the scores are chased. If you see overall in the cricket history, whenever there is a score to be chased, one guy the world relies on is Virat Kohli. The only reason is because he's successful is because his clarity, he knows what he is doing, he finds what the matchups are, which bowler to target. Those plans are really crucial whenever you are chasing, because you always have to chase 1 run extra, 1 run more than the first innings. I'm getting an update from the scorer here. By any chance, if this match ends up in a tie, there will be a super over to decide the winner of this game. 2 captains, please note, by any chance if this game ends on a tie, there will be a super chance of run out. A good throw would have resulted in Sinan going back to the pavilion, but a misfield from the fielder in the mid wicket region. Sinan gets 2, Torpedoes Ghana gets 2. Score is on 48 with just 3 runs required. What has KFC Kodigal done? Look at the body language of the fielders. 1 over from Ashik has completely turned the tables towards the Torpedoes Ghana. What an innings Haris has played. 4 balls to go, 3 runs to get. Is there another twist in this game, Sharwan? Oh, playing very responsible cricket, but now he takes on the wrist and ball up in the air, quite outside, dispatched it. Very well dispatched it wide outside the boundary line there. What an absolute sensational execution from the batsman. What a great finishing execution there. And I remember the shot. Dhoni finishes in style. Here the man Sinan finishes in the finishes with the style there. Save the jinx that you showed towards Sinan. I think he proved it there. What a responsible cricket. What an absolute clarity and what an effortless shot that was far outside the boundary line, bringing the victory to our Torpedoes Ghana. What a great show put up, completely changing the momentum in just 1 or 2 overs, and really not happy. I am very sure the KFC Kodigal would be very disappointed the way they put in the efforts. Credit to them, but however, as you mentioned, Aris and Sinan completely changed the momentum and took the side in just a matter of 5 to 10 deliveries. What a great show. What a great match indeed. What a show from these 2 batters. As soon as this partnership started building, I had a gut feeling saying that this partnership would take Torpedoes Ghana through, because the history of these 2 batters have always been their play duets during the crunch periods of the game. And congratulations Haris, congratulations to Sinan, and a big congratulations to Torpedoes Ghana. Commiseration to KFC Kodigal, wishing them better luck for the upcoming tournament. What a game. Thank you to both the umpires officiated in this match, and also the scorer, the man of the match of the match number 2 so far.
Ladies and gentlemen, the player of the match of match number 2, request Haris Torpodeskara, the player of the match, MSC Trophy 2025, fourth day, second game, Mangalore Pool, second game, Torpodeskana versus KFC Kodikal. The player of the match is Haris Torpodeskana. Congratulations. Up to the next match, Sneha Malemar taking on the host. Ladies and gentlemen, the people of Bedra, your very own MSC Moodbidri, will play against the mighty Sneha Malemar. Let's all get the crowd pulling to see the legends of MSC Moodbidri fight against Sneha Malemar. Thank you, one and all. Also, for this MSC trophy, we have best wishes coming all the way from Bangalore. We have a group called Door number 301 sending their best wishes to MSC Trophy 2025. Thank you very much. Up to the next match, Malemar versus Moodbidri. Bedra, brace yourself. Well, there's a man of the match award in the main dugout for the coming match. Malemar taking on MSC Moodbidri, requesting two of the legendary commentators, Mr. Satish Salian and Mr. Gopi, to take over and entertain the crowd with their beautiful voice and beautiful words. Over to you, gentlemen. Sneha Malemar versus MSC Moodbidri. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬೆದ್ರಾ ಕಪ್ 2020 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಸಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ರಿಫಾನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಎನ್ಎಂ ಎಫ್ಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಎಸ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆದ್ರಾ ಕಪ್ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಅನವಸ್ತ್ರ ಇವತ್ತು ಅನಾವರಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಫಾನ್, ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ನೂತನ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್, ಹಾಗೇನೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಆಸಿಫ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಹಫೀಜ್ ತೋಡಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಫಾನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓರ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು
ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hall test hall.
fertilizers, Savodaya friends, Navodaya friends. Shavanify, Mahalakshmi Supermarket, Chitraksha Juice, Aluminium and Furniture's Works. Asid Hussain, MSC Saudi Arabia. Asif, meanwhile, the first ball of the over number second, Kiran brought into attack, the left-hand bowler. Kiran bowls to Salam Senior. Kiran again. Left arm bowls. Wanted to sweep the ball. Oh, they're going for the single, chance of run out, but the fielder Yatin couldn't manage to hit the stump. Both the batters completed a single. Leg by call by umpire with the addition of leg by. They open their account 1 for 1. Kiran bowling away from us. Left arm over the wicket. Left arm. Again balls, beautiful delivery. Fantastic one. And Arun, the batter, completely missed it. Bowled him. Wicket number 2 is back in the pavilion. The wicket number 2 is back in the pavilion. So, the legends, of course, it's not so easy, isn't it? Of course, no doubt at all, they played a fantastic game of cricket in their days. The 80s and 90s, definitely. These all the legends of MSC Trophy, MSC Moodbidri team. They dominated because of their performance. But what you call in the present day, it's not so easy. But you need to appreciate. This is what we are seeing umpires camera in the screen there is showing that pitch. Arish Patil wearing that camera at square leg. All lovely delivery. Kiran this time tried to bring that one into the batter and by appeal for something there. Bowled out, bails are off. So bails are off, so the umpire asking for the third umpire. It's like a bit of confusion here for the umpire whether the ball is kisses the stumps or not. Let's wait and see. The third umpire will going to give the decision here. The excellent tournament is in progress. What we are talking about, Moodbidri Sports Club. Moodbidri is celebrating their 35 years of a successful journey. They definitely, this particular tournament, then cricket lovers will going to remember for a long time. Such a wonderful arrangement we can see here. This is only because of dedication and determination that's shown by the organizing committee of MSC Trophy 2025. It's not so easy. So if you see that organizing 1 day, 2 day, of course, and difficult, but organizing such a huge day, 6 day of cricket tournament, it's not so easy. Under lights, a lot of need to make a lot of arrangements here, and more than anything else, the attractive part of this Swaraj Maidan is that the very beautiful stage. It's a bowled out. Just kiss the stumps and is back in the pavilion. We are just waiting for the new batter. So we are grateful for that arrangement which is made by the organizing committee. That's only because of the support from the donors for this particular cricket tournament.
Rahim, the new batter. Ah, nice looking drive. Rahim has played it very nicely down to long off region. And by seeing the stroke of Rahim, he's a batter is in a touch. Maybe he's having a practice regularly. The way that he confidently played that ball into the long off region. He's got his first run here. Scoreboard is 2 on the board. A lot of the cheer which is coming from the crowd. Quite understandable. They are seeing their legends after a long time here. It's a good concept here from organizers to get one chance here for the legends of MSC and giving for their opportunity to just refresh their olden days. It's not for the winning the match, I want to tell you. This is what the concept for the legends is that, of course, the legend players, after they're finishing their career, after watching the youngsters performing in the ground, maybe they're thinking about why not we are out of this tournament. We need to get one chance here to just a little bit. Yes, it will give so much of happiness for that players. Still, they wanted to again memorizing their olden days. So bowler brought on attack from the far end. Oh, beautiful delivery. Perfect one. Perfect stuff here from the bowler. So fantastic delivery, and the batter, one who looks so confident after playing off drive in the previous delivery. Money, the bowler, brought into attack, and he got the wicket in the first ball itself. Far outside the nerve of stump, going to be a wide, one more extra. With the addition of that extra, scoreboard numbers on to 3 on the board. Manish, again going to be a wide. The bowler couldn't manage to get his line and length. Money, he got a wicket in the first ball of the over. Again, sharp incoming delivery, but looks like umpire already called it wide. Yes, rightly so. One more extra. After he got the wicket, again he bowled the consecutive wide deliveries. This time Salam wanted to play that present cricketing stroke, that is a reverse sweep. I'm not saying that the present cricket, but olden days also some players loves to play the reverse sweep, but not regularly. There's few players loves to play the reverse sweep. Again, wanted to go for the reverse sweep. This time he got a position very quickly, but of course your mind which is saying I'm going to do this, like I want to play like this, but body, the physic, what you're talking about, which is not responding to your mind. What mind is saying to him, but the physic what talking about, age is definitely going to be a factor. But you need to appreciate their the interest in the game. Again, outside the line of off stump. One more extra. Oh, lovely delivery, beautifully bowled by Mani. I'm watching Sneha Malamar. They're wearing the black ribbon in their right hands and left hand. In fact, it might be the tribute to their teammates, Santosh Malamar, who has passed away a few days ago.
so that giving the respect to his soul. They are wearing the ribbon in their left hands. So 9 for 4, over number 3, which is comes to 9. The fourth over started. Pratap brought into attack and starts with the delivery, which is deflected from the leg of the batter and no run scored. Pratap to Manish. Just outside the tip of the bat, no run scored, down to third man position. We are going to start the match after this. One more match between NM cricketers, Mangalore versus Nazma Moodbidri. One more wicket is back in the pavilion. Like before wicket, MSC Moodbidri legends are, of course, almost looks like they're unsettled with that the bowling department of Sneha Malemar. The official sponsor of this cricket tournament and Mr. Suresh Prabhu, the councillor TMC Moodbidri, Fortune Promoters, Trans Overseas Kingdom of Saudi Arabia, popular trading company covering you, rain or shine. Pratap bowling away from us. This time they wanted a single, no run scored. The perfect tribute for Santosh Shetty, late Santosh Shetty, one of the sponsor of Sneha Malemar and one of the big supporter of Sneha Malemar. Santosh Shetty is passed away from a few days back. So just wanted to give the tribute for that man. 4 overs completed. And still they're searching for the right track. MSC Moodbidri are 11 for 4. And time to change in commentary box. I request Mr. Gopi to take over the microphone. The remaining 4 hours of the innings of MSC Moodbidri A. Let me correction, 12 for 4. 12 for 5. धन्यवाद सतीश. 13 ऑन द बोर्ड एंड 13 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. और जहां तक सवाल है इस वक्त 5वें ओवर का, तो पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. और अगली गेंद हल्की सी गेंद अंदर की ओर आती हुई पॉइंट पर गेंद को खेल दिया. और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस बीच मिलेंगे एक लेग पाई के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 5 विकेट. 16 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. 5th ओवर इन प्रोग्रेस. और इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता. गेंद इस वक्त पहुंची शॉट मिड विकेट पर. MSC Moodbidri को चाहिए चंद चौके और छक्के यहाँ पर अपनी टीम की गति को एक्सेलरेशन देने के लिए, रन की गति को एक्सेलरेशन देने के लिए. और गेंदबाज इस बीच अपने और की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार ऑफ बैक फुट गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. 1 रन का इजाफा. जहाँ तक MSC Moodbidri A का सवाल है, उनके भूतपूर्व खिलाड़ियों का, दिग्गज खिलाड़ियों का समागम इस मैच में होता हुआ, खासकर 90वें और 2000 दशक में जो खिलाड़ी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था MSC Moodbidri का, वो खिलाड़ी इस मैच में एक बार फिर से एकजुट होकर MSC Moodbidri ए के नाम के टीम में इस वक्त खेलते हुए अपने गतकाल के वैभव को
पुनर्अनावरण करने की पूरी कोशिश में एमएससी मुडबिद्री के खिलाड़ी है और यहाँ पर रन्स मिलेंगे 18। तो ओवर नंबर 5 की समाप्ति और प्रताप इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और नया ओवर लेकर इस वक्त तैयार। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा वाइडर बैकफुट पर गए, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है 18 रनों पर। 18 एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। प्रताप ये गेंद स्वीप करना चाहा, इस वक्त गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंच चुकी है, रन्स फिर से नहीं मिलेगा बल्लेबाज को और स्कोर इस वक्त है 18 रनों पर रुक चुका है। छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर। तो यहाँ पर विकेटों पर गेंद टकरा चुकी है, बोल्ड आउट के रूप में ये विकेट गिर चुका है और एक और विकेट यहाँ पर खो चुका है एमएससी मुडबिद्री ए। स्कोर है इस वक्त 18 रन, 18 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इरफान ऑफ कटर गेंद, प्रताप की गेंद को ड्राइव किया, सी लिमिट ऑफ पर, रन से इस बीच नहीं मिलेंगे और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लॉफ्टेड, दिस टाइम फर्मली स्ट्राइक इनटू द गैप एज वेल। गेंद इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त बल्लेबाज इरफान के बल्ले से और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को स्टीयर किया इस वक्त, लेकिन स्लिप कॉर्नर पर फील्डर मौजूद, जहां तक सवाल है शॉर्ट थर्ड मैन पर रन्स इस वक्त नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 19 रनों पर, 19 ऑन द बोर्ड। द स्कोर स्टे स्लोवर प्रोग्रेसिंग हियर। लास्ट बॉल इन दिस ओवर और गेंदबाज प्रताप की गेंद ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर, स्वीपर मौजूद, जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड अ सिंगल टू एंड द ओवर। 6 in fact it's a 5 overs completed, 6 overs completed in fact, and now the score is 20 for the loss of 6 wickets and now just 2 overs to go in the innings। 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं बचे हुए 2 ओवर में एमएससी के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। 7th over starts। गितेश ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। नेक्स्ट वन जस्ट वॉक इट अवे डाउन टू शॉर्ट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, 22 नाउ। This time just gone for a mighty heave, not succeeded और गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर ओवर प्रगति पर गेंदबाज गितेश का, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त कवर पॉइंट पर, नॉट फॉर अ रन। इन फैक्ट द स्कोर बोस्ट इज 22 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स नाउ और फिर से एक बार ये गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, सिंगल रन बाई के रूप में, 23 नाउ। रन्स इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए चाहिए इस वक्त चौके और छक्के उनके रन की गति को बढ़ाने के लिए एमएससी के। यह गेंद ड्राइव किया लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद शॉर्ट कवर पर, किरण के हाथों में गेंद पहुंची और किरण ने गेंद को फील्ड करके लौटा दिया गेंद को गेंदबाज के हाथों में। गितेश ये गेंद ड्राइव किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, एक रन मिलेगा, सिंगल इज गॉट विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 24 एंड 7th ओवर has been came to an end. 7 gone, 24 on the board, 6 wickets lost, and now just a last over remaining in overall calculation in their innings. And just talking about the next match, one more good match is now coming up. NM Mangalore will take over Nazma Moodbidri in the next match. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. NM Mangalore ಹಾಗೂ Nazma Moodbidri ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पहली गेंद ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ पर, एक रन के लिए, 25। इस बार गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट
26. Just 4 balls left in their innings. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, लेकिन डीप कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 27. 3 balls left in MSC's innings. In fact, इस वक्त रिटायर्ड होकर इस वक्त पवेलियन की ओर लौट चुके हैं, ऐसा कहना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट इस वक्त करते हुए दोनों नए बल्लेबाज इनफैक्ट. और ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಫೀಸ್ ತೋಡಾರ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸಿಂ ಎಂಎಸ್ಸಿ ತಂಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ. और कासिम के लिए एक और अनाउंसमेंट किया गया है. अगर वो छक्का लगा दे तो 2,000 रुपये का नगद पुरस्कार ग्रीनलैंड बेद्रा इनकी ओर से दिया जाएगा. 2,000 रुपीज़ कैश प्राइज डिक्लेयर्ड फॉर कासिम इफ ही हिट अ 6 from he'll get 2,000 rupees from Greenland Bedra. तो इस वक्त डॉट गेंद खेल चुके हैं और 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में. और अगली गेंद, ये गेंद कासिम के लिए जो कि इस श्रृंखला के प्रमुख रुवारी हैं, और जहाँ तक रनों का सवाल नहीं मिलेगा, अंतिम अवकाश बल्लेबाज कासिम के सामने. ये गेंद इस बार गेंद को खेला, गेंद पहुंची शॉट पॉइंट पर. प्रताप गेंद को इस वक्त शाइन करते हुए, लेकिन उनका निशाना चुका, डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका. 1 run added and a wicket lost. So the innings is up and 28 the score scored by MSC Moodbidri A in the stipulated 8 overs for losing 7 wickets. 8 wickets in fact they lost. They lost 8 wickets, scored 28 runs. And the target for Sneha Malamar is 29 in 8 overs. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं स्नेहा मालामार के बल्लेबाज इस 29 रनों के 29 के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत होगी एक चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर स्नेहा मालामार की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक करना. इट्स टाइम फॉर ब्रेक एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे. थैंक यू. Welcome back for the innings of Sneha Malamar. And before we are going to start the innings of Sneha Malamar, in a LED screen, you are watching late Santosh Shetty, one of the sponsor of Sneha Malamar. He is not with us, but his sweet memories always with the cricket lovers and Sneha Malamar. The way that he is supported for the cricket, the way that he is supported for Sneha Malamar, being the one of the sponsor, being the one of the big supporter of Sneha Malamar, and may his soul rest in peace. And after giving a tribute to Santosh Shetty, straight away coming to the innings of Sneha Malamar. Opening batters are walks towards the middle, and Yatin along with him, the batter in a non-striker's end.
Here is a more cricketing action which is coming up in next coming days. Team NFC Kotakani and 7 teams Underarm cricket tournament will be played day and night cricket tournament in the name of KPL 2025 season 10. They played on 11/5/2025 Sunday, the morning from 8:30 at Pade Cricket Stadium, Kotakani. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ NFC ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ NFI ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಲಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ NFC ವತಿಯಿಂದ ಸಜಿಪ್ಪಾಪಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಟೀಮ್ NFC ಕೋಟಕನಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ. So meantime we are back in the game. Yatin will go into start here. 29 is the target set by the team MSC Moodbidri for Sneh Malamar. Here's the first ball. The leg spinner is in action. And Yatin drives the ball. Lovely piece of fielding. And at cow point region, the one-handed fielding there from cow point fielder. No run scored. Arish bowling. Arish balls, and this time ball is in the air, but no one there at mid-off. Of course, there is a fielder at mid-off, but mid-off fielder didn't move at all. The mid-on fielder is absolutely running towards the catch, towards the mid-off region, and first run came from the batter Yatin. Guru the striker. Left-hand batter is on strike. Aris bowling right arm. This time no ball called by umpire, but the batter has driven that one down to deep extra cover boundary for 4 runs. With his offered ball pitched outside the line of the pitch. The big turner of the ball. But unfortunately, as per the present rules and regulation of the cricket is concerned, you cannot pitch the ball outside the line of the pitch. No ball signaled. 5 runs added. 6 on the board. Guru off the mark with the boundary. Right arm over the wicket bounce. This time better delivery, better line. Guru wanted to get that one in the onside region, but didn't got enough bat onto that. Just a single. With the addition of that single scoop, but Namuzan to so 8 on the board, 8 for the loss of 1 wicket. This time switch it is comes into play and played it exquisite. Stroke down to deep pocket point. 1 bounce into the fence for 4 runs. So with that boundary scope and moves on to 12 on the board. 12 on the board without loss of any wicket, chasing 29 to win this match. Another 17 more runs required for the victory. Again, this time lovely delivery. So first over completed after completion of first over, chasing 29 to win this match. Sneh Malamar are 17. Sorry, little correction. 12 on the board. 17 more runs required for the victory. In that legend player, we are having one young player. Irfan in last 3 days is absolutely looking after the officials in commentary box.
especially looking towards our, of course, what you call the food department. Did a great job. Thank you very much, Irfan. I will now try to ball one, come back over for the team MSC Moodbidri. Wait and see how Irfan will go into ball this time. Deep square leg, the fielder in the deep. Only on deep long on is that. Short mid wicket, short mid on, mid off, and short extra cover. Lovely shot. No need to run for that. Played it in the gap towards the deep extra cover boundary for 4 runs. Yatin, one of the classical batter. Cannot give the width for the batter like Yatin. They played it quite beautifully down to extra cover boundary for 4 runs. 16 on the board. Irfan. Now after that boundary, Irfan saying that I want one fielder in the deep at that same region. And the mid-wicket fielder have to come inside the ring if you wanted that fielder in the deep. Yatin this time, what a shot that one. Absolutely nailed that. He nailed that one into the mid-wicket for a 6. Even though legends, the masters thought that bringing a young man in this situation, he can control the situation. But he made it too much worse here. By the 2 deliveries, 10 runs conceded. Yatin the batter will go into face. Good comeback, young man. This is what he required. Of course, this is all the part of cricket. Batman can hit you for the good balls. But you need to come back. Again, played it down to mid-wicket region. This time protection in the deep. One day single with the addition of the single scope and Namuza into 23. 6 required for the victory. One big shot is good enough for them to win this match. Guru will go into take the strike. Irfan. Down the leg side, but well within the reach of the batter. No, it's out of the reach of the batter. The bowler came right in front of umpire. And the bowler himself said that that is a wide ball. This is a very good sportsman spirit shown there by Irfan. 5 to get. Balled him around the legs. The first wicket here for the MSC Legends. What a delivery there from Irfan. Absolutely any bowler, the medium pass bowler, they definitely loves to uproot the stumps. Excellent delivery there from Irfan. He's absolutely cartwheeled the stump. Incoming delivery for the left-handed batter. It was around the legs of the batter. And umpire Harish Padil making the stump hitting the stumps. You can see his hands. And now he's placing the bails. This is what you're watching in that umpire's camera. Nazba Moodbidri takes on NM Killers Mangalore in the next match. Again played it just wide of that cow point fielder. Picked up a single. All round of applause coming from the crowd for that good fielding. The fielder Salam Senior down at cow point region fields the ball. The time for DJ. 25 on the board.
Thank you, DJ. Ashpak is one more hard-working the member of MSC Trophy in this particular tournament is in action. Oh, lovely delivery, excellent delivery from Ashpak. If you see that line and land, it's not so easy. Just straight away you're bowling your first delivery right on the money, right on the target. Great start there from Ashpak. This time played it straight to the answer field. Oh, one-handed screamer, what a catch! The catch of the tournament which is taken by the legend of MSC. Salam Junior. Salam, just see that catch here. It's nevertheless, even youngster definitely getting some inspiration from this catch, isn't it? What a catch. Single-handed screamer. Kiran departs. Need to appreciate his level of confidence, way that he is committed to catch. Outstanding. Timing of extending his right hand to that ball has been absolutely fantastic. Replacing Kiran, his one more batter came into middle. Mani, the batter, is getting some promotion for the batters of Sneha Malamar. From bottom to upwards, the batting order. Of course, only the opening batters are regular opener, but now some bowlers, they got opportunity to bat here for Sneha Malamar. Ball him, clean him up. What a fantastic delivery. Ashpak got 2 wickets in this over. Can you believe this? Picking up the wicket of the technically very sound player, Yateen. Just understand the kind of delivery ball by Ashpak. Absolutely beautiful off cutter. Just have a look at it in the replay. Oh, beautiful. Absolutely perfect one. The third wicket back in the pavilion. The new batter in is Kiran coming to the middle. Played it nicely down to long on region for a single. With the addition of that single scope and Amuzan to 27, just 2 runs away from the victory. Appeal had given him. Whoa, one more wicket. 3 wicket for Ashpak. What a tournament he's having from the ball. Age is just a number, isn't it? Age is just a number. If you have got enough courage, you can perform as well. This has been outstanding performance here from the bowler Ashpak. Picked up 3 wickets of the formidable team Sneha Malamar. One of the best bowling figure for Ashpak. 2 for 3. Well, the MSC Trophy 2025 is a special for Ashpak, isn't it? The way that he bowled in that previous over, it is outstanding. This time catch it is a call and the young man taken the catch. Irfan. What we are witnessing here from the MSC Moodbidri. They're not really given up this match. Need to appreciate their effort. Now Salam picked up a wicket. The scoreboard now 27 for 5.
Thank you, DJ. And new batter in is Rajesh. Rajesh, the brother of Gitesh. Right arm around the wicket. Salam. I wanted to go the reverse sweep. Missed it completely. Even just a couple of runs required for the victory. Stay Malamar. They already lost 5 wickets. Drivan, lack of placement. And again, Ashpak, the man down at short mid wicket, fields the ball. Return the ball, no chance of any run. Salam again. Lofted, but this time in the vacant area. And I think it's good enough for them to win the match. Good stop by the fielder. The 4 runs which is signal and it is good enough for them to win the match. The match is over. The match is over. The victory for the team Sneha Malamar. Congratulations Sneha Malamar, but need to congratulate MSC Moodbidri with that. Of course, more than the batting, their bowling is absolutely fantastic. Even the fielding has been outstanding. And thank you very much, MSC Moodbidri, for your lovely performance in this MS Trophy 2025. Absolutely, you are on the heart of all cricket lovers here in this beautiful Swaraj Maidan. The spectators, they are definitely going to remember your performance in this MSC Trophy. And congratulations for Sneha Malamar for reaching to the next round. We are going to the next match. The team Nazma Moodbidri takes on NM Cricketers Mangalore. For that match, for the first innings, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. So man of the match of this match award goes to Pratap, who bowled brilliantly, conceded just 5 runs in his 2 overs and captured 2 wickets, and because of that fantastic bowling performance,
he edged man of the match. I request Pratap, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So that's it for this third match, and now the fourth match is now going to start. Nazma Moodbidri will take over NM Mangalore in the next match, and that match starts within just a short while. ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿರವರು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಗ್ಔಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೆಗಿಬಾರದು. ನಜ್ಮಾ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕುಳಿತವರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಆಧಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗಿನ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜ್ಮಾ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂರ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟರ್ಪೋಡ್ಸ್ ಖಾನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನಜ್ಮಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಜ್ಮಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ನಸ್ಮಾ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ನಸ್ಮಾ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. Right, one more good match is now going to start. NM Mangalore versus नस्मा मूडबिद्री और NM मैंगलोर के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. फलस्वरूप उनके फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए इंतजार है इस वक्त मैच की पहली गेंद का. वे जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त नस्मा मूडबिद्री के लिए मौजूद. ताजुद्दीन और दूसरे छोर पर बल्लेबाज का नाम पता चलना बाकी है. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मुजीब. हुसैन दूसरे छोर पर मौजूद. तो ताजुद्दीन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा. और आमतौर पर ताजुद्दीन KFC कोडिकल का प्रतिनिधित्व किया करते हैं. यहाँ पर अपने घरेलू टीम होम टीम नस्मा मूडबिद्री की ओर से इस वक्त खेलते हुए और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा मुजीब. दाहिने हाथों द विकेट. द फर्स्ट बॉल इज नॉट कमिंग अप और साथ ही ऑफ स्टंप प्लेइंग द अपील फॉर लेग बिफोर दिस टाइम. लेकिन अंतिम क्षण में जोरदार अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं. शायद गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी और पहली गेंद पर इस वक्त बल्लेबाज ताजुद्दीन यहाँ पर बच चुके हैं. बेहतर गेंद थी मुजीब की और इस वक्त बातचीत चलती हुई गेंदबाज और अंपायर्स के बीच में. और एक बार फिर से गेंदबाज मुजीब अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए. सिर्फ दो मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो मुजीब इस वक्त डीप बैकवर्ड स्कोर लेके आना पड़ेगा. इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद. और गेंदबाज इस बीच मुजीब अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार ताजुद्दीन के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद को इस वक्त छोड़ दिया. और गेंद इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है. यहाँ पर नस्मा मूडबिद्री के लिए एक रन बिना किसी नुकसान के. मुजीब अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ताजुद्दीन के लिए. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा. नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. स्कोर पर जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा हो चुका है. और 1 रन के इजाफे के साथ ताजुद्दीन का खाता खुल चुका है. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. 2 ऑन द बोर्ड टू लूज एन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और सामना करते हुए इस वक्त हुसैन. और इस बीच मुजीब तैयार. डीप थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे इस वक्त उन्हें वहीं पर तैनात किया जा रहा है. एक फील्डर डीप फाइन लेग पर मौजूद. थोड़ा सा स्क्वायर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. और मुजीब दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार ओह फैंटास्टिक डिलीवरी मच स्ट्रेटर लाइन. द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड. गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूंकि परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी. स्लोवर डिलीवरी और आखिरकार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 2 रनों पर. 2 ऑन द बोर्ड. टू लूज एनी विकेट. तो इस वक्त रिव्यू लिया गया है.
तो रिव्यू इस वक्त लिया गया है, शायद गेंदबाज ने साइड बॉक्स छुआ था या नहीं ये देखने के लिए। तो जहां तक सवाल है, क्रीज के कोने से ये गेंद इस वक्त फेंकी गई थी। और जहां तक का सवाल है इस वक्त देखते हैं तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। मैच नंबर 4 आज का शुरू हो चुका है और अगला मैच एक और बेहतर मैच यहाँ पर खेला जाएगा। यंग फ्रेंड्स उर्वा और टोरपेडोस काना के बीच वन मोर फैंटास्टिक मैच, बिग मैच इज नाउ कमिंग अप live it exclusively right after this match. No ball is the call from the third umpire and a single run added and also a free hit delivery for the batsman। और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर और साइड बॉक्स को इस वक्त टच करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो मुजीब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हकीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के नियमानुसार। और गेंदबाज इस बीच मुजीब फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा पीछे इस वक्त भेजा जा रहा है डीप स्क्वायर लेग पर। और लगॉन पर एक फील्डर मौजूद कुछ हद तक स्ट्राइट एंगल पर। और गेंदबाज इस वक्त मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार टॉप एज, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर कैच को लपक चुके हैं। और देखना है कि गेंद बल्ले से लग कर आई है या पैर से, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट गेंद थी शायद, तो इस वजह से बल्लेबाज बच चुके हैं। और टॉप एज पर गेंद टकराई थी, भाग्य इस वक्त बल्लेबाज का साथ देता हुआ और एक रन 4 ऑन द बोर्ड या 2 रन विकेट। तो जहां तक सवाल है ओवर का, तो पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और मुजीब एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, इस गॉड इनसाइड एज ऑन दैट, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, गेंद को फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा हम यहाँ पर इस स्वराज्य मैदान का इस वक्त देख रहे हैं। फ्लड लाइट की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। अंडर फ्लड लाइट्स आज का चौथे दिन का चौथा मैच इस वक्त खेला जाता हुआ। और गेंदबाज मुजीब की गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची। इस वक्त मुजीब ने गेंद को फील्ड कर लिया, फॉलो थ्रू में अपील भी की लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, तो कुछ क्षति नहीं। और ओवर की समाप्ति, बेहतर ओवर मुजीब का समाप्त हो चुका। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर Nazma Moodbidri after losing the toss and put to bat by Mangalore. They are 5 without loss after the completion of first over. तो जैसा कि हम पहले भी फरमा चुके हैं, अगला मैच एक और बिग मैच आपके सामने आने वाला है यंग फ्रेंड्स और टोरपेडोस काना के बीच में। और निश्चित रूप से दर्शकों से इस वक्त मैदान भर चुका है जम पैक स्टेडियम। और मंगलूर के टॉप सीडेड टीमों के बीच इस वक्त मैचेस खेले जाते हुए। और इस वक्त मूडबिद्रे और मंगलूर की टीम के बीच इस वक्त मुकाबला जारी है, नस्मा मूडबिद्रे और एनएम मंगलूर के बीच। गेंदबाजी शुरू करते हुए और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ नस्मा मूडबिद्रे की पारी में अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए इस बार काफ़ी ज़ोरदार शोर इस वक्त सुनाई दी दर्शकों के बीच से। तो जहाँ तक सवाल है और गेंदबाजी का, तो इस वक्त आतिफ गेंदबाजी शुरू करते हुए, ताजुद्दीन सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए आतिफ 2 फील्डर केवल 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, वाइड स्लॉन्ग ऑन और वाइड स्लॉन्ग ऑफ। और पहली गेंद लेकर तैयार आतिफ, दाहिने हाथ के बल्लेबाज ताजुद्दीन इस वक्त सामना करते हुए आतिफ की गेंदों का। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद आतिफ अपनी पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, यह गेंद इस वक्त उछालना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची, इस वक्त अपील जारी है। और आखिरकार देखना यह है कि अंपायर इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए रिव्यू यहाँ पर दे चुके। तो यहाँ पर गेंद बल्ले पर टकराने के बाद ज़मीन पर लैंड हुई थी या फिर बल्लेबाज के शरीर के किसी अंग से लगकर
गेंदबाज के हाथों में पहुंच जाती है, देखने वाली बात है। तो रिप्ले इस वक्त दिखाया जा रहा है और तृतीय अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर रख करते हुए, और देखते हैं आखिरकार क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। ताजुद्दीन ने एक लंबा प्रहार लगाना चाहा था इस गेंद पर, लेकिन नाकामयाब रहे और गेंद इस वक्त गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। मैच नंबर 4 इस चौथे दिन का एमएससी ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत खेला जाता हुआ। No doubt is the call and the batsman survived. शायद गेंद पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंदबाज के हाथों में पहुंची थी, बल्लेबाज के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज आतिफ इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ताजुद्दीन इस वक्त सामना करते हुए, 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत, और जो मिड ऑफ पर जो फील्डर थे उन्हें इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर तैनात किया जा रहा है एक्स्ट्रा कवर पर बल्लेबाज ताजुद्दीन के लिए। और ताजुद्दीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार आतिफ की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज ताजुद्दीन के लिए अगली गेंद। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर, 6 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और इस बीच आतिफ दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, हकीम जो कि सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद धीमी गेंद थी, स्विंग किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। फैंटास्टिकली स्वेप्ट एट द लास्ट मोमेंट। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद के धीमेपन को, स्लोनेस को पहले पहचान लिया था और गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त स्वीप कर दिया फ्रंट फुट आगे जाते हुए। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त स्वीप किया था, जस्ट ब्रेक दैट वन विद अ स्लॉग स्वीप शॉट एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल इन बिटवीन डीप मिड विकेट एंड अ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। फैंटास्टिक स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ हकीम, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर, और इस बीच आतिफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हकीम जो के सामना करते हुए, ये गेंद इस वक्त गुड डिलीवरी दिस टाइम, अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर एंड दैट इज द फर्स्ट विकेट फॉर नजमा मूडबिद्री। एक बार फिर से परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद फेंकी थी, लेकिन इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद उनके पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट गिवन एंड दैट इज द विकेट नंबर 1। हकीम डिपार्ट्स एंड नाउ नजमा मूडबिद्री आर 10 for 1। तो इस वक्त पहला विकेट गिरने के बाद नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए तो इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और वो सामना करने के लिए तैयार इस वक्त आतिफ की गेंदों का। और जहां तक का सवाल है, हुसैन नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और ताजुद्दीन जो दूसरे छोड़ के बल्लेबाज है इस वक्त उन्हें कुछ समझाया कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त इन हालातों में उन्हें अपनानी चाहिए। और इस बीच आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार हुसैन के लिए गेंद को स्वीप करना चाहा इस वक्त, लेकिन ठीक तरह से गेंद को मोड़ नहीं पाए और विकेट कीपर ने आगे गिरा कर गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 10 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज फिर से एक बार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। आतिफ दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया स्ट्रेट इनटू द आउट, ही टेकन हिज सेकंड अटेम्प्ट। एक्स्ट्रा कवर पर बेहतर तरीके से इस कैच को लपक लिया गया था फील्डर द्वारा। हालांकि पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी जरूर रहा, लेकिन दूसरे प्रयत्न में अपने हाथों से गेंद को उन्होंने दबोच लिया और इसी के साथ यह विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। हुसैन की पारी समाप्त, is out for duck, second wicket gone, and for the first time in this match, Nazma Moodorbidri are now looking in trouble a little bit after being losing 2 consecutive wickets. Now it's 10 for the loss of 2 wickets.
तो एरिस जो कि नज़मा मूडबिद्री के बेहतर बल्लेबाजों में से एक जाने जाते हैं, इस वक्त उनका आगमन हो चुका है और 2 विकेटें यहाँ पर 3 गेंदों में के अंतराल में प्राप्त करने के बाद इस वक्त इन कुछ हद तक अपनी पकड़ इस मैच में मजबूत करता हुआ तो बाउंस बैक करने का मौका ज़रूर है नज़मा मूडबिद्री के बल्लेबाजों को। एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निश्चित रूप से नज़मा मूडबिद्री को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर कर सकती है। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 10 on the board, 1 wicket lost, and now third over starts from the far end. हमसे दूर वाले छोर से नया ओवर प्रारंभ करते हुए और गेंदबाज जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर जो कि इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। शॉर्ट फन लेग मिड विकेट मिड ऑफ और पॉइंट और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बीच यह गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन पर। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर। फैजल गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं और इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ताजुद्दीन माफ कीजिए इस वक्त सामना करते हुए दूसरे बल्लेबाज ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर। एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ नज़मा मूडबिद्री और इस बीच फैजल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। आरिस के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची बैकवर्ड थर्ड मैन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज ताजुद्दीन और आरिस क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए। फैजल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ कटर लेग कटर गेंद थी इस वक्त। गेंद को इस वक्त छोड़ दिया प्रश्नार्थक तरीके से अंपायर की ओर जरूर देखा लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं है। और इस बीच रिव्यू लिया गया है वाइड के लिए और एक बार फिर से तीसरे अंपायर के लिए काम यहाँ पर आन पड़ा है और देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। तो जैसा कि इस श्रृंखला का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट, व्हाट अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट व्हिच इज organized by Moodbidri Sports Club. The celebration of their 35th year, they are organizing this fantastic cricket tournament in the name of MSC Trophy 2025. It's a fair delivery and no run added to their total. और स्कोर इस वक्त रुक चुका 13 रनों पर। 13 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फैजल दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप से फिर से बाहर की ओर गेंद फेंकी और शायद गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के आड़े इस वक्त आ गए थे तो अंपायर एक बार फिर से तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त इस जिम्मेदारी को सौंप रहे हैं और देखते हैं तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। निश्चित रूप से गेंदबाज फैजल अपने सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद का ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गुजरी थी लेकिन अंतिम अक्षर में देखना यह है कि गेंद कुछ ज़्यादा बाहर गुजरी थी या नहीं। तो इस वक्त तीसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर नज़मा मूडबिद्री, हालांकि 2 विकेट 3 गेंदों के अंतराल में गिर जाने के बाद दबाव कुछ हद तक उनके बल्लेबाजों के ऊपर नजर आता हुआ और दोनों बल्लेबाज ताजुद्दीन और आरिस इस वक्त पारी के भागदौड़ को संभाले हुए अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए। रात के 1 इस वक्त बचते हुए और निश्चित रूप से देर रात इस वक्त हो चुकी है और फ्लड लाइट्स टावर्स के जो बत्तियां हैं लाइट्स हैं इस वक्त घने अंधेरे को चीरती हुई मैदान पर गिरती हुई और इस बीच सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। इट्स अ फेयर डिलीवरी और तो फैजल गेंदबाज जिनके लिए 500 रुपये का नकद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया गया है और इस बीच ये गेंद स्वीप कर दिया गेंद को इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड
Runs are still coming in singles now. और कुल मिलाकर फैजल इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त अच्छी गेंद थी, अंदर की रात हुई, जगह नहीं बना पाए, बैक टू द बॉल की दिशा में पहुंचे। एक और सफल ओवर अगर एनएम क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 overs completed, 14 on the board, 2 wickets fallen for नस्मा मूडबिद्रे। दे आर प्रोग्रेसिंग स्लोली और निश्चित रूप से जहां तक कम बैक करने का सवाल है तो बचे हुए 5 ओवर में कम से कम 35 से 40 रन यहां पर बटोरने के नस्मा मूडबिद्रे को अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो इस वक्त एरिस जो बल्लेबाज मौजूद है उनके लिए भी एक इनाम घोषित किया गया है। हर चौके के लिए 500 रुपए और हर छक्के के लिए 1000 रुपए का नगद पुरस्कार बेद्रा कैफे इनकी ओर से घोषित किया गया है। 500 rupees cash prize for a boundary and 1000 rupees for 6 declared by Bedra Cafe for the batsman Aris। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त देखते हैं एरिस इसका फायदा यहाँ पर उठा पाते हैं या नहीं। ताजुद्दीन सामना करने के लिए तैयार और लतीफ अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए 4 खिलाड़ी पेशकश के दायरे के अंदर मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज आतिफ गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज ताजुद्दीन के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और कोई दिक्कत ही उन्हें नहीं हुई 1 रन प्राप्त करने में और इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है और आतिफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए एरिस के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद एरिस के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई। इस वक्त अपील जरूर जारी है लेकिन शायद गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी तो इस वजह से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। तो आतिफ आश्चर्यचकित रह गए लेकिन इस वक्त खतरा जो कि बल्लेबाज के लिए टल चुका है। कुछ हद तक गेंद बाहर की ओर निकलती हुई लेग स्टंप से और स्कोर जहां तक रुक चुका है इस वक्त 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज आतिफ दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लेकिन फील्डर मौजूद, स्वीपर आउट देयर, इट्स गॉट जस्ट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 for the loss of 2 wickets. Slower progressing here now for in Mangalore and this is the 4th over of their innings is now progressing here। और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है ताजुद्दीन सामना करते हुए आतिफ की गेंदों का। ये गेंद इस बार धीमी कटर गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया और जब तक स्वयं गेंदबाज अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन तेजी के साथ चुराने का। सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त अपनाते हुए और ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त जान चुके हैं कि एक साझेदारी एक पार्टनरशिप उन्हें निभानी है। इस वक्त पहले धीमी गति से बाद में अगर पहले धीमी गति से साझेदारी निभाते तो बाद में तेजी ला सकते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ हद तक धीमी गति की बल्लेबाजी अपनाते हुए इस बीच गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, विकेट कीपर ने अपने पीछे कर जाकर फील्ड कर लिया, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और इस बीच आतिफ तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बीच एरिस के लिए रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन किया जरूर लेकिन सिर्फ 1 मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा डीप थर्ड मैन पर, फील्डर मौजूद। सिंगल रन एडेड and with that single run the scoreboard moving up to 18 now। One more good over in NM Mangalore's point of view came to an end। 4 runs came from Atif's over and a good spell came to an end from Atif। 4 overs gone, 18 on the board, exactly 4.5 runs per over। The present run rate is now progressing here। They lost their 2 wicket, still 8 wicket they got kept intact। और देखते हैं इन बच्चे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज नस्मा मूडबिद्री के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much. The first ball of the over number 5, and like by call by umpire. Nazma Moodbidri is still searching for the right track here. 8-19 for the loss of 2 wicket and, against NM Cricketers Mangalore. And partnership slowly building up here. Right arm over the wicket. Faisal bowls outside the run of off stump too far. So that white call by umpire. Faisal, the previous over also. The 1-2 white balls he bowled in that previous over. 29 for the loss of 2 wicket. This time again outside the leg stump, missed it completely by the batter. No run score. So third umpire has been given for the stump out. And by the good work actually done by Asif behind the wicket. And sometime what happens, difficult for the third umpire to see some, the players came right into the angles of the square cameras. That time it might be. So not out is a call from third umpire. The batter is safe. But excellent work there from wicketkeeper behind the stump, Asif. Just in a blink of eyes, he completed the job. Tasuddin will going to take the strike. Faisal balls, nice looking drive towards extra cover. Only for the single, with the addition of that single, score moves on to 21 for the loss of 2 wicket. Over number 5 in progress. So again, swept the ball very nicely. This time he finds a gap. But equally well fielded by the fielder in the deep. Moving to his left, Tawfiq, the fielder in the deep, fine leg region. No need to cover the ground a lot to stop that boundary. But good work in the last moment. So a lot of encouragement for the batters of Nazma Moodbidri. Meantime, one more over which is completed. 5 overs completed. After completion of 5 overs, searching for the right track. It's 23 for the loss of 2 wicket. Nazma Moodbidri.
Thank you, DJ. The new face which is came into attack for NM Cricketers Bangalore, jersey number 32. Anvit is a young talent bowler for the side of NM Cricketers Bangalore, brought into attack to bowl. The first ball starts with the loosener, which is going down the leg side. Wide call by umpire, 1+1, 2 extra. The 2 wides, which is added to total with the addition of that extra run score, but now moves on to 25 on the board. So far in this innings of Nazma Moodbidri, there will be a no boundary, there will be a no 6. But we can see that the batters are rotating the strike with a single and couple. Anvit again. This time 2 for across the line, just to try to swing that one. Got a little bit bat onto that Harris, and one more single. 26 on the board for the loss of 2 wicket. MSC Trophy 2025. The Moodbidri Sports Club proudly presenting this cricket tournament in this Faraj Maidan. Again, lovely delivery indeed, but Tazuddin just tried to play across the line. Luckily, in the last moment, he got a bat onto that. Played it down to square leg region. Mujib, the fielder in the deep, fields the ball, return the ball. Ample time for the batter to complete the single. 27 for the loss of 2 wicket. The very slow cricket is in progress, but this time Switchit played it quite beautifully. The ball went like a razor bullet. Harris, you know exactly, waiting is over. Now I want to deal with some boundaries here. The 500 rupees straight away into his pocket as well with that boundary. Bedra Cafe is announced that 500 rupees. Hanif. This time, he cleared the man. He cleared the man at deep square leg. Now have a look at the crowd here. Absolutely cheering that stroke which just came from the bat of Harris. What a fantastic stroke came from the bat of Harris. He's absolutely on fire. 1,000 rupees again into his pocket. 500 plus 1,000. 500 for the boundary, 1,000 for the 6. What an outstanding hit there from Harris. Absolutely perfect improvisation. Have a look at how far he's shuffled across. The ball, again, the 2-stroke, you can see that. The 2-stroke is just like a stroke from the cannon. No reaction for the fielder. Even the fielder in the deep. Now, hat-trick 6 will going to be a 5,000. But here is a great one there from young man. Anvit quickly realized that not to ball to the strength of the batter. Dot ball, 37 for the loss of 2 wicket. Again, once looking for the one more improvising cricketing stroke here into the onside region. But wicketkeeper fails to collect the ball. By call by umpire. This is turning out a great over. Nazma Moodbidri, after that slow start, they're taking this over for the acceleration. Now they're looking so good. 6 overs completed. 38 for the loss of 2 wicket. Thank you, DJ. The high voltage match. ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶರೀಫ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. Mujib will going to bowl from the far end. 7th over of the innings. This time chance of caught in bowled and chance of run out as well, but Mujib missed it completely from and
that throw which is came from him into the non-strikers and both the batters completed single. 39 for the loss of 2 wicket. What an outstanding recovery there from Nazma. The partnership what we are talking about between these two, the way they build the innings, it's absolutely fantastic. Right arm over wicket balls across the line, played it down to mid wicket region. They're going for the single chance of run out in the non-strikers and he's in trouble. Tazuddin, the batter, is back in the pavilion in the negation. The partnership what we are talking about is slowly building up and looking low, so dangerous for the NM cricketers Mangalore. Now partnership which is broken through run out. So wicket number 3 which is back in the pavilion after that great partnership between Aris and Tazuddin, which is comes to an end with a disappointment manner, that is a run out. New batter in is Sukesh replacing Tazuddin. One more very good striker of the ball. Got a lot of experience behind him. Sukesh represented for some prestigious tournament. Oh, lovely delivery. Fantastic one there from Mujib. Mujib, express bowler. Just sometime he can surprise any batter with this pace. Lovely delivery coming into the batter. Even Harris is a settled batter in the middle, but fails to read the turn and pace of the delivery. Bowled him, clean him up. You can't do the mistake. You can't do the mistake by doing that against the pace of Mujib. Have a look at that. This is not easy for the underarm bowlers to uproot the stumps like that. That shows that how much pace he has got in that delivery. Have a look at that one in replay. What we are seeing is the stump which is cartwheeled with the pace of the bowler of Mujib. Thank you, DJ Vijay is a new batter in. 2 wickets fallen in quick time. A subtle batter is a back in the pavilion for Nazma Moodbidri. It's not a good news for the team. After that partnership is built so well. Full toss, but low full toss. The batter Vijay just wanted to get the ball on the onside region. Tried to sweep the ball. But the full toss, he is not expecting a full toss from Mujib. He thought it might be the ball is coming into him along the carpet, but Mujib bowled that low full toss again from the far end. Oh, lovely delivery, Mujib. What outstanding bowling here. The kind of over which is badly required for NM cricket at Mangalore after their very expensive over the previous one. The Mujib again, they came into attack and picked up 2 subtle batters, and one in the form of run out, but one in the form of bowled out. It's 39 for the loss of 4 wicket after completion of over number 7. Nazma Moodbidri. Thank you, DJ. High voltage match will going to commence after this match. Torpedoes Khana versus Young Friends Urva. All we can see that exciting eyes around the ground. Just wanted to witness that the big match
will going to commence after this. Now Nazma, Moodbidri also, they're trying their level best against NM Cricketers Mangalore. But 1 over, they lost the momentum. The previous over, which is bowled by Mujib. Anvit bowls the batsman Sukesh. Played it down to deep mid-wicket region. High throw coming from the fielder. And both the batters complete a couple of runs. Excellent underneath the wicket. And even Sukesh knows that this is last over. He wanted to get some runs in this last over. 2 runs in first ball. 41 on the board. Asif quickly coming to towards Anvit. You know exactly what Sukesh can do. He is a good striker of the ball. And Anvit getting some advice from wicketkeeper Asif Adur to how to ball the remaining deliveries. Second time in this over. Away from us. Oh, he's under pressure. He's under pressure. 1+1 and going for the overthrow as well. The batters are going for the overthrow as well. This is turning out to be a one more productive over which is already started here. Umpire called for the review for the no ball. Whether it's going to be a no ball or a white ball, this they wanted to clarify. If it is a no ball, if it is a white ball, but runs which is remains the same. 1+2, 3 runs, but plus point for the batter is free hit. Even though this is not going to be a free hit, the batter definitely wanted to go for the big shot because it's the last over. So they wanted to hit the ball freely. They're not bothered about whether the ball is a free hit or not. It's a no ball call from third umpire. The free hit for Sukesh. Anvit. Now after Asif got some advice for him, now straight away Atif came to him. Need to give some kind of confidence for the bowlers. The new face, of course, the big game in front of huge crowd. Some kind of nervousness the bowlers are feeling. Thank you, Anvit, to continue. Now, looks like exceeds the time limits. They actually exceeds the time limits. One fielder coming to the ring. Right over the wicket bounce. Sukesh drives that one down to deep long on. This time they will going to get only single. Atif, the fielder in the deep long on. 45 for 4. Last 4 balls remaining. The batter is on strike. Vijit. Vijit will going to take the strike here. Anvit. Ball, lovely delivery, lovely delivery. This is a kind of line, this is a kind of length what the young man have to deliver. This is a perfect line and length when the batter is looking for the big shot. Perfect leg cutter and not a big face but a slower one, but just maintain that line and length. Just have a look at that one in the replay. Slower one, isn't it? That's what Atif is just asked him to ball like this. Don't try to ball the quicker one. Just maintain the line and length. And just stick with that line and length. It's 45 for the loss of 6 wicket. Thank you. Rohit is a new batter in. The last 3 balls remaining in the innings of Nazma
Moodbidri. They're playing with their home condition. A nice sweep shot, pretty down to deep fine leg region for a single. With the addition of their single score numbers on to 46 for loss of 5 wicket. Last 2 deliveries left in the innings. Anvit again. This time Sukesh wanted to go for the big shot, but he got a top edge. He got a top edge and a short mid-wicket fielder making no mistake at all. The one more wicket is back in the pavilion. So 45 for the loss of 6 wicket, and now Anvit is regaining his level of confidence. He regaining his level of confidence. Now he is on hat-trick. No, it's Thank you. In the main stage, we are having some chief guests. The dignitaries watching this the battle between Nazma versus NM Cricketers Mangalore. The couple of runs, very valuable couple of runs. So that's it. With that couple of runs, Nazma Moodbidri, they finished their 8 overs quota, scored a 48 runs by losing 6 wickets, and they set a target of 49 to win the match for NM Cricketers Mangalore. And at last, a respective total and from Nazma Moodbidri, they got some good bowling department as well, even though NM Cricketers Mangalore is going to be a favorite of winning this match. But cricket, you cannot underestimate. The cricket is game of glorious uncertainty. Nazma Moodbidri, if they bowl well, if they field well, they can fight with this total, because this is a cricket ground. Moodbidri is having a history of defending a small total. Even Nazma Moodbidri also, they got a history of upsetting the big teams as well. So it's going to be a good game in front of very good crowds here. The wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. And for the first 4 overs, I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So the target is 49 for Mangalore and their innings now going to start. And the first ball of their innings is now coming up. और आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त तौफीक और रशीद बाबा इस वक्त क्रीज पर मौजूद. और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का तो तौफीक सामना करने के लिए तैयार. और शरण गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए पहली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त तौफीक ने, लेकिन कॉन्फाइंस द गैप एज वेल और गेंद को मिड ऑन पर फील्ड कर लिया गया. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 49 रन निर्धारित 48 गेंदों में उन्हें बनाने हैं. दे हैव टू स्कोर 49 रन्स आउट ऑफ देयर 48 डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ 10 विकेट्स. दे हैव टू स्कोर द प्रेजेंट इक्वेशन शोज फॉर देम. और इस बीच शरण ये गेंद ड्राइव कर दिया. गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद. एक रन मिलेगा इस बीच और एक रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. जहां तक 48 रनों के अंदर रोक कर रखने का सवाल है इस वक्त एनएम के बल्लेबाजों को, तो इस वक्त नज़मा बुढ़ाबिद्रे के गेंदबाजों को चाहिए पहली ओवर से एक घातक गेंदबाजी, क्योंकि एनएम मैंगलोर के पास जो बलाढ्य बैटिंग लाइनअप है उस बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर अगर दबाव डालना है तो पहली ओवर से एक बेहतरीन गेंदबाजी उन्हें करनी होगी. उनके गेंदबाजों को लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और खासकर इस वाइड के डिपार्टमेंट पर उन्हें नियंत्रण प्राप्त करना होगा. तो 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर 3 ऑन द बोर्ड. और शरण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में इंपॉर्टेंट विकेट लॉस फॉर एनएम मैंगलोर. Taufik departs, just wanted to heave the ball at the last moment, not connected that one properly, got his stoppage and a simple catch went into the hands of the bowler. और बेहतर गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज ने की. शरण ने गेंद को लगभग मिडल ऑफ स्टंप पर रखा था और गेंद को इस वक्त उछालना चाहता. देखिए किस तरीके से हुआ, टॉपेज पर गेंद टकराए और बैक टू द बॉलर की दिशा में शरण ने फॉलो थ्रू में इस कैच को लपक लिया. पहला विकेट गिर चुका है. Taufik departs एनएम मैंगलोर are 3 for the loss of 1 wicket. And now just talking about the next match, one more big match is now coming up. Young Friends Urva will take over Torpedoes Kana in the next match. And because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. और जहाँ तक इस मैदान का सवाल है तो एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम, बिल्कुल दर्शकों से खचाखच ये मैदान इस वक्त भर चुका है. हालांकि रात के 1:30 इस वक्त बजते हुए, इट्स ऑलरेडी 1:30 एट मिडनाइट, लेकिन दर्शकों का जोश उत्साह अभी भी उसी हद में बरकरार रहा. और ये बात ये दर्शाता है कि मूडबिद्रे और आसपास के परिसर में अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है. तो यहाँ पर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एमएससी ट्रॉफी 2025 की शानदार प्रगति होती हुई, जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति की है मूडबिद्री स्पोर्ट्स क्लब में. नए बल्लेबाज इस वक्त आसिफ अड्डूर, एक और बेहतरीन बल्लेबाज. अड्डूर परिसर के बेहतरीन बल्लेबाज, कई सालों से एनएम मैंगलोर का प्रतिनिधित्व वो करते हुए और इस बीच सामना करने के लिए तैयार रहा. ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया आसिफ ने, लेकिन गेंद को पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर. 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. अब रशीद बाबा स्ट्राइक पर आ चुके हैं और देखना है कि रशीद बाबा पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इस वक्त गेंदबाज शरण किस तरीके की गेंदबाजी अपनाते हैं. रशीद बाबा आमतौर पर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस बीच शरण देखना है कि उनको किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं. बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रशीद बाबा के लिए, गेंद को उछाला, मौका जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर. 6 रनों के लिए. It's gone now for the fence for a 6. What a fantastic strike. This is an outstanding strike. और ऐसा कहना पड़ेगा रशीद बाबा खासकर पावर प्ले ओवर में जिस तरीके के स्ट्रोक खेलते हैं काबिल तारीफ है. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था. Just stand and delivered and he just got the distance at last. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और पहला छक्का इस वक्त रशीद बाबा के बल्ले से लग चुका है. और शरण फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज रशीद बाबा के लिए अगली गेंद. ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर. स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर. ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और गेंद को वहाँ पर कलेक्ट कर लिया शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने. 1 रन का इजाफा हो चुका है. स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 11 रनों पर. और
पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज शरण बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद रशीद बाबा के लिए एक बार फिर से उछाला है, लेकिन इस बार मौका लॉन्ग फील्डर के लिए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। इस बार रशीद बाबा ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, ही जस्ट हिट दैट वन टू हाई। और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की, तो एक रणतंत्र एक रणनीति इस वक्त गेंदबाज ने अपनाई और गेंद को मिडल ऑफ स्टंप पर रखते हुए गेंद को फेंका। अंतिम क्षण में गेंद को थोड़ी सी उछाल दी और इस उछाल पर चकमा खा गए रशीद बाबा। गेंद को उछाला जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में गेंद पहुंच चुकी है। तो 11 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। रशीद बाबा डिपार्ट्स and Mangalore are now 11-4-2 now at this situation. So both openers are now already back into the pavilion. और अब नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ, जो इस वक्त आसिफ अड्डूर का साथ निभाने के लिए क्रीज पर मौजूद और शाज नए बल्लेबाज है जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार, माफ कीजिए, सामना करने के लिए तैयार इस वक्त आसिफ अड्डूर। पहला ओवर पूर्ण हो चुका है। पहले ओवर के मुकम्मल के बाद स्कोर है इस वक्त 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 2 विकेट जरूर खोए इन मैंगलोर ने, लेकिन 11 रन पहले ओवर में जोड़ने में सफल। खासकर वो रशीद बाबा का छक्का जो उन्होंने लॉन्ग ऑन पर लगाया था, उनके टीम की रन की गति पर एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए कुछ हद तक सहकारी बन चुका है। और गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द फार एंड और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तो तैयार सामना करते हुए इस वक्त आसिफ अड्डूर। रोहित गेंदबाज और दूसरा पावर प्ले ओवर राउंड के पारी का शुरू होता हुआ और इस बीच गेंदबाज रोहित दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ अड्डूर के लिए पहली गेंद लेकर तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है इस वक्त, लेकिन इस वक्त शायद बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। हालांकि तीनों स्टंप्स इस वक्त अप्रूव कर दिए थे विकेट कीपर ने, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होने की वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। तो सही गेंद घोषित, वाइड का इशारा हो चुका है, तो रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और जहां तक का सवाल है, आज इस मैच के बाद 2 मैचेस और खेले जाएंगे। यंग फ्रेंड्स का मुकाबला होगा टोरपोडोस काना के साथ अगले मैच में और उसके बाद इस मैच की विजेता टीम भिड़ेगी स्नेहा मालेमार के साथ अगले मैच में। तो इस वक्त यहाँ पर रिव्यू दिखाया जा रहा है, शायद स्टंपोर्ड के लिए यहाँ पर रिव्यू लिया गया है और विकेट कीपर ने जब विकेट उखाड़े थे, तीनों स्टंप्स अप्रूव किए थे, तब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद था या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद को फील्ड करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद विकेट कीपर विकेट उखाड़ते हुए और बल्लेबाज देखना है कि क्रीज पर तब मौजूद थे या नहीं, उनका बैकफुट शायद लिफ्ट हो चुका था या नहीं। तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई श्रृंखला के मेन स्पॉन्सर्स, कुछ मेन स्पॉन्सर्स के नाम मैं इस वक्त लेना अहम ज़रूरी समझूंगा। श्रीमान मुश्ताक अहमद ट्रांस ओवरसीज, श्रीमान शादाब बशीर आईडी विजन, श्रीमान अब्दुल पुत्तिगे फॉर्चून प्रमोटर्स, श्रीमान अरशद मारनाड पॉपुलर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, श्रीमान सुरेश प्रभु टीएमसी मूडबिद्री और टीम 10 रेसिंग। नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। तो इन महानियों ने मुख्य स्पॉन्सर्स के रूप में इस श्रृंखला के लिए अपना योगदान दिया। एक बार फिर से इन सब का हम एमएससी संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। आसिफ अड्डूर एक बार फिर से सामना करते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज रोहित की गेंदों का फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त रोहित। यह गेंद आसिफ के लिए बेहतर गेंद थी, बेहतर ऑफ कटर गेंद, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद विकेट कीपर ने तेजी को जाकर पॉइंट पर फील्ड कर लिया, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला।
स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रनों पर. The scoreboard stays at 12 for the loss of 2 wicket. And the over number second in progress. रोहित आसिफ के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर. इस बीच नो बॉल का इशारा. लाइन के बाहर से गेंद इस वक्त गुजरी थी तो नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन. और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज आसिफ अड्डूर के लिए. और देखना यह कि इस फ्री हिट गेंद का आसिफ किस तरह फायदा उठाते हैं. और गेंदबाज रोहित इस वक्त फ्री हिट गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज आसिफ अड्डूर के लिए. और अपनी ओवर की अगली गेंद दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. आसिफ के लिए गेंद को उछाला. फ्री हिट गेंद है लेकिन उनके लिए कोई खतरा नहीं होगा. फील्ड किया जा चुका है. 1 रन यहां पर मिल चुका है. हालांकि कैच जरूर लपका था लंगोन के फील्डर ने लेकिन आखिरकार फ्री हिट गेंद होने की वजह से बल्लेबाज आसिफ इस गेंद पर बाल बच चुके हैं. और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का तो शाज इस वक्त नए बल्लेबाज सामना करते हुए यहाँ पर ये गेंद शाज ने गेंद को हल्के से पैडल स्वीप कर दिया. शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. रन्स कुछ हद तक आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए एनएम मैंगलोर के लिए कमबैक करना है तो नजमा मूडबिद्री के गेंदबाजों को यहाँ पर चंद कसे हुए ओवर्स और चंद विकेटें यहाँ पर उखाड़ने होंगे. ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर स्लोवर डिलीवरी. विकेट कीपर ने विकेटें उखाड़े लेकिन न गेंद से नहीं बल्कि अपने हाथों से. और सब कुछ सुरक्षित इस वक्त था बल्लेबाज के लिए. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए हालांकि देर रात होने के बावजूद रात के 1:35 बजने के बावजूद इस वक्त दर्शकों में जोश उत्साह उसी हद में इस वक्त बरकरार. लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है. और निश्चित रूप से एक एक्सक्विजिट बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है. इस देर रात में भी जनाब इरफान इनके साथ में न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना यहाँ पर करते हैं जिसका आयोजन किया है एमएससी मूडबिद्री स्पोर्ट्स क्लब ने. और इस बीच गेंदबाज ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया. थोड़ा सा मिस जजमेंट बल्लेबाज आसिफ द्वारा. शायद उनके मन में ये दुविधा थी कि ये वाइड हो सका. अब रिव्यू यहाँ पर लिया गया है तो ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. तो तृतीय अंपायर के लिए एक बार फिर से यहाँ पर रक्का मान पड़ा है और देखते हैं यहाँ पर इसका परिशीलन करने के बाद वो क्या निर्धार देते हैं. यहाँ पर मैच इस वक्त प्रगति पर एनएम मैंगलोर और नजमा मूडबिद्री के बीच. आज कुल मिलाकर इस रात में 6 मैचेस खेले जाने हैं. ये चौथा मैच है यहाँ पर प्रगति पर. इट्स अ फेयर डिलीवरी और सही गेंद घोषित तीसरे अंपायर द्वारा. और इस वक्त कोई रन उनके खाते में जोड़ा नहीं जाएगा. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. और इस बीच गेंदबाज रोहित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. आसिफ अड्डूर जो कि इस वक्त सामना करते हुए रोहित की गेंदों का केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. पावर प्ले के अंतर्गत गेंद को खेल दिया रिवर्स शॉट के जरिए. खूबसूरती के साथ गेंद का पीछा करते हुए फील्डर बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकने में असफल. और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ. देखिए किस तरीके से गेंद को मोड़ा था और गेंद का पीछा किया. गेंद तक पहुंचे. गेंद को पैर से सीमा रेखा के अंदर ढकेलना चाहा लेकिन गेंद उनके दूसरे पैर पर टकराने के बाद सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए. तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन. 8 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर and one more good over in Mangalore's point of view came straight. So after 2 overs they are except they lost 2 wickets, they are looking in a good situation. 19 on the board for losing 2 wickets. And let's straight away coming back to the equation. 49 minus 19, that means exactly 30 runs required in remaining 6 overs. And the required run rate is now coming down to exactly 5 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact. 8 wickets सुरक्षित उनके लिए. 36 गेंदें बाकी.
30 रन चाहिए विजय के लिए। 36 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग, 30 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और इस वक्त कम बैक करना है तो निश्चित रूप से नज़मा मूडबिद्री के गेंदबाजों को इस वक्त एक चमत्कारी गेंदबाजी करनी होगी। और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में नज़मा मूडबिद्री के अत्यंत अनुभवी गेंदबाज ताजुद्दीन इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए। और ताजुद्दीन का जहाँ तक सवाल है, अंडरआर्म क्रिकेट के एक बेहतर ऑलराउंडरों में से एक वो जाने जाते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अपने घरेलू टीम होम टीम का वो प्रतिनिधित्व इस वक्त करते हुए और नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। हालांकि 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। केवल 4 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, तक गली एक्स्ट्रा कवर मिड ऑन थोड़ा सा वाइडर और शॉर्ट थर्ड मैन इस वक्त मौजूद है। और जहाँ तक फील्ड 20 गज के फील्डिंग के दायरे के बाहर, जहाँ तक 20 गज के दायरे के बाहर का फील्डिंग का नज़ारा है इस वक्त। डीप कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन इस वक्त पीछे की ओर जाते हुए, अब लॉन्ग ऑन पीछे की ओर जाते हुए, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद। और इस बीच ताजुद्दीन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, शास गेंदबाजी का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। ताजुद्दीन पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को खेल दिया, गेंद तक पहुंचते हुए जस्ट क्लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेटें गिर जाने के बाद तौफीक और राशिद बाबा के रूप में 2 विकेटें गिर जाने के बाद पारी की भागदौड़ को ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त संभाले हुए। आसिफ अड्डूर और शाज और अपनी टीम के लिए एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज ताजुद्दीन, डीप कवर पॉइंट के फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ अड्डूर के लिए। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस वक्त उछाला एक्स्ट्रा कवर पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, इनटू द गैप एज वेल। और गेंद जब तक वहां पर फील्ड हो, काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैकवर्ड गेंद को इसको इस वक्त स्कूप कर दिया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक आसिफ अड्डूर का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन 2 रनों के साथ 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर एनएम मैंगलोर। और ताजुद्दीन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार आसिफ अड्डूर के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और आसिफ अड्डूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से धीमी ऑफ कटर, गेंद को हल्के से मोड़ दिया कलाइयों के सहारे। ताजुद्दीन ने थोड़ी सी सफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए, और जब तक गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ एनएम मैंगलोर कम बैक करना है तो यहाँ पर नज़मा मूडबिद्री को यहाँ पर विकेटें उखाड़े होंगे। खासकर इस जोड़ी को इस वक्त तोड़ना होगा जो इस वक्त उनके लिए खतरा पैदा कर रही है। और इस जोड़ी को तोड़ने की तलाश में अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज ताजुद्दीन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस बीच शास के लिए हल्के से गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया, गेंद पहुंची डीप स्कोर लेग पर। जस्ट सिंगल ही कॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल 25 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और इस बीच गेंदबाज ताजुद्दीन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। आसिफ अड्डूर जो कि इस वक्त सामना करते हुए, और ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। आसिफ अड्डूर ने विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, रन इस वक्त पूर्ण करने में सफल। और जहाँ तक सवाल है रन का तो 22 का इशारा अंपायर का हो चुका है और 22 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज ताजुद्दीन अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, शाज सामना करते हुए। और अगली गेंद ताजुद्दीन की दाहिने हाथ ओवर द विकेट शास के लिए। ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना, हल्के से पुश कर दिया, गेंद को तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। सीलिंग डाउन पर
जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर. One more good over in NM Mangalore's point of view came to an end. 7 runs came from this over, and after completion of 3 overs, they are looking in a comfortable situation. 26 for the loss of 2 wickets, and now just 23 to get in remaining 5 overs. With the required run rate of exactly 5.60 runs per over, they have to score for victory. 30 गेंदें बाकी और इस वक्त उन्हें चाहिए इन 30 गेंदों में 23 रन. 23 to get in fact in remaining 30 deliveries. Required run rate is now 4.60 runs per over. और देखते हैं चौथा ओवर हमसे दूर वाले छोर से यानी स्टेज एंड की ओर से इस वक्त कौन से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं. और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार है इस वक्त शाज. Sukesh the bowler starts the fresh proceedings from that side end. और इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. निश्चित रूप से कम बैक करना है तो इस वक्त विकेट उखाड़ने होंगे नज़मा मुडबिद्री के गेंदबाजों को, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं. और इस बीच विकेटों की तलाश में अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज सुकेश गेंदबाजी करेंगे. दाहिने हाथ के बल्लेबाज शास के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. आसिफ अड्डूर और शाज इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए बल्लेबाजी के रणनीति के बारे में और वापिस अपने स्वस्थान पर लौटते हुए. और गेंदबाज सुकेश ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज शास के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. पहली गेंद बेहतर गेंद इस वक्त बैक टू द बॉल की दिशा में गेंद को घेरा, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन यहाँ पर पुट करने में सफल. अंतिम क्षण में तेज रफ्तार के साथ गेंद उनके बल्ले की ओर आई थी और गेंद को हल्के से स्कूप कर दिया था फील्डर की दाईं ओर से मिड ऑन पर. और 1 रन के साथ अपना छोर बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर. 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. और आसिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज अगली गेंद, ये गेंद आसिफ ने गेंद को उछाला है और गेंद इस वक्त लगोन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है बेहतरीन तरीके से. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर. और गेंद को इस वक्त हालांकि अपनी दाईं ओर 8 से 10 कदम दौड़ते हुए गेंद को लपका अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए. और देखिए यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रोक था और किस तरीके की कमिटमेंट थी इस वक्त फील्डर द्वारा. और देखिए गेंद को अंतिम क्षण में गेंद जैसे ही वहां पर सीमा रेखा को पार करे ये बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपक लेगा. दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द डीप मिड विकेट फील्डर. और इस बेहतर कैच की बदौलत इस वक्त विकेट गिर चुका है आसिफ अड्डूर का और 27 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है NM Mangalore. 27 for the loss of 3 wicket. One more good striker of the ball is now comes out to the middle. आतिफ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और इस बीच सुकेश अपनी ओर की तीसरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार. तो यही एक वक्त है इस वक्त नज़मा मुडबिद्री के गेंदबाजों को कम बैक करने का. अगर 2-3 विकेट यहाँ पर अगले चंद गेंदों में वो उखाड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच में वापस आ सकते हैं. या फिर 1-2 कसे हुए ओवर्स इकोनॉमिकल ओवर अगर वो फेंकते हैं तो शायद इस मैच में उन्हें वापस आने का मौका है. और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर सुकेश तैयार. आतिफ के लिए यह गेंद विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े. शॉट फाइन लेग का फील्डर का फेंका गया वह थ्रो निशाने पर नहीं टकराया. और इस बीच बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर. 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. स्टिल 21 टू गेट फॉर विक्ट्री. और गेंदबाज इस बीच सुकेश शास के लिए यह गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया. डिलिकेटली एब्सोल्युटली डिलिकेट स्टंप्स को कवर किया, बल्ले को हल्के से मोड़ते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया स्क्वायर लेग पर. और 1 रन के साथ इसको छोड़ इस वक्त बदल चुके. 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज इस वक्त सुकेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बल्लेबाज आतिफ इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद आतिफ के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई. वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर गुजरी थी गेंद. हालांकि गेंद पर पहुंचने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज आतिफ ने लेकिन पहुंच नहीं पाया. और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर. 30 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और अगली गेंद लेकर सुकेश इस वक्त तैयार.
ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी। इस वक्त आतिफ ने गेंद को खेलना चाहता लेकिन गेंद कुछ हद तक घुमाव टर्न लेते हुए अंतिम क्षण में बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी वंचित कर गई और शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 30 रनों पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और इस वक्त अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर सुकेश इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अब तक सुकेश का बेहतर ओवर साबित हो चुका है। कुल मिलाकर इस ओवर में सिर्फ 4 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार आतिफ के लिए। ये गेंद स्वीप किया आतिफ ने इस वक्त लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और लेग पार का इशारा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर नंबर 4 की समाप्ति। 5 runs came from this over. First good over in Nazma Moodbidri's point of view came straight from Sukesh, who conceded just 5 runs. 4 overs gone. 31 still. And Mangalore are looking in a good situation. Just 18 to get for victory in remaining 4 overs. The required run rate is now coming down to exactly 4.5 runs for over. देखते हैं यहाँ पर बच्चे वे 4 ओवर में कमबैक करने के लिए नज़मा मूडबिद्री के गेंदबाज किस तरीके की बल्लेबाजी किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर शुरू हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे काबिल दोस्त सतीश को अंग्रेजी में। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Gopi, and just 18 runs away from the victory. NM Cricketers Mangalore against Nazma Moodbidri, almost cruising towards the victory. And Atif, the batter, will going to take the strike. Ashu, the one of the experienced bowler, brought to that, except the ball, a fumble from the fielder from the deep, but both the batters knows that no need to panic at all. Just they wanted to rotate the strikes to get their target here. 32 for the loss of 3 wicket, 17 to get from remaining 23 balls. Nicely swept that one down to square leg region by the batter. They played it down to square leg region by Shahs. Both the batters are rotate the strike in the first 2 ball. Now some closing fielders now for Atif. What a delivery, that one. Absolutely misreading the leg cutter of Ashu. Have a look at that one in the replay, that Atif just wanted to get the ball into the fine leg region, but he's exposed his time around his legs. The ball went into the and wicket which is back in the pavilion. 32 for the loss of 4 wickets. Still Nazma has got opportunity to back in the game. If they manage to make the wicket, another 2 quick wickets and bowl some good economical deliveries, then who knows, Nazma can back in the game. But NM Cricketers Mangalore, even though they lost 4 wickets, but the equation that what we are watching here, it might be a bigger ask in the different remaining deliveries for the team NM Cricketers Mangalore. But they got some new face in NM Cricketers Mangalore, so that Nazma have to believe that it's good enough runs they can depend in the remaining deliveries if the ball well, and for opportunity still remaining for Nazma. Full toss, swings it hard, and one of the fielder, not a fielder, but one of the spectator taken the catch out of the boundary line. The Ashu bowled a juicy full toss, and the new batter Mustafa absolutely taken that ball right from the middle of the bat into that
deep square leg region for a 6, and after that 6 egg followed the wide deliveries. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ತಿಲಕ್ ಗುರೂರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ರವೀಶ್ ಶೆಣೈ ಮುಂಬೈರವರು ಕೂಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Mustafa absolutely changing the game with just 2 balls. The boundary and the 6. The pressure is off. Oh, one more beautiful delivery. The faster one and quicker one there for Marshu. The quicker and faster one for Marshu there. And Mustafa absolutely, he is not really bothered about this wicket. It's because he wanted to do the damage for the opposition. He did the damage by hitting boundary and the 6. And the pressure which is off. Now any batter coming to the middle. Yes, in our main stage you are witnessing some dignitaries here. Tilak Guru of Young Friends Urva and Ravi Shenai. One more big supporter of Young Friends Urva as well as a sponsor. Came from a long way. Welcome for him as well. Young Friends Urva, they are also organizing a cricket tournament in the next month in the name of Young Friends Trophy. In UCG cricket ground, Anvit. It's not Anvit. Mujib is the batter in the non-cycle end. Sukesh the ball. Lovely delivery to start with. Shahs wanted to get that one on the onside region. Just wanted to paddle the ball. Beaten by the flight of the delivery. Sukesh has got height so that he can get some extra bounce. Second time in this over. Swings and missed. Legator from Sukesh just coming into that inside the line. No runs scored. 44 on the board. 5 runs away from the victory. This time edging it out to short third man region for an easy single. Now just 4 runs required for the victory. The Mujib the batter. Sukesh the bowler. Now after this match, Torpedoes Khana versus Young Friends Urva. The high voltage match will going to commence after this. This is how why the crowd is unmoved from the ground. Then exactly they will going to witness the big match here. That will go into the 4th match of the 4th day in the night. This time appeal for leg before the gate. Umpire not interested, but leg by call by umpire. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ಶರ್ವಾನ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That's it. The team on the match has the comprehensive victory in the end of the team of cricketers Mangalore defeated the team Nazma Moodbidri by 5 wickets. They finished the match in a style with the boundary, and with that boundary we are going to finish the match number 4. Now we are into the match number ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ match number 4. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಾಜಿದ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶರ್ವಾನ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟೋರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ತಂಡ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಜ್ಮಾ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಂಡದ ಹಾರಿಸ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೆದ್ರಾ ಕೆಫೆ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹನೀಫ್ ಇವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಈಗಲೇ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೌಂಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. The man of the match of the previous match, which goes to the Mujib of NM Cricketers Mangalore for its the fantastic bowling spell of 2 overs, 5 runs and 1 wicket. 2.5 runs, which is economy. So that he judged as the man of the match for the previous match. May I request Mr. Mujib, please go and collect your man of the match award from our chief guest in our main stage. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸೈಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರು ಮುಜೀಬ್ ಎನ್ಎಂ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಜಯಕ್ಕಿರುವಾರಿಯಾದಂತಹ ಮುಜೀಬ್ ರವರು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸೈಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬೆದ್ರಾ ಕೆಫೆ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ರೂವಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹನೀಫ್ ರಹಮಾನಿಯರವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹನೀಫ್ ಅವರು ಹಾರಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೋರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಡಗ್ಔಟ್ಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, 2 ಡಗ್ಔಟ್ಗಳು ಅದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ತಿಲಕ್ ಗುರೂರವರನ್ನ
ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಿಲಕ್ ಗುರೂರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓರ್ವ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ತಿಲಕ್ ಗುರೂರವರಿಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಶ್ ಶೆಣೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಶ್ ಶೆಣೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರವೀಶ್ ಶೆಣೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಲತೀಫ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ರವೀಶ್ ಶೆಣೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಡಗೌಟ್ಗಳನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿನಂತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆ ಡಗೌಟ್ಗಳನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಡಗೌಟ್ಗಳು ಕೂಡ So thank you very much. Welcome back for the big match here between Torpedoes Khana versus Young Friends Urva. The present season, the team has got a success. The Young Friends Urva also, they are absolutely, they got a fantastic season. And Torpedoes Khana, after they won that YSV trophy, then in the last week they won JD Trophy 2025, and level of confidence going to be very high. And here is the first ball. This time, loved it. What a start! The man in form. You can see here the batter, the captain of the side, Basit. His intention is very clear, but it's not a good start here for Zubair again. In the previous match also, he's got a punishment. And here also, the Mangalore Express is being welcomed with the boundary by Basit. What a terrific form he has got. One of the best season, I want to tell you, Basit has got. Whether he's representing for his home team, whether he's representing for his Torpedoes Khana. Nicely flicks that one off his legs down to deep square leg region for a easy single. There's a little bit surprise here. The Mansoor is promoted up in the order for Torpedoes Khana. It's going to be a very interesting and a good contest between two experienced players. Zubair to Mansoor. Third time in this over. Oh, what a delivery! What a delivery! This is a Zubair for you. This is a Zubair for you.
He's got a potential of bouncing back every time. He's been punished. He will definitely wanted to take the wicket here. This has been a great one there from Zubair. Have a look at that one. Mansoor playing wrong line. Mansoor definitely played that wrong line. It was a slight bit of slower one there from Zubair. Mansoor early into that sweep shot. Missed it completely and hit the stumps and disturbs the furniture. So what a delivery that one. Roland Pinto, I have to see the replay of that dismissal in the screen because maybe Zubair came right in front of umpire. So some electrifying moment here in this jump pack stadium. ಸಲಾಂ ಎನ್ಎಂ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಲಾಂ ಎನ್ಎಂ. So surgery which is made in the batting order for Torpedoes Khana, that getting Mansoor to open the innings, but it is not really working out. Now Ashraf is coming. ವಾಹನದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ Ashraf, the man, came into middle. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೂ ವೀಲರ್ ವಾಹನದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Regular opening batter of Torpedoes Khana, Ashraf. Oh, what a shot! He swings it away. He swings it away down to deep square leg boundary for 4 runs. 6 runs in fact. This is not ideal delivery from Zubair for Ashraf. Down the leg side. Just a touch. Have a look at that one. You can't do the mistake for Ashraf bowling that line. And ball absolutely sliding into the crowd. 6 and a boundary. What Zubair is doing here? Can you able to bounce back here? After the boundary picked up wicket, after 6, what will going to happen? Here is see. That was a fair delivery. Oh, opportunity of run out is missed out by the short extra cover fielder. Ashraf taps the ball in front of fielder. Bashit not responded for the run. Rightly so, but because of that fumble from the fielder, Vaishak at cover point fumbles and the batter survived. 12 runs already came from this over. So what an over for the team Torpedoes Khana. Even though they lost 1 wicket, but got 12 runs in that over. 12 for 1. Torpedoes Khana and young friend Surwa, the two teams. Of course, so many times they played each other. Sometime young friends Surwa won, sometime Torpedoes have won. But what we are seeing here in this MSC Trophy 2025, in front of huge crowd, it's going to be a different ball game. Both the teams wanted to be a champion here. The MSC Trophy 2025, such a huge cricket tournament, such a prestigious cricket tournament. 1,50,000 cash prize with the very attractive MSC Trophy 2025. The runner-up will going to get a 1 lakh with the very attractive trophy here. Such a wonderful organizing cricket tournament in this most beautiful Swaraj Maidan here in Moodbidri. Now the bowler will go into start the second and last over of the power play.
Rifan brought into attack. Starts with the wide delivery outside the line of flag stump. That shows the pressure what bowler feels. With the extra scope numbers on 13 for Ashraf. Just I want to see the field set. First of all, I would like to give the fielding position in the long on. One at mid wicket and one at long off for Ashraf. Again, that was a played it back powerfully into the non-striker's end. The stumps which is uprooted in this non-striker, that shows the power of Ashraf. When he hits the ball pretty hard. Non-striker stumps which is uprooted with that stroke which just came from the bat of Ashraf. But they got a single ball after deflected from that stump. Scoreboard numbers on to 14 for 1. In the over number second is in progress. Basit, the man with that terrific form, will go into face Rifan. Round the wicket. Catch it is a goal, and again the landed safely. My goodness, can you believe this? Basit just wanted to go for the switch it, but bowler bowls outside the line of leg stump, made him uncertain to play that reverse save, but he went with the stroke. Luckily that ball didn't carry to the field. The 15 for 1. Last 3-4 night I am watching only one dog which is enjoying the game of cricket along with the spectator. And sometime it will going to make a little bit disturbance for the fielders and bowlers. But the dog will not going to bother about anything. So Rifan takes his own time to set a field down to mid-wicket. Rajesh Ubar down at mid-wicket. The fielder down at long off. The two fielders outside the circle. Is the last out of the power play. Rifan again. Again, nicely driven. Hit that one pretty well down to mid-wicket region for a easy single. With the addition of that single score, but moves on to 16 for 1. In this particular over, both the batters are dealing with a single. And even young friends who knows that after that 12 runs in the first over of the power play, they needed this over as economical. Rifan, one of the most successful opening bowler for the side of young friends Surwa. Whenever the team needed some restriction from the bowling, he did the job so many times in the particular season. Ball him, clean him up, that's what I'm talking about. This is going to be a wrong stroke there from Bashit. This is going to be a wrong stroke there from Bashit because the ball is in the midland leg stump in that occasion. Just he wanted to play across the line, tried to swing that one in the outside region. But beaten by the pace is a tall man, Rifan. That the benefit of being the tall is having some extra pace. Using the shoulder to get the extra pace in the ball. That definitely in this particular dispensation, I will tell you, the Bashit's bat which is missed the ball because of the pace. Just have a look at the replay. The ball kept low as well in the last moment. The danger man Ashraf is depart. At 15 for the loss of 16 for the loss of 2 wickets. Thank you. The new batter in is Shakir, with the nickname of Robotic. Can he manage to justify the name that what he has got, Robotic? And here is the bowler, successful bowler, Rifan. They wanted to go for the reverse sweep as usual. He loves to play such kind of strokes, very strong behind the wicket, square of the wicket. One more single, 17 for the loss of 2 wickets. Is off the mark with a single. This is turning out to be a great over. Just 5 runs came from that over from 5 balls. Rifan
Now Arshad quickly running towards Rifan. And Bajal knows that only 5 balls which is completed, 1 ball remaining. That 1 ball is good enough to make the economy little bit the costlier, because Ashraf is the batter in front of Rifan. Round the wicket. Oh, lovely delivery indeed. Lovely delivery. In fact, leg by call by umpire, pitched outside the line of leg stump. Great over. Just 6 runs came from that over from Rifan. After completion of over number 2, Torpedoes Khana, 18 for 2. They're going exactly 9 runs per over. So 18 for loss of 2 wicket. First 2 over of the power play belongs to both the teams because Young Friends have got 2 wickets, and at the same time Torpedoes Khana has got 18 runs, 9 runs per over. So equal battle is on between these two. Young Friends the 2 weeks back they won, they become the runner-up in the United Trophy 2025. The very next week, the JD Trophy, which is held at SVS Cricket Ground, Bantwal, by JD Boys Bantwal. So Torpedoes Khana become the champion. So this is going to be a great contest. Arshad brought into attack, and Ashraf is a man is also in a good form. Of course, they didn't start with well with the bat for Torpedoes Khana. Is searching for his form, but last 2 to 3 tournaments. Ashraf also started to talk with his bat. He's getting some important runs from the bat as well for his team. The Shakir's, typical Shakir's single-handed sweep shot down to square leg region. So both the teams see each other in the JD Trophy, and in that match, Torpedoes Khana defeated Young Friends by 7 runs. Again played it down to deep long on. Vaishak, the fielder in the long on, fields the ball, returns the ball. Ample time for the batter Ashraf to complete the single. 21 for the loss of 2 wickets. Arshad Bajal. Swept the ball nicely down to deep square leg region for a single. So runs are coming in the form of singles. We're talking about that, a great match. I'm talking about that JD Trophy. When the team is cruising towards a victory, when Sajid is a man, he absolutely takes the match away from the opposition. And at that time, when the catch which is taken by Mansoor at extra cover, the changing the game. Left arm around the wicket. Again now, lovely delivery from Arshad Bajal. Absolutely fantastic one. All that close encounter in that tournament, but Torpedoes Khana, when they came into the final, they won the match against Kori Young Boys by single run. That is in the quarter final. Oh, Spectra White. This is going to be a Spectra White. Yes, it is. Arshad Bajal maybe is looking for some experiment in that delivery, looking for the extra pace. But ball gone plenty outside the line of leg stump. 23 for the loss of 2 wicket. Arshad to Ashraf. Oh, catch it is a call. Catch it is a call. Catch has been taken. Batsman is walking. Ashraf is walking, and this is a huge wicket. Arshad Bajal strikes. The wicket number 3 is back in the pavilion. It's a 23 for the loss of 3 wicket. Have a look at it in the replay.
This has been a good sportsman spirit as well. Sometime what happening when the ball is got a bat and pad, the batters are waiting for the decision of the umpire. But this man is straight away walks. So that was a clean coming from the bat of the batter, Ashraf. It's 23 for the loss of 3 wickets. Young friends who are now back in the game. Thank you, DJ. One more good over from the point of view of young friend Surua. So 6 runs came from that over and 1 wicket. The wicket of Ashraf, the danger man, is back at the pavilion. 2 huge wickets here for the young friend Surua. The informed batsman Basit and the informed batter Ashraf. Now it's a right time for the young friend Surua to get into the game with some good over. The right time for them to tighten up the screws here. Now Karthik Senior is brought into attack in this particular match. He's missed out. He's been missed out in the first match, and the bringing him in this match definitely is going to strengthen the bowling department. Such a useful left-arm bowler, very effective sometime in the under floodlight. And Shakir Jackie will going to face him. The first ball from the far end, left arm. Round the wicket, just like I was mentioning about, but this time Karthik didn't got that much of turn in that occasion, straighter one, so that wide call by umpire. He just tried to bring the ball from outside the line of off stump, but they missed that spin in that ball. Now, I don't know what the reason that umpire is having some conversation. The mid-off fielder Rajmal has got some word with the umpire, Mohan Iyadi. And after that, they are now, the third umpire has been asked for what? For the white? No, they taken back. Arshad Bajal is a guy I want to tell you. He is the gentleman in cricket. He is a gentleman in cricket. Every time I'm watching him. Again, played it down to deep square leg region for a single. Yes, there are some players I'm talking about. They're not really winning the heart of cricket lovers, not only with their batting, but sometimes they're winning the heart of the cricket lovers by their character. It's very important, isn't it? More than the talent, the character that matters the most. This time, wanted to come back for the second. And Shakir Jackie having some fun with Rajesh. Rajesh is also knows that. He's also loves the fun in the ground. Having big smile in his face. The very good dancer. This time fiddled that one nicely. Down to the fine leg region for a single. Again, he's a busy customer. Rajesh Hubar down at fine leg region. It's 27 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Runs are coming in the form of singles so far. They wanted to go for the switch. There is a chance of run out and oh my goodness. Akram is a batter. He is back in the pavilion. Sajid, the fielder at short fine leg region, absolutely knows that it's difficult to get Shakir because he's so quick between the wicket, but not the Akram. So he's just targeting into the non-cycle line. The good throw coming from the fielder and Karthik, the bowler, complete the formalities of making that run out. Just have a look at the replay. They wanted to go for the switch hit. Wicket keeper missed it. Sajid behind the wicket. And have a look at that. That was a presence of mind there from Sajid.
You know exactly. Akram is the one. He started very slowly. He responded very slowly. And it's got a wicket as well. Now, Torpedoes Khan, all in sudden, they lost the momentum. It's 27 for the loss of 4 wicket. Of course, they lost the momentum, but the hero of the previous match is coming to the medal. Harris, what an innings he played in the previous match. Unbelievable. It's one stage there. Absolutely looks like they will out of the game. But only 1 hour it taken to get the acceleration, hit the 2-6, change the game. (27) for the loss of 4 wicket. Needed some partnership badly here for the team. Torpedoes swept the ball as usual. Shakir. In this particular over, Rajesh is a busy customer. The third time the ball is coming into his way. Down at deep square leg and fine leg. 28 for 4. The over number 4 is in progress. Still the run rate, which is almost 8 runs per over. And similar run rate till the end takes them into 60 plus runs. But wait and see. Oh, swings and missed. Swings and missed. But against the turn of Karthik, it's not so easy. I already mentioned the inclusive of Karthik in the bowling department for young friend Surwa will going to strengthen. One more good over here for young friend Surwa. After completion of over number 4, it's 28 for the loss of 4 wicket. And have a look at this crowd here. Absolutely, they enjoying the game of cricket. They came in a huge number, last number here to witness this prestigious MSC trophy in this high voltage match. And wait and see how well the Torpedoes Khana will going to regain the momentum what they got in the first 2 overs. And before the next over going to start here, it's time for Gopi to take out the microphone. Gopi, electrifying start in the first over. But after that, the young friends, they are absolutely back in the game with some good overs, some wickets as well. Altogether, Gopi, the great battle, the equal battle is going on between 2 very good teams of South Kent district. Exactly, Satish. जैसा कि आपने फरमाया, very good battle going between these two teams. और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त 4 ओवर के बाद 28 रन बन चुके हैं. और पहले ओवर में बासित ने जब छक्का लगाया था तब ऐसा अंदाज़ा लगाया गया था कि गेंद यहाँ पर फील्ड बल्लेबाज टॉर्पेडोज खाना के खा जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक बेहतर कमबैक करते हुए चंद विकेट यंग फ्रेंड्स रुआ के गेंदबाजों ने प्राप्त किए. और अब बराबर का मुकाबला, द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. क्रीज पर मौजूद इस वक्त बल्लेबाज हारिस जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और अरशद बजाल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. और नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद शाकिर. निश्चित रूप से यहाँ पर टॉर्पेडोज का कम से कम 50 के ऊपर के स्कोर की तलाश पे. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त यंग फ्रेंड्स हुआ के गेंदबाजों का, तो चंद और विकेटों की इस वक्त उन्हें ज़रूरत है यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए. और अरशद बजाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. लेग स्टंप पर आती हुई गेंद रन के लिए दौड़ पड़ी. इस वक्त थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. इनफैक्ट इट्स अ बाय, और बाय के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रन. तो इस वक्त रिव्यू लिया गया है, इस वक्त लिया गया है और बल्लेबाज ने इस वक्त रिव्यू लिया था. और देखते हैं इसका परिशीलन करने के बाद अंपायर क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं. तो निश्चित रूप से रात के 2:30 होने के बावजूद इस वक्त दर्शकों से मैदान खचाखच भर चुका है. एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम. और निश्चित रूप से एक बेहतरीन श्रृंखला यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एमएससी ट्रॉफी 2025 के नाम पर और तो वाइड इस वक्त घोषित तृतीय अंपायर द्वारा. तो रिव्यू जो लिया गया था बल्लेबाज का, वो इस वक्त रंग लाता हुआ और वाइड इस वक्त अंपायर घोषित करते हुए, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर. 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. और इस बीच अरशद अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जब आउट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद शाकिर के लिए स्वीप कर दिया. इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका. 32 ऑन द बोर्ड इन फैक्ट फॉर लूजिंग
4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी अंडरआर्म के दो बेहतरीन टीमों के बीच और इस बीच अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, टॉप एज मौका। ओह, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एफर्ट मेड बाय द शॉर्ट फाइन लेग फील्डर। और जहां तक सवाल है, सारे खिलाड़ियों ने इस वक्त, सारे दर्शकों ने उनका अभिवादन किया इस बेहतरीन प्रयत्न के लिए। अजमल जो फील्डर थे शॉर्ट फाइन लेग पर, जिन्होंने डाइविंग लगाई और हालांकि वो कैच को जरूर लपक नहीं पाए, लेकिन निस्संदेह काबिल तारीफ प्रयत्न किया था और दर्शकों ने अभिवादन किया तालियों के साथ। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त टॉप एज पर टकराने के बाद, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डाइविंग इस वक्त लगाई इस वक्त अजमल ने। और आखिरकार इस वक्त गेंद को तो वो लपक नहीं सके, लेकिन इस वक्त प्रेक्षकों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया तालियों के साथ। और इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, सिंगल रन, 2 इनफैक्ट 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 34 रनों पर। और अरशद इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप किया। इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, एक बार फिर से अजमल गेंद तक पहुंचते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रन। दोनों संतुलित टीमें यंग फ्रेंड्स और टोर्पेडोज काना इस मैच में भिड़ रही है और इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और इस बीच अरशद फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करने के बाद शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार शाकिर के लिए ऑफ द टॉस, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया। इस वक्त शाकिर ने गेंद की गति को पहचानते हुए स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर, एक रन के लिए। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। दोनों बल्लेबाज रिस और शाकिर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए बल्लेबाजी के रणनीति टैक्टिक्स के बारे में। और इस बीच अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बीच अरशद की गेंदों का ये गेंद रिवर्स शॉट, आरिस का स्ट्रोक इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद पहुंचे, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। इनकम्स अ थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ द विकेट कीपर फ्रॉम द बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर एंड द बैट्समैन आर फाइनली सेटल्ड विद अ सिंगल। और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड ओवर नंबर 5 हैज़ बीन केम्स टू एन एंड। तो जहाँ तक सवाल है, इस वक्त 4 विकेट खोने के बावजूद टोर्पेडोज काना एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ और कम बैक करना है, तो इस वक्त यंग फ्रेंड्स हुआ के गेंदबाजों को विकेटों की सख्त ज़रूरत और चंद कसे हुए ओवर्स उन्हें फेंकने होंगे। और इस बीच काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त जारी खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत जारी है इस वक्त। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगले ओवर का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त अगला ओवर फेंकने के लिए यहाँ पर उतरते हैं। और एक बेहतरीन एक्सक्यूजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान इनके सारथ्य में। इस देर रात में भी देश विदेशों में हज़ारों दर्शक इस मैच का मुआयना करते हुए, जो कि 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच इस वक्त खेला जा रहा है। और मैच इस वक्त बराबरी पर आकर रुक चुका है और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से दाहिने हाथ के गेंदबाज है, जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए आरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कार्तिक का इस वक्त नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात नहीं, शायद 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर मौजूद है। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज आरिस के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, कार्तिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, विकेट कीपर अरशद बिल्कुल स्टंप से चिपक कर इस वक्त बैठे हुए, स्टंप्स के अति निकट इस वक्त बैठे हुए। और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर कार्तिक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए आरिस के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद अपील इस वक्त, लेकिन और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। रिवर्स शॉट खेलना चाहता आरिस ने, शाकिर दौड़ कर आ गया स्ट्राइकर एंड पर और आसान सा रन आउट इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, जैसे ही विकेट कीपर के हाथों से चूंकि इस वक्त शाकिर दौड़ कर आए और आखिरकार आरिस वहीं पर रुके रहे, लेकिन दौड़े जरूर रहा, लेकिन तब तक थ्रो पहुंच चुका था नॉन स्ट्राइकर एंड पर और विकेट कीपर और गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट चटका चुके थे। 5वां विकेट गिर चुका है। आरिस
आउट होकर पेविलियन वापस। जहां तक एरिस का सवाल है, 3 रन सिर्फ उन्होंने बनाए और उनका विकेट इस वक्त गिर चुका। 4 रन एरिस ने बनाए जबकि उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। सिनन द बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और इस वक्त वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। स्ट्राइकर एंड पर शाकिर जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हैं। हालांकि सारे रन शाकिर ने सिंगल्स के रूप में ज़रूर बनाए हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल इस वक्त तो बल्लेबाजी करते हुए 9 रन बनाए हैं शाकिर ने। अब तक 9 रन भी सिंगल्स के रूप में वो इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। और गेंदबाज कार्तिक इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अपनी ओर की दूसरी गेंद। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते विकेट कीपर अर्शद चूके लेकटर गेंद थी इस वक्त, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर की ओर फेंकी थी और इस बीच बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके। तो अब वाइड घोषित करते हुए अंपायर, तो थोड़ी देरी से लेकिन वाइड जरूर घोषित करते हुए और 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल विद दैट कपल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है, गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर थोड़े से पीछे तैनात। इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर थे थोड़े से पीछे मौजूद। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 40 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला शाकिर ने इस वक्त, गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में और शाकिर खुद आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद कैसे लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में पहुंची थी। उनका इरादा यह था कि गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से क्लियर करे, लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा दम नहीं था और आखिरकार लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की। एक बेहतर जजमेंट के साथ इस सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लॉफ कर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। He lofted that one but couldn't get hold of that shot and comfortably held just inside the fence by the long off feeder. One more wicket fall on Shakir departs after being playing a good knock, sensible knock of 11 runs. He is backing to pavilion and 40 for the loss of 6 wicket for Torpedoes Kana in the over number 6 in progress. इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का। न्यू बैट्समैन इम्तियाज इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और जहां तक सवाल है इस वक्त सामना करने का, तो कार्तिक इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई निस्संदेह, जैसा कि मैंने पहले भी फरमा चुका, 50 का आंकड़ा कम से कम पार करना होगा टोरपेडोस काना के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। क्योंकि यंग फ्रेंड्स उड़ा के पास जो बलाढ्य बैटिंग लाइनअप है, उस बैटिंग लाइनअप पर अगर दबाव डालना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर 50 का आंकड़ा कम से कम उन्हें यहाँ पर पार करना होगा। जहाँ तक यंग फ्रेंड्स का सवाल है, इस वक्त बचे हुए गेंदों में उनके गेंदबाजों को किफायती गेंदबाजी, इकोनॉमिकल बॉलिंग इस वक्त करनी होगी। कार्तिक अपनी ओवर की अगली गेंद, ये गेंद टॉप एज, लेकिन फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं। 1 रन मिलेगा जरूर और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अंपायर दोनों कुछ बातचीत करने के लिए आगे बढ़कर कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक सवाल है और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सिनन। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर कार्तिक इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला। इस वक्त गेंद पहुंची गली की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर
42 रनों पर 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट। और गेंदबाज कार्तिक अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इम्तियाज के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को खेलना चाहा, बेहतर लेग कटर गेंद थी इस वक्त, गेंद की लाइन को गेंद के टर्न को भाप नहीं पाए। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति 6 गॉन 42 ऑन द बोर्ड, स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन, 6 wickets down for Torpedoes Khana and now still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in the innings। 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इस वक्त देर रात में भी दर्शक मैदान पर लगभग भरे हुए नजर आते हुए और जहाँ तक सवाल है हाई वोल्टेज मैच इस वक्त प्रगति पर यंग फ्रेंड्स और टॉर्पेडोज खाना के बीच। गेंदबाज जुबैर जो कि इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, हालांकि अपने पहले ओवर में एक छक्का और एक चौका जुबैर ने प्रदान किया था और इस वक्त देखना यह है कि अपने दूसरे ओवर में वो किस तरह इस वक्त कमबैक कर पाते हैं। और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज सिनान, दाहिने हाथों पर द विकेट जुबैर की ओर की पहली गेंद है, ये गेंदबाज सिनान के लिए ड्राइव कर दिया, गेंदबाज की दाईं ओर से लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची, जस्ट अ सिंगल गॉट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 43 रनों पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर। और जुबैर इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद, परफेक्ट डिलीवरी, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इम्तियाज गेंद को ड्राइव करना चाहा फ्रंट फुट पर जाने के बाद चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फिर से एक बार जुबैर तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। जुबैर कम बैक वेरी वेल और इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता इम्तियाज ने और कुछ देर से कुछ हद तक स्ट्रगल कर रहे थे वो क्रीज पर, 2 डॉट गेंदें खेल चुके थे, पिछले ओवर में 1 गेंद, इस ओवर में 1 डॉट गेंद और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था। जुबैर की गेंद थी इस वक्त मिडल ऑफ स्टंप पर आती हुई, गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और उनके बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले गई। LED लाइट्स रिफ्लेक्ट होते हुए, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और स्कोर इस वक्त है कुल मिलाकर 43 रन पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और नए बल्लेबाज चेतन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और चेतन नए बल्लेबाज से सामना करने के लिए तैयार। जुबैर की गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, अपील जरूर है लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रन। अब एक बेहतर लाइन के साथ यंग फ्रेंड्स हुआ के गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो जुबैर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और जुबैर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सिनान के लिए जुबैर की ये गेंद, इस बार गेंद को खेलने के प्रयास में चूक है, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, रन के लिए दौड़ पड़े अजमल तेजी के साथ, गेंद पर लपके जरूर लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 45 रनों पर 45 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। दिस इज द ओवर नंबर 7 ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। जुबैर चेतन के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चेतन के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा चूंकि इस वक्त गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, बेहतर ओवर की समाप्ति जुबैर की और 7 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 45 रन 45 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स स्कोर्ड बाय Torpedoes Khana after being losing the toss and put it to bat by young friends Urwa in this quarter-final match. They are 45 for the loss of 7 wickets. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं बचे हुए 3 विकेटों की मदद से। तो एक बेहतर कमबैक पिछले 2-3 ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाजों ने किया है, फलस्वरूप इस वक्त वो इस मैच में वापस आ चुके हैं। तो अंतिम ओवर शुरू होता हुआ और लंबे कद के खिलाड़ी रिफॉन जो कि इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिनान और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और
इस वक्त डीप मिड विकेट मौजूद, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर तैनात नहीं, एक फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात स्क्वायर लेग पर रहा। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त ऑफसाइड पर 3 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट और गली इस वक्त तैनात, स्क्वायर लेग और मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मौजूद। काफ़ी आक्रामक फील्डिंग इस वक्त सजाई है यंग फ्रेंड्स के कप्तान ने। पहले गेंद नेक्स्ट स्टंप से बाहर और गेंद इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स मिलेंगे इस बीच 2, कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल। और दिस नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर रिफॉन, वाइड इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की और उन्होंने फेंके थे और 2 रन अतिरिक्त के रूप में बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 47 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर, 47 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और रिफॉन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार चेतन के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चेतन इस वक्त सफल होते हुए गेंद को हल्के से रिवर्स शॉट खेल दिया चतुरता के साथ, पहले पूरी तरह स्टंप से एक्सपोज करते हुए दाईं हो रहा है, गेंद को ऑन साइड पर उछालने की सूचना दी, लेकिन अंतिम एक्शन में जैसे ही गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर आई, अपने इरादे को बदलते हुए तेजी के साथ अपने बल्ले को तिरछे अड़ाते हुए रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को खेल दिया गली पर और 1 रन बटोर कर ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। और सिनान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिफान की गेंद इस वक्त काफी दमदार स्ट्रोक, लेकिन फॉलो थ्रू में रिफान के शरीर से टकराने के बाद गेंद जब तक बैक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ 50 कम्स अप फॉर टोपोडोस्काना, 50 रन यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 4 गेंदें अभी भी बाकी। और गेंदबाज इस बीच रिफॉन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, गेंदबाज रिफॉन की ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिनान के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट लंबे रनअप के जरिए अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद को गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रनआउट का खतरा इस बीच, लेकिन रिफॉन गेंदबाजी करने के बाद काफी आगे आ गए थे, सिर्फ 22 का इशारा। और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 51 रनों पर, 51 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट नाउ इन द ओवर नंबर 8 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और रिफॉन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए चेतन इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार चेतन के लिए स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाह चुके विकेट कीपर, रनआउट का खतरा, आसान सा रनआउट नॉन स्ट्राइकर पर हो चुका है। और चेतन इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े थे, जो कि काफी जोखिम भरा साबित हुआ। और इस बीच अंपायर ने इशारा इस वक्त किया कि एक बार फिर से वो अपने निगदित समय क्रॉस कर चुके, तो एक और खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 51 रनों पर, जबकि 8वां विकेट इस वक्त गिर चुका है चेतन के रूप में। अब गेंदें बाकी हैं 2 और नंबर 10 बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ शरण, नंबर 10 बल्लेबाज जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, जबकि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार बल्लेबाज सिनन और गेंदबाज रिफॉन इस वक्त गेंदबाजी में, इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए। और सैकड़ों दर्शक यूट्यूब पर अभी भी इस देर रात में, हालांकि रात के 3 बजते हुए, लेकिन हजारों दर्शक इस मेगा श्रृंखला का यूट्यूब पर मुआयना करते हुए देश विदेशों में जो इस वक्त बेद्रा मीडिया कर रहा है जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा एमएससी ट्रॉफी 2025 एक शानदार प्रगति करती हुई इस देर रात में भी। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं रिफॉन, और सिनन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार सिनन के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया फॉलो थ्रू में, मिसफील्ड इस वक्त गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर जाओ, गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त 4 रनों के लिए। मिसफील्ड वहां पर जो फील्डर थे लॉन्ग ऑन के और गेंद पर पहुंच गए थे, और ऐसा कहना पड़ेगा देखिए किस तरीके का दमदार स्ट्रोक था, लेकिन यहाँ पर फील्डर पहुंचे जरूर है, लेकिन हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से छूटी और सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। तोहफे के रूप में इस वक्त प्रदान करते हुए इस वक्त फील्डर, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 55 रनों पर। अंतिम गेंद अब बाकी, 55 फॉर द लॉस ऑफ 8 wickets and the last ball of their innings is now coming up. Riffon to Sinan, दाहिने हाथ round the wicket, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, into the gap as well, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने का। Couple of runs to end their innings, and Torpedoes-Khana finished well with 57 for the loss of 8 wicket in the stipulated 8 overs. And now they set a victory target of 58 for young friends Urwa.
to qualify for the semi-final of this competition, they have to score 58 runs for victory with the required run rate of exactly 7.25 runs per over. That means they have to score 58 runs out of their 48 stimulated deliveries. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाज लक्ष्य तक पहुँच पाते रहे. हालांकि टॉर्पेडोज काना जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप उनके पास है, उसी तरीके का बल्लेबाजी का लाइनअप, सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप यंग फ्रेंड्स के पास भी है. और जहाँ तक सवाल है अरशद बजाल जैसे घटानुघटी बल्लेबाज उन पर मौजूद है. और जहाँ तक अरशद बजाल का सवाल है 58 रनों के लक्ष्य तक पहुँचने का, जहाँ तक सवाल है यंग फ्रेंड्स उरुआ का, तो अरशद बजाल की बेहतरीन शुरुआत यंग फ्रेंड्स उरुआ को बेहद ज़रूरी है. और खासकर दूसरे बल्लेबाजों को भी हाथ वहाँ पर बटाना होगा अरशद बजाल का. तो देखते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर जहाँ तक सवाल है टॉर्पेडोज काना का, तो इस वक्त उनके पास बलाढ्य गेंदबाजी का लाइनअप है. और देखते हैं ये है कि वो अपने बलाढ्य गेंदबाजी के लाइनअप के जरिए इस वक्त यंग फ्रेंड्स उरुआ के सशक्त बैटिंग लाइनअप को बांध कर रखने में यश प्राप्त करेंगे. लेकिन जहाँ तक टॉर्पेडोज काना के विजय का सवाल है, इस वक्त राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें अपने सशक्त गेंदबाजी के लाइनअप का इस्तेमाल एक बेहतर तरीके से करना है. अगर यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाजों पर उन्हें नियंत्रण प्राप्त करना है तो कुल मिलाकर ये दूसरा सत्र, सेकंड सेशन ऑफ दिस क्वार्टर फाइनल मैच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. काफ़ी दिलचस्प होगा. और इस उम्मीद अपेक्षा के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उरुआ की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, ऑल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे. थैंक यू. Thank you, DJ, and welcome back for the innings of young friends Urua. And 58 they have to score in the stipulated 8 overs if they wanted to qualify for the semi-final of the prestigious cricket tournament. And wait to see how well the batters will going to get the battle here. And opening pair is a little bit change in opening pair along with Arshad Bajal. Little bit surprisingly, the Rizwan is the batter. It came into bat along with Arshad Bajal. So it might be some kind of game plan here from the captain of Young Friends. Of course, Captain Sajid himself
He's thought that it's better for him to come down in the order. So, because they are having some little bit scarcity in that batting department, I want to say, because after Azim is missing in that playing 11 as he played for his home team, that might be the problem in the middle order for young friend Surua. So Sajid wanted to fill that gap. That's why it might be the game plan here to sending him in the open the innings here. And Arshad Bajal is a man in a good form. It will going to face Chetan. Around the wicket, right arm. Pass umpire Roland Pinto, the power play number 1. This time starts with the delivery. It is going to be a warm-up delivery from Chetan. A wide call by umpire. What an innings he played in the previous match. Arshad Bajal absolutely entertained the crowd with his entertainment innings of 41 runs. The quick-fired runs which came from his bat. If he managed to continue that similar batting here, I think that 58 will not going to be good enough for the Torpedoes. Chetan again. Short run up. Right arm over the wicket to Arshad. Just swept the ball very nicely into the deep square leg region. The protection is there in the deep areas. The fielder returns the ball quickly to the hands of wicket keeper. Ample time for the batter to complete the single. This is what we are watching in the screen. The field set here for now for the right-hand batter. And there is a fielder. Of course, they have to change that because left-handed combination. And for Rizwan, the fielder at deep long on, one at long off. They have given a protection in the deep in front of wicket. Different field set here for this time. Nicely played it down to mid-wicket, but protection is there in the deep. So it's not like that even the new face Rizwan for the batting department of young friend Surua. But Torpedoes Khana captain knows what the potential of this batter. So they knows that is the kind of batter Rizwan is very strong in front of wicket. So he's got a 2 protection in the deep in front of wicket. 3 in 2 balls. Outside the run of stamp. Second wide of this over. That shows the pressure what bowler is feeling. Even Chetan head to head between these two. Chetan taken plenty of times. He taken wicket of Arshad Bajal in the previous JD Trophy also. Chetan again. Around the wicket right arm. Again, Arshad Bajal knows that exactly. He doesn't want to continue the mistake what he did in that SVS Bantwal ground. So while trying for the big shot in the first delivery itself, he just wanted to hit the ball, Chetan. And the Chetan got him several occasions while Arshad is trying for the big shot. So he just wanted to rotate the strike. And that might be the game plan here from batter Arshad. Over the wicket, Chetan. Oh, lovely delivery, lovely delivery. This is the line what Chetan loves to ball to the right-hand batter. The different line, change of pace as well, slower one. 4 without loss of an wicket. Away from us, Chetan. Right arm over the wicket balls. This time I wanted to go for the reverse sweep. Going to complete the single. The fielder trying for the run out, but Chetan collects the throw from the fielder. 5 runs came from this over. He won 2 wides in this over by Chetan, but still he just avoiding the big shot in this over from this batter. 6 runs came from this over so far. Chetan. Appeal for leg before wicket, but shaping a little bit outside the line of leg stump. And leg by call by umpire. Great one there from Chetan. The first over which is comes to an end after completion of first over. It's 7 on the board. And what we are expecting from Arshad Bajal in this over, I've already mentioned different game plan from him. 2 wides and in that over. The 5 singles, 1 leg by as well. The 4 from the bat, 3 from the extra. Now just coming back to the equation. 58 is the target. 51 more runs required for the victory in 42 deliveries.
Thank you, DJ. For the next match, I request Sneha Malamar, all the players kindly request you to complete the signatures as soon as possible. 7 for 1, 7 without loss of any wicket correction. And Sharan brought into attack from the far end. The 51 required from 42 balls. This is the last over of the power play. So maybe the game plan here from Arshad Bajal that he wanted to target Sharan in this over. The long on is there. The fielder down at long off. Different field set, isn't it? In the previous over, the protection is in there in the deep square leg. But in this over, particular over, there is no deep square leg. The fielder at long on and long off. The short mid wicket, short square leg, very close together. Short third man, short fine leg, short third man. Very, very interesting field set and one at extra cover. Sharan from the far end. Round the wicket right now. This time it defeats the infield. Down to deep square. Chetan behind the ball. Excellent piece of fielding by Chetan in that occasion. Chasing the ball like a cat chasing a mouse. He's chasing the ball like a cat chasing a mouse and managed to get that one just inside the boundary line. The couple of runs which complete. Have a look at that. Almost like an international standard. Drags and managed to stop the boundary. 9 without loss of any wicket. Sharan again back to his bowling mark. Round the wicket. The pass umpire Mohan Iyadi. Oh, lovely shot. Have a look at that stroke. This is absolutely gorgeous. Have a look at this crowd. Needed such kind of applaud because the stroke is like that only, isn't it? What a fantastic stroke that one. Have a look at that. The quality in that stroke. The magnificent extra cover drive. 13 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Just like I mentioned about Arshad Bajal's game plan. The maturity, what you call, this is the maturity. Targeting the one bowler for the acceleration of the run rate in the power play. Here is Sharan again from the far end. Oh, this time very close, very close. Last moment, he's got a bat onto that. Look at that, how many fielders are having two hands to their head. One is a wicket keeper, one is a bowler, one is Ashwin at short third man region. They knows that this is a close one. If the batter will going to miss the ball, it's a close call for the umpire. That shows how important this wicket is going to be for the team, Torpedoes Ghana. 14 without loss of any wicket out of the strike now. Bajal. Now Rizwan will go to take the strike. Oh, beautiful leg cutter. Beautiful leg cutter. Sharan knows that this is the right time for me to get some dot ball here. New face, new opportunity for the batter Rizwan. For the huge team like Young Friends Surua. Sharan again. Oh, appeal flum, absolutely flum, no doubt at all. No doubt at all in that occasion. The ball is hitting him right in front of a middle end off stump. Sharan strikes. Sharan strikes. Just have a look at the replay. Oh, that was a flum, absolutely flum. Little bit extra bounce. The time of Rizwan is wanted to go for the drive. Thank you. And the captain now in the middle. Sajid, the man in excellent form.
to face Sharan from the far end. Right arm over the kitty balls. Oh, that was a glorious, fantastic delivery there from Sharan there to finish the over. The boundary and a couple of runs, but not more than that in this particular over. Good comeback by Sharan with the wicket as well. After completion of over number 2, it's 14 for loss of 1 wicket. Thank you, DJ, for 2 overs completed. The power play over. We are not witnessing any powerful stroke in that over. One exquisite extra cover drive, which is witnessed from the bat of Arshad Bajal for the boundary. But otherwise, a quiet cricket, isn't it? 14 for the loss of 1 wicket. 36 balls remaining now. 44 runs required for the victory for the team Young Friends Surwa. Shakir brought into attack to Bajal. Arshad. The ball down the leg side, but umpire taking his own time and called it wide with that extra scoreboard moves on to 15 for the loss of 1 wicket. Now Shakir absolutely taking the review here and asking umpire Roland Pinto, just I wanted to take a review of that ball and wait and see will it going to be a wide or not. Field umpire decision which is a wide, and wait and see what could be the decision from the third umpire. The decision which is pending of this wide call from umpire. The umpire have to see whether the ball is good enough to call the wide or is a fair delivery. It's a fair delivery. It's a fair delivery. Ball just came inside. Maybe just any part of that in the pitch was hitting, and then that little bit ball coming in inside the line. It's 14 for the loss of 1 wicket. For the loss of 1 wicket. Over number 2, which is completed, and third over, which is started. Arshad Bajal facing Shakir. Second time in this over. This time catch it is a call, but played it in the gap towards extra cover. Akram the fielder in the deep. In comes a throw and complete a couple of runs. Oh, there's overthrow. The overthrow going. Oh my goodness. Now I want to see how many runs umpire will go to give. It's absolutely disaster for the team of Tarpados Khana. 2 plus 4, 6 runs which is conceded.
two pass for 6 runs which is conceded. This is going to be a bonus run here for the team Young Friends Urua. So what happened in this particular previous delivery? Akram throws the ball. They're trying for the run out, throws the ball into the hands of wicket keeper, but ball is deflected from the batter, I think so. They went into the deeper, long on boundary for 4. The 6 gifted runs, I want to tell you. 4 gifted runs. 2 from the bat and 4 from the overthrow. And one more single added total with the single scope and was on 20 for the loss of 1 wicket. 21, correction. A lot of support which is coming for team Young Friends Urua. After their favorite team Gori Yangwa is out of the tournament. Then of course I've already mentioned every team has got their own supporters backing up their teams, lifting their spirit. Oh, this time Sajid for you. What a shot! But this time the fielder underneath it. From the deep backward one region, once again Sajid's favorite is not happy with himself. He thought it might be a boundary for that. Everyone thought it might be a boundary. Because no one watching, there is a fielder in the backward point region. Quickly the fielder in the deep backward point region, Aris, came across and fielded the ball just inside the boundary line. A couple of runs which is completed. 23 for the loss of 1 wicket. These two batter absolutely they are in a perfect touch. Catches a call this time. They are not going for the run. Asking for trouble. The Bashi, the fielder in the mid-off. Sajid just wanted to send that one just wide of the mid-off fielder, but fails to do that. Cuts it, set as a fielder. Lovely comeback here from Shakir. 2 dot ball back to back. Over number 3, which comes in and after completion of over number 3. It's 23 for the loss of 1 wicket. 30 runs required. 36. 35 runs required for the victory in remaining 30 balls. 9 wickets in hand for Young Friends Urua. Looks like the match is evenly poised. Thank you, DJ. 23 for the loss of 1 wicket, and the over number 4 is started. We're going to start from the far end, and the bowler brought into attack. Sharan, one who bowled well in the previous over. 6 runs conceded now. Arshad Bajal will going to take the strike. Sharan. Round the wicket. This time played it nicely in the deep square leg region. Imtiaz is a fielder in the deep square leg region. Just a single. Good fielding there by Imtiaz. This time he's not making a mistake here. He fields the ball very neatly in the deep square leg region. Picked it up and returns the ball quickly to the striker's end. One more single. 24 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. 34 required from 29. Sharan changing his angle, bowling over the wicket. Sajid wanted to go for the across the line. Luckily got a bat onto that last moment. One more addition to total addition of that single scope, and moves on to 25 for the loss of 1 wicket. What a match we are witnessing here. It's going to be anybody's game. 33. The required run in remaining 28 balls. Arshad back on strike now. All we can see that
excitement in the crowds. Again, lovely delivery, good keeping as well from Mansoor behind the wicket. Sharan is looking a different bowler today in this particular match. He's been outstanding. Holding is now and getting some good line and length. Not so easy to bowl against Arshad. Again Sharan. Again he wanted to go for one more, one of his favorite shot. It was enough. Almost ball is not in the zone of Arshad Bajal to play that powerful sweep shot. The Sharan did a great job so far in this particular over. 26 for the loss of 1 wicket. The over number 4 is in progress. 2 balls remaining and Sajid will going to take the strike. Oh, lovely, delicate. Shakir chasing the ball and the ball defeats him. Went into the fence for 4 runs. What a delicate touch that one from Sajid. Absolutely clever. He's absolutely a silent killer, I want to tell you. The way that he's doing the job, way that he's getting some unbelievable cricketing mind, I want to tell, cricket brain here. Using his mind, absolutely perfect. Just a touch, you have a look at that one. Even the short third man fielder there. The 2 fielders very close together. This time top edge, Akram underneath it. I don't know why Sajid is trying for that stroke after the boundary. He just wanted to get one more but faced the penalty for that. This is a huge wicket for the team Torpedoes Khana. After completion of over number 4 is 30 for the loss of 2 wicket. 28 runs required for the victory now. Remaining 24 deliveries. The 4 difference between run and ball. Najmal, the batter, is slowly walking towards the middle. And before the next over will going to start here, it's a time to change in commentary box as well. It's over to Gopi. And Gopi, what we are watching here is that Sajid that definitely is started to open up in the previous over. Got a boundary. But unfortunately, last delivery of the over is got out. And because of his wicket, I think Torpedoes Khana now just thinking about if they manage to get another one good over here, definitely they are in the game. But we cannot underestimate because Arshad Bajal is there in the middle. And joining him is one more experienced campaigner, Ajmal came to the middle. And definitely having these 2 batter, the match which is not yet over, definitely the team, young friend Surva, may be the favorite. But Torpedoes Khana have to work hard to win this match. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त टॉर्पेडोज खाना इस वक्त कमबैक करने का मौका उनके लिए ज़रूर है. हालांकि तख्ता ज़रूर यहाँ पर भारी लगता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा का. और इस वक्त पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो विकेट गिर चुका है साजिद का, वो विकेट कुछ हद तक ड्रॉबैक इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए साबित हो सकता है. लेकिन 24 गेंदे 28 रन अभी भी यंग फ्रेंड्स उर्वा कुछ हद तक बेहतर स्थिति में नजर आता है. और जब तक अरशद बजाल क्रीज पर मौजूद है, यंग फ्रेंड्स उर्वा के उम्मीदें बरकरार रहेंगे. और एक और बल्लेबाज, अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, अजमल का. तो देखते हैं यहाँ पर सतीश, अजमल और अरशद बजाल मिलकर बचे हुए 4 ओवर में क्या करते हैं. दाहिना तो मतलब अश्विन की गेंद, पहली गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, गेंद लगभग बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद जब तक शॉर्ट टर्म मिड विकेट पर फील्ड हो, 1 रन का इजाफा हो चुका. और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका. कुल मिलाकर 31 रनों पर 31 ऑन द बोर्ड, 27 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 23 डिलीवरीज. अजमल बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और अश्विन तमन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. विकेट कीपर मंसूर इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ. दर्शक मैदान पर इस वक्त लगभग भर चुके हैं. खामोशी के साथ मैच का मुआयना करते हुए इस बीच अश्विन तमन की गेंद, यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया. अजमल ने रन न लेना चाहा था लेकिन गेंद कुछ ज़्यादा तरीके से वो पुश कर दिया उन्होंने बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और फिर से एक बार अश्विन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. अजमल के लिए यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई क्विक पिच वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स. मंसूर ने डाइविंग लगाते हुए विकेट जरूर उखाड़े लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. और 2 बेहतर गेंदें अश्विन तमन इस वक्त फेंक चुके हैं. अब
the equation stands 21 balls left and now they have to score 27 runs more for victory. और निश्चित रूप से इस वक्त रनों के सख्त दरकार यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाजों को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों के दरकार टोर पड़ोस काना के गेंदबाजों को। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इन दो टॉप सीडेड टीमों के मैच में ये अभी भी कहना मुश्किल है कि मैच किसकी ओर पलट सकता है। मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है और दोनों टीमें इस वक्त विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए, और इस बीच अंपायर विकेटों को सही करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त अश्विन तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट अजमल के लिए। देखते हैं 2 डॉट गेंद लगातार खेलने के बाद अजमल अपने अगली गेंद पर क्या करते हैं। और अश्विन की ये गेंद अजमल के लिए इस वक्त इस गेंद को फुल टॉस, गेंद को फुल कर दिया है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अजमल की पारी पर पर्दा गिर चुका है और ये विकेट का पतन अजमल का निश्चित रूप से यंग फ्रेंड्स उमरुआ के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है। फुल टॉस गेंद थी लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली। और गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और अजमल अपनी टीम के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। 0 पर आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और निर्णायक मोड़ पर इस वक्त टोरपीडोस का यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुका। 31 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट्स डाउन एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 5 बैट्समैन। तो यहाँ पर कुछ हद तक इक्वेशन कठिन हो चुका है। पहले 4 गेंदों में अश्विन तमन सिर्फ एकमात्र रन अब तक प्रदान कर चुके हैं और 1 विकेट प्राप्त करने में भी सफल। और कुल मिलाकर गेंदें बाकी हैं अब 20 जबकि रन्स चाहिए 27। 27 टू गेट इन रिमेनिंग 20 डिलीवरीज। और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ अरशद बजाल जो कि एक छोर पर मौजूद इस वक्त एक बेहतर बल्लेबाज अपनी टीम के लिए वो निभाते हुए। और जहाँ तक नए बल्लेबाज का सवाल है तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद स्ट्राइकर एंड पर और अश्विन तमन्ना गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रिजवान, साजिद और अजमल ये तीनों बल्लेबाजों का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। वैशाख नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त अश्विन तैयार। यह गेंद इस बार वैशाख के लिए ऑन साइड पर गेंद को झलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, 4 डॉट बॉल्स इन ए रो। और अश्विन तमन्ना इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए। अब 19 गेंदें बाकी हैं और 27 रन और चाहिए विजय के लिए। 27 मोर रन्स नाउ दे हैव स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 19 डिलीवरीज। और इस बीच अश्विन अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त वैशाख जो कि सामना करने के लिए तैयार। और अश्विन की यह गेंद वैशाख के लिए। यह गेंद वैशाख ने गेंद को उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम अश्विन तमन्ना, जस्ट अ सिंगल रन ही कंसीडर्ड। और इस ओवर की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा टोरपीडोस काना आर नाउ बैक इन द गेम। अब इक्वेशन सीम्स टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट फॉर द बैटिंग साइड। इनफैक्ट इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए रिव्यू इस वक्त सौंपी गई है निर्धार लेने के लिए और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते। तो 18 गेंदें 27 रन, 27 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। और देखिए अंतिम गेंद पर किस तरीके से गेंद को स्ट्रोक्स खेलने में चूके थे। विकेट कीपर मंसूर के हाथों से गेंद चूकी थी लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को कोई रन यहाँ पर नहीं मिला। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त क्लोज एंगल में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गेंद को उछालने के प्रयास में चूके थे और विकेट कीपर के हाथों में इस वक्त गेंद पहुंच चुकी थी। तो शायद गेंद का डिफ्लेक्शन हुआ या नहीं ये देखना पड़ेगा। और 18 गेंदों पर अब चाहिए 27 रन विजय के लिए। 27 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। और अरशद बजाल के पास इस वक्त स्ट्राइक है और देखते हैं ये गेंद पूर्ण हुआ या नहीं ये देखना पड़ेगा। तृतीय अंपायर इसका निर्धार करेंगे। तो अगर तो ये गेंद अगर वाइड होता है तो एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर, अगर नहीं होता है तो ओवर पूर्ण हो जाएगा। तो इस वक्त देखते हैं क्या क्या होता है और तृतीय अंपायर इसका निर्णय यहाँ पर लेते हुए। इट्स अ वाइड, द डिसीजन केम फ्रॉम द थर्ड अंपायर। तो एक गेंद अभी भी बाकी है। नाउ 26 टू गेट फ्रॉम 19 डिलीवरीज। और एक वाइड का बहुमूल्य रन उनके खाते में जुड़ चुका है। अब 26 रन चाहिए, 19 गेंदें बाकी। और इस वक्त वैशाख का सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त अश्विन अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए निस्संदेह यंग फ्रेंड्स रुआ को इस वक्त अरशद बजाल की उपस्थिति उनके लिए बेहद ज़रूरी है इस वक्त। और इस बीच अश्विन
गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंद की परीक्षा करने के बाद गेंदबाज वैशाख गेंद को इस वक्त गेंदबाज के हाथों में लौटाते हुए और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर अश्विन तैयार था ना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार वैशाख के लिए फैंटास्टिक डिलीवरी एंड अगेन अ फैंटास्टिक ओवर केम टू एन एंड जस्ट 2 runs came from this over 18 balls left 26 runs required कुछ हद तक कठिन जरूर लक्ष्य लेकिन अरशद बजाल जब तक मौजूद है जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा की उम्मीदें इस वक्त बरकरार तो पिछला ओवर जो था अश्विन तम का काफ़ी बेहतरीन था सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए 1 रन बैट की बदौलत जबकि 1 रन अतिरिक्त के रूप में अब देखते हैं हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए शायद चेतन के हाथों में गेंद है वो नया ओवर इस वक्त शुरू करेंगे और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त अरशद बजाल दर्शक देर रात के बावजूद दर्शक इस वक्त मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए और वो जानते हैं यहाँ पर टॉप सीडेड टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है मंगलोर के इस मैच के बाद एक और 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच मैच खेला जाएगा एनएम मैंगलोर का मुकाबला होगा स्नेहा मालेमार के साथ तो निश्चित रूप से एक भरपूर क्रिकेट यहाँ पर इस स्वराज्य मैदान पर हमें देखने को मिल रहा है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एमएससी ट्रॉफी 2025 which is proudly presented by Moodbidri Sports Club the celebration of their 35th year they are organizing this fantastic tournament under floodlights और इस बीच चेतन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अरशद बजाल इस वक्त सामना करते हुए चेतन की गेंदों का और ओवर की पहली गेंद लेकर चेतन इस वक्त तैयार तैनात राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए उस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और इस वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड नाउ 25 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 18 बॉल्स चेतन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल के लिए ये गेंद अरशद का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर सुनाई देते हुए अरशद बजाल जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका जब तक क्रीज पर मौजूद है यंग फ्रेंड्स उर्वा के विजय की उम्मीदें बरकरार और यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर गेंद को चला था एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक और इस छक्के की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा आर नाउ बैक इन द गेम नाउ इक्वेशन स्टैंड्स 19 द बॉल रिमेनिंग 17 19 रनों की दरकार बचे हुए 17 गेंदों पर क्या लाजवाब स्ट्रोक इस वक्त था गेंदबाज अरशद बजाल का और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार चेतन छक्का प्रदान करने के बाद अगली गेंद यह गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला लेकिन फील्डर मौजूद गली पर जस्ट अ सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 40 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट अरशद बजाल इस वक्त उम्मीद के किरण यहाँ पर नजर आते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए और जहाँ तक टॉर्पेडोस काना को कम बैक करना है तो यहाँ पर अरशद बजाल का विकेट उखाड़ना उनके लिए बेहद ज़रूरी बन चुका है फिलहाल इस वक्त सामना करते हुए वैशाख और 16 गेंदें बाकी हैं 18 रन और चाहिए विजय के लिए और मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त चेतन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज वैशाख के लिए यह गेंद इस वक्त हल्के से गेंद को बोलना चाहा गेंद पहुंची थर्ड मैन पर लेकिन 1 रन जरूर मिला और वैशाख ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं ये खुशी की बात है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए कि अरशद बजाल स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज इस वक्त चेतन दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल के लिए और अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार चेतन की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाहा विकेट कीपर चूके रन इस बच्चे नहीं मिलेगा बेहतर गेंद इस वक्त चेतन की और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर 41 ऑन द बोर्ड दैट मींस 17 रन्स स्टिल रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 14 डिलीवरीज और इस बीच अरशद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त चेतन गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार और अरशद इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग से बाहर की ओर निकलते हुए और इस बार वाइड का इशारा स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर और जैसे ही अरशद कुछ सफल हुए गेंदबाज ने लेग से बाहर की ओर गेंद इस वक्त फेंक दी थी वाइड का इशारा 1 रन का इजाफा 42 ऑन द बोर्ड 16 required from 14 deliveries. What a match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. और गेंदबाज इस वक्त तैयार
चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट अरशद बजाल के लिए ये गेंद इस बार बल्ले ओह फाइन इट्स गॉन फाइन एंड इट्स गॉन नाउ विद द फेंस फॉर अ बाउंड्री द मैच इज नाउ टोटली टर्न्ड दिस इज गॉन फाइन आफ्टर बीटिंग द थर्ड मैन फीडर और शाकिर डाइविंग लगाने के बावजूद गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए 46 ऑन द बॉल नाउ 12 required and the ball remaining is 13 and this is turning out to be a fantastic over in young friends Urva's point of view अब ऐसा कहना पड़ेगा निश्चित रूप से कमबैक करना है तो यहाँ पर लगातार डॉट गेंदों को फेंकना होगा काना के गेंदबाजों को और अगली गेंद लेकर चेतन इस वक्त तैयार ये गेंद इस बार टॉप एज ओह फील्ड शॉट ओवर शाकिर रन के लिए दौड़ पड़े अरशद बजाल 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं 1 रन एडेड हालांकि गेंद हवे में जरूर थी लेकिन शॉर्ट फाइन लेग फील्डर शाकिर के आगे टिप्पा खाती 1 रन का इजाफा नाउ 47 द स्कोर 11 रिक्वायर्ड 12 balls remaining और सतीश निश्चित रूप से फैंटास्टिक ओवर 16 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर इनफैक्ट इट्स 16 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर आई थिंक सो 15 runs I think 15 runs scored in this over and because of this over I must say young friends Urva are now back in the game. Exactly, Gopi. From the point of view of this particular match is concerned, the previous over, Gopi, it's definitely going to be a huge one for the young friends Urva. The one boundary which is came from the 6 which came from the bat of the batter. Arshad, absolutely they disturbed the concentration of the bowler. After that he bowled some wide deliveries and one extra which is coming into the boundary, Gopi. That will going to become the bonus as well. Altogether, Gopi, Arshad Bajal today is playing a different the game. Not like he's hitting each and every ball, but we can see that maturity in this particular match that's shown by Arshad Bajal. He's been outstanding. But Gopi, the match is not yet over, isn't it? 11 to get from 12 balls. If 1 over here, Ashwin who bowled a fantastic last over. If he managed to get another good over here, this match is going to be more interesting. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है पहली गेंद और जैसा कि आपने फरमाया सतीश एक बेहतर ओवर की जरूरत है और इस वक्त पहला बेहतर गेंद अश्विन इस वक्त फेंक चुके हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब 11 गेंदें बाकी 11 रन चाहिए और अश्विन एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा सिर्फ 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 48 रनों पर निश्चित रूप से यंग फ्रेंड्स उर्वा के डगआउट से शोर इस वक्त सुनाई देता हुआ और जहां तक सवाल है अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट तो एक खिलाड़ी को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा वैशाख इस वक्त सामना करते हुए और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार अश्विन तमन्ना गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज वैशाख के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद ये गेंद इस वक्त वैशाख के लिए गेंद को खेलना चाहा गेंद पहुंची इस वक्त छोटे तर्जमान पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और वैशाख के सामने ये मुद्दा ठहरता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक वो अरशद बजाल को दे क्योंकि अरशद बजाल की नज़रें यहाँ पर जम चुकी हैं 25 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हैं बैटिंग ऑन 25 इंक्लूडिंग 1 बाउंड्री और 2 बाउंड्रीज एंड 1 6 इनफैक्ट व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक कमिंग फ्रॉम अरशद बजाल और निश्चित रूप से टॉर्पेडोज खानों को इस वक्त अरशद बजाल का विकेट यहाँ पर उखाड़ना होगा अगर उन्हें कम बैक करना है तो अश्विन दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अरशद के लिए एक बार फिर से पूरी तरह फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त तैयार अश्विन की गेंद है यह गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 50 रन 50 कम्स अप फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा 50 कम्स अप 8 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 8 और अश्विन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त वैशाख के लिए हल्के से गेंद को खेलना चाहा गेंद पहुंची गली की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल नाउ 51 द स्कोर 7 रिक्वायर्ड फ्रॉम 7 डिलीवरीज और अंतिम गेंद बाकी और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर क्या अरशद बजाल स्ट्राइक रोटेट करते हैं क्या आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं देखना पड़ेगा और देखने वाली बात यह भी है कि अश्विन तमन इस अंतिम गेंद पर किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अश्विन तमन्ना दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल एक बार पूरी तरह अपने हाथों को मिट्टी से घिसने के बाद इस वक्त तैयार अश्विन तमन की गेंद का सामना करने के लिए इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर और 1 रन का इजाफा 6 ऑफ 6 5 रन केम फ्रॉम अश्विन ओवर और मैं कहूंगा सतीश अंडर प्रेशर इस वक्त अश्विन ने इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी की है सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए हैं अब अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 6 रन चाहिए अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा सतीश द बैट स्टिल स्टैंड्स इन अ बैलेंस Absolutely, Gopi. The match which is still in balance.
and the way that Ashwin is bowled this over has been outstanding. But calculation is there, Gopi. There was some kind of calculation from Arshad Bajal and batter in the middle. Vaishak, and they calculated because they know that Ashwin's over, they have to handle very well. Just a rotation of strike is good enough for them because they will going to face last over the new bowler that Tarpon is going to have to introduce. A new bowler in the sense, Gopi, Aris, definitely in the previous tournament when the team JD Boy in the JD Boys tournament team Tarpon become the champion because of Aris. Every time in the last over he bowled well, and this is one more opportunity for Aris to showcase his talent to handle how well he will going to handle the pressure. Here, Gopi, 6 runs. 6 runs you have to depend from last over, and wait and see how Aris will go to depend this last over. But I think, Gopi, just a sensible batting which is required here from the used to batter to get the remaining 6 runs to win this match. Altogether, Gopi, it's a fantastic the match is in progress between two very good teams. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर एक बेहतरीन मैच प्रगति पर 6 गेंदों में 6 रन चाहिए। एरिस के हाथों में गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है, और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, इस वक्त एरिस में काबिलियत है इस बल्लेबाज को रोक कर रखने की, लेकिन यहाँ पर उनके सामने है अरशद बजाल। उनको अगर रोक कर रखना है तो कुछ विशेष रणनीति टैक्टिक के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी होगी। 6 गेंदे 6 रन चाहिए। 6 of 6, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट बॉल कम्स, एरिस दाहिने हाथों पर विकेट, अरशद के लिए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा अपील, लेकिन गेंद लेग से बाहर। इम्तियाज तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे, 1 रन इस विकेट पूर्ण करने में सफल, और 1 रन के साथ लेग बाय का इशारा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 53 रनों पर। 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। दोनों टीमों के प्लेयर्स डगआउट में इस वक्त हलचल इस वक्त मची हुई है, और निश्चित रूप से दबाव इस वक्त न सिर्फ खिलाड़ियों पर बल्कि समर्थक सपोर्टर्स के ऊपर भी इस वक्त बढ़ता हुआ हर गेंद के साथ। और वैशाख इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एरिस इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और जहां तक सवाल है तो इस वक्त गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बीच एरिस गेंदबाजी करते हुए, स्क्वायर लेग का फील्डर शाकिर इस वक्त फील्डिंग में कुछ जमावट करने के बाद वापस अपने स्थान पर जाते हुए। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। दाहिने हाथों पर द विकेट। इस वक्त एरिस की गेंद अविशाख के लिए, यह गेंद इस बार शेयर करना चाहा चूके, और इस बार डॉट गेंद होता हुआ हाफ माइंडेडली गेंद को शेयर करना चाहता, लेकिन ऑफ कटर गेंद बेहतर तरीके से एरिस ने फेंके थे, और आखिरकार इस वक्त इस गेंद को शेयर करने के प्रयास में चुके तो अंपायर ने इशारा किया कि एक बार फिर से दे आर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट। तो 4 गेंदे अब बाकी और रन चाहिए 5। तो जहां तक सवाल है इस वक्त अरशद बजाल इस वक्त कुछ कहते हुए बल्लेबाज वैशाख से कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए। 4 गेंदे 5 रन, 4 for tie, 5 for win। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, एरिस इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। मंसूर इस वक्त जो मिड ऑन पर खड़े हुए थे इस वक्त जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का, तो वैशाख एक डॉट गेंद खेलने के बाद सहज रूप से कुछ हद तक दबाव उनके ऊपर जरूर नजर आता हुआ, लेकिन कम बैक करने का मौका जरूर है उन्हें इन बचे हुए 4 गेंदों में। 4 गेंदे 5 रन चाहिए विजय के लिए, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन मैच ऑफ द टूर्नामेंट इस वक्त यहाँ पर प्रगति पर। तो काफी लंबा समय इस वक्त बीत चुका है। 2:05 को यह मैच शुरू हुआ था। अब वक्त है 3:43, यानी 1 घंटा 41 मिनट यहाँ पर बीत चुका है इस मैच में। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट। इस वक्त ये गेंद वैशाख के लिए, ये गेंद को इस वक्त हल्के से मोड़ दिया वैशाख ने स्क्वायर लेग पर, शाकिर गेंद तक पहुंचते हुए बल्लेबाज को मिलेगा, दूर रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन पूर्ण कर चुके हैं। 2 runs added to their total. This is an absolutely fantastic piece of batting performance, running performance in fact from the both बैट्समैन। और जहां तक सिर्फ 1 रन बनाना चाहिए था, शाकिर कुछ तक थोड़े से धीरे से थे, और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, देखिए किस तरीके से हुआ था। 2 रन बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दोनों बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। और अब रन बन चुके हैं 55। 3 रन चाहिए, 3 to get फ्रॉम 3 डिलीवरीज। और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए एरिस इस वक्त वैशाख के लिए, यह गेंद धीमी गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, सेंसिबल एरिस पहुंचते हुए थ्रो पहुंचा, निशाना चूका इस वक्त, और बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके। अब अरशद बजाल इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। 2 गेंदे 2 रन चाहिए, और निश्चित रूप से यहां पर दूसरी निर्धारित गेंद इस वक्त एरिस फेंकने के लिए तैयार अरशद बजाल के लिए, और निश्चित रूप से
अरशद बजाल के दिमाग में कशमकश इस वक्त ज़रूर चल रही है कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाई जाए, क्या स्ट्राइक रोटेट किया जाए, क्या कुछ तक आक्रामक स्ट्रोक खेला जाए। और देखते हैं उसका जवाब इस गेंद के बाद हम सबको यहाँ पर मिलेगा। तो इस वक्त आरिस गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दबाव ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ನಿಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕಾಗು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು प्रेक्षक दयविಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕು। तो इस वक्त 2 गेंदें बाकी 2 रन चाहिए विजय के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर न सिर्फ खिलाड़ियों पर दबाव बल्कि दर्शकों पर भी दबाव इस वक्त यहाँ पर बढ़ता हुआ। और इस बीच आरिस तैयार अरशद बजाल के लिए और इस वक्त 2 गेंदें 2 रन चाहिए। 2 of 2, here we go, दाहिने हाथों पर विकेट, again square, oh this time, oh brilliantly taken by the fielder at cover point. This is an outstanding catch taken by the cover point fielder. शरण ने जो फील्डर थे ऊपर के छलांग लगाई, पहली प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से चूकी लेकिन दूसरे प्रयत्न में गेंद को लपकने में सफल। और इस बेहतरीन कैच की बदौलत हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय कवर फील्डर शरण, डाइविंग लगाकर दूसरे प्रयत्न में गेंद को लपकने में सफल। और इस बेहतर कैच की बदौलत विकेट गिर चुका है। तो सतीश निश्चित रूप से बेहतरीन कैच शरण ने लिया, तब मैच एक बार फिर से बराबरी पर आकर रुक चुका है। What a catch, Gopi! Absolutely fantastic catch because the ball went like a tracer bullet, isn't it? The ball is immediately when the ball is left the bat of Arshad Bajal, the little time for the reaction for the fielder Sharan there. He got a hand onto that, but I think is absolutely good, very lucky indeed because ball is not far away from that fielder, and in the second attempt he completed the catch. Ali ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆ ಇರುವವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what a fantastic catch, Gopi. Catches win the matches, which is the greatest slogan in cricket. Now Gopi, 2 to get from 1 ball. 2 to get from 1 ball. New batter coming to the middle, and that means the team Tarparas are now happy to see how to ball to that new batter, but you cannot underestimate this man. He has got a lot of experience, and wait and see how well he will going to take this last ball of the over. बिल्कुल सतीश, अंतिम गेंद बाकी, 2 to get, 1 for tie, 2 for win। आरिस तैयार, राजेश तैयार, दर्शकों की इस वक्त चीखें तैयार। और इस बीच ये गेंद राजेश के लिए खेल दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा, द मैच नाउ एंडेड इन अ टाई। निश्चित रूप से बेहतरीन मैच सतीश, और आखिरकार यह मैच टाई पर समाप्त हो चुका है। अंतिम गेंद पर 6 गेंदों में 6 रन बनाने थे, और अंडर प्रेशर ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, आरिस ने एक बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर की है। Exactly, Gopi. How many times he did that job, isn't it? In the JD Trophy also, every time when his team is required some restriction in the last over, he absolutely is taking that responsibility and produce that over. Here also, Gopi, it's not so easy having Arshad Bajal in the other end and having him in the strike and taking his wicket. Of course, I had to give a special thanks to Sharan for that wicket, because the way that he handled that catch has been outstanding. Altogether, Gopi, it's a great match which is comes to an end. One of the best match of the tournament as well. The crowd definitely they enjoyed in this particular match. But now it's a super over, Gopi, and wait and see which team will going to handle the pressure in this super over.
ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು राइट द सुपर ओवर इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट और यंग फ्रेंड्स इस वक्त पहले बल्लेबाजी करता है और देखते हैं इस वक्त इस सुपर ओवर में कौन सी टीम विजयी होकर इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज साजिद और अरशद बजाल इस वक्त मौजूद है। निश्चित रूप से एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन अरशद बजाल ने दिया था और अगर वो कवर पॉइंट पर शरण ने उस बेहतरीन कैच को नहीं लपका होता तो शायद यंग फ्रेंड्स यहाँ पर विजय दर्ज कर लेता, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद नहीं था डीप पर, लेकिन भाग्य टॉर्पेडोस काना के साथ था। इस वक्त सुपर ओवर में देखते हैं यहाँ पर यंग फ्रेंड्स के बल्लेबाज कितना रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। गेंदबाज इस वक्त शरण के हाथों में गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा गया है और इस वक्त अरशद बजाल सामना करने के लिए तैयार। साजिद इस वक्त नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद, सब कुछ तैयार। इस वक्त पहली गेंद लेकर अंपायर ने इशारा किया कि सुपर ओवर की शुरुआत हो, तो पहली गेंद लेकर इस वक्त शरण दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अरशद बजाल के लिए पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद अरशद बजाल ने गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, शाकिर का थ्रो इस वक्त विकेट को विकेट कर ले जाता हुआ, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ एक रन प्राप्त करने का। बेहतर गेंद थी इस वक्त शरण के लगभग जमीन के सहारे आते हुए और विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया। जब तक शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा हो चुका है। 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और इस बीच जहां तक सवाल है तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर इसका क्या निर्धार यहाँ पर देखते हैं। तो डायरेक्ट हिट इस वक्त शाकिर का लगा था और जब तक शाकिर का थ्रो टकरा था, नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। तो एक रन उनके खाते में जुट चुका है। साजिद इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और शरण ने इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंपायर विकेटों को सही करते हुए, दर्शक इस वक्त खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, निश्चित रूप से एक हाई वोल्टेज मैच टाई में समाप्त हो चुका है पिछला मैच। और यहाँ पर देखते हैं सेमीफाइनल प्रवेश प्राप्त करने का सौभाग्य कौन सी टीम को हासिल होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही साजिद स्ट्राइक पर आए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और गेंदबाज इस वक्त शरण गेंदबाजी के लिए तैयार। कुल मिलाकर दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। देखना यह कि बल्लेबाज साजिद के दिमाग में क्या कश्मकश इस वक्त चल रही है कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए। खासकर सुपर ओवर में ब्लाइंड बल्लेबाजी अपनाई जाती है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को। और यहाँ पर देखते हैं साजिद क्या करते हैं शरण की गेंदों का। और शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, यह गेंद इस पर साजिद ने गेंद को डाला लॉन्ग ऑफ पर, बासित ने इस कैच को लपक लिया है। फैंटास्टिकली टेकन बाय बासित एट वाइड लॉन्ग ऑफ। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द वाइड लॉन्ग ऑफ फील्डर। साजिद का स्ट्रोक बेहतर था, लेकिन बासित जो फील्डर थे वाइड लॉन्ग ऑफ पर लगभग 12 से 15 कदम उन्हें दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को इस वक्त लपकने में सफल। देखिए किस तरीके से होता है, लुक एट दिस इन द रीप्ले। और गेंद इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक लिया गया है। फैंटास्टिक कैच टेकन बाय बासित। और अब सिर्फ एक विकेट उनके लिए सुरक्षित। और यहाँ पर देखते हैं इस बचे हुए एक विकेट की मदद से 4 गेंदों में यहाँ पर और कितने रन यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज बटोर पाते। तो अरशद बजाल इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ अजमल। और 4 गेंदें इस वक्त बाकी और शरण 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और
दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अजमल सामना करने के लिए तैयार। निश्चित रूप से अजमल एक चतुर क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या वो आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं, क्या एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। और स्ट्राइक अरशद बजाल को देखते हैं, देखना पड़ेगा। और शरण अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अंतिम जोड़ी मैदान पर यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए और शरण की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। अजमल ने डीप फाइनल की दिशा में एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। 2 on the board for losing 1 wicket and now Arshad Bajal is now back on strike। 3 गेंदें इस वक्त उनके पास है और इन 3 गेंदों में कम से कम एक या दो चौका भी अगर लगाते हैं तो कम से कम एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज शरण का जहाँ तक सवाल है, इस वक्त अरशद बजाल का विकेट उखाड़ना है। तो देखते हैं यहाँ पर अरशद बजाल जो इस वक्त उम्मीद की किरण यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए बन चुके हैं, इन 3 गेंदों में कितने रन न बटोर पाते हैं। निश्चित रूप से अरशद बजाल चौके और छक्के की इस वक्त तलाश में, अगर एक छक्का भी लगा लेते हैं तो उनके लिए इस वक्त प्लस पॉइंट कहलाएगा। और इस बीच शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अरशद बजाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त शरण की गेंद को मोड़ दिया, गेंद पहुंची इस वक्त फाइनल की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, लेकिन दूसरा रन लेना नहीं मुनासिब समझा उन्होंने और इस बीच एक रन का इजाफा। सो 4 fantastic delivery bowled by Sharan in this over and now 2 balls left, 3 on the board, 1 wicket down। और इस बीच शरण गेंदबाजी करेंगे अजमल के लिए और देखते हैं अजमल इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद इस वक्त अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और मंसूर इस वक्त आकर कुछ समझाया उन्होंने गेंदबाज शरण को गेंदबाजी के बारे में। और इस बीच शरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजमल इस वक्त सामना करते हुए और शरण की ये गेंद को अजमल ने इस वक्त गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, पकड़ाओ भी स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद तेजी के साथ संभलते हुए इस वक्त गेंद को वो फील्ड करने में सफल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर। 4 on the board, 1 ball left। और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर अरशद बजाल क्या इस वक्त करते हैं। तो छक्का निश्चित रूप से उनके दिमाग में, कम से कम चौका तो उन्हें इस वक्त लगाना होगा। और जहाँ तक शरण का सवाल है, इस अंतिम गेंद को उन्हें डॉट करना होगा इस वक्त। तो देखते हैं इस वक्त इस अंतिम गेंद पर कौन से खिलाड़ी बल्लेबाज या गेंदबाज को इस वक्त अंतिम गेंद पर विजय दर्ज करना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है, इस वक्त अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला दिया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त इस गेंद पर देखते हैं बल्लेबाज इस गेंद पर जीते हैं रन बनाने के बाद या फिर गेंदबाज डॉट करने के बाद विजय दर्ज करते हैं। तो इस बीच अंतिम गेंद लेकर तैयार शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल के लिए ये गेंद इस वक्त अरशद ने गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन परफेक्टली, गुड डिलीवरी फ्रॉम शरण। सो दैट्स इट, 5 runs scored by young friends who are for losing 1 wicket and in fact they're looking for the second but they won't get it। So 5 runs scored by young friends Urva in their 1 super over and now the target for Torpedoes Khana is 6 they have to score for victory with the help of 2 wickets in super over। और सतीश आइए यहाँ पर दूसरे सुपर ओवर के लिए आपको इस वक्त बुलाते हैं। 6 रन बनाने हैं और लक्ष्य उतना मुश्किल नहीं लेकिन उतना आसान भी नहीं क्योंकि सिर्फ 2 विकेट उनके पास बाकी है। और खासकर टॉर्पेडोज खाना के लिए जो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर उतरेगा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू जस्ट वॉच इट। और देखते हैं यहाँ पर 6 रन टॉर्पेडोज खाना बना 7 रन टॉर्पेडोज खाना बना पाता है, माफ कीजिए 6 रन बनाने हैं, 6 रन टॉर्पेडोज खाना बना पाता है या नहीं। तो सतीश आप क्या समझते हैं, क्या 6 रन टॉर्पेडोज खाना बना पाएगा? और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, यंग फ्रेंड्स उर्वा की ओर से कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करेंगे ये भी देखने वाली बात है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस द्वितीय सुपर ओवर का सत्र हमारे लिए एक बेहतरीन होगा। और देखते हैं जो भी विजय होगा, विजय तो उनको मिलेगी लेकिन क्रिकेट हमेशा यहाँ पर विजय रहेगा। और एक निस्संदेह बेहतरीन पैसा वसूल मैच यहाँ पर हम देखते हुए, पैसा वसूल मैच हमने देखा और पैसा वसूल सुपर ओवर इस वक्त हम देखते हुए निश्चित रूप से इस दूसरे सुपर ओवर में हम निश्चित रूप से एक बेहतरीन, निस्संदेह हम एक बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। तो माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Thank you, Gopi. Just like you mentioned about लक्ष्य इतना बड़ा नहीं और निर्लक्ष्य भी नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य छोटा है तो भी निर्लक्ष्य नहीं कर सकते क्योंकि ये सुपर ओवर है, सिर्फ 2 विकेट में ये 6 रन बनाना है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट गोपी, द सुपर इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, isn't it? If young friends who manage to get a wicket in the first 2 deliveries, then pressure straight away into the
Torpedoes Kana, because one wickets in hand, they have to keep in the wickets and wicket in hand. That same thing has happened for Young Friends Surwa as well, because they lost the first wicket quickly, the wicket of Sajid. Now after that, what happens? That it's very difficult for them to hit the big shot, because the losing wicket means they are absolutely losing remaining deliveries. That's what the pressure on that remaining deliveries in that super over. That's why even Arshad Bajal is also, they couldn't manage to play that one freely, that super over. Anyhow, Gopi, Sharan is the bowler. He's handled the pressure very well in that super over. The way that he's managed to handle the pressure, even though need to appreciate the captain Bashit, just asking Sharan to go and bowl that super over. But he is not disappointed the addition of his captain. He bowled really very well in that super over. Now Bashit and Shakir, the two batters out there in the middle. Just 6 runs required from 1 over. And Arshad Bajal, I think it's the right choice. This is the right choice from the captain of the side to get him, Arshad Bajal. Because he's a kind of bowler. He can surprise with some extra deviation, extra turn in the delivery. And what happens in this super over, when you are required 6 runs to win the match, if you manage to bring the bowler who can bowl along the carpet, these two batters is so good in that getting that the 6 runs by sweeping the ball and getting the ball here and there, they can get the 6. But if a turning deliveries, and definitely it's going to be a little bit difficult, because the wait and see how Arshad Bajal will going to justify his captain decision to bowl this super over. Altogether, 6 to get from 6 ball. It's going to be more interesting. This is just like action replay of the previous innings, Gopi. The same thing has happened. 6 balls, 6 required. Then Harris came into a ball, and Young Prince Urwa is batting at that time, and Harris did the job for the team. Now, Arshad Bajal have to ball here, and he have to defend that 6 runs from last over, super over. Signal came from umpire. It's going to be a start of the innings of team Torpedoes Khana, and Arshad Bajal will go into ball to Shakir. Left arm around the wicket, he balls. The first ball, taps the ball down to the cow point region for a single. 1 in 1, 5 required from 5. Now Bashit, usually, he's a kind of batter. He loves to hit the ball. He's a stroke maker. And wait and see, can he wanted to continue what is a natural instinct, that is stroke making, or it is he wanted to rotate the strike. Wait and see. Arshad again. Balls. Oh, that might be a huge one. Down to deep third man region. Wide call by umpire. And stopped by the fielder, but it's a 3 valuable runs. Now pressure is off. And have a look at the dugout of Torpedoes Khana. Now they're realizing that only 2 runs required for the victory. A huge mistake there from Arshad Bajal. Getting that ball, wanted to get the ball away from the bat of Bashit. Gone far outside the run of off. Now they're bringing all the fielders inside. Now 2 magical delivery required, Gopi. 2 magical wicket taking delivery required. Otherwise, team Torpedoes Khana will going to win the match easily. Oh, that's edging it down. That's it. The winning run coming here. They won this match comprehensively in the super over. The Torpedoes Khana, they're through to the next round of this prestigious cricket tournament, defeating Young Friends Urwa in a super over. What a match here witnessed. Young Friends Urwa, once again, it's not able to handle the pressure again when it's 6 required from 6 ball. Everyone thought it might be a game for Young Friends Urwa. But in the super over, Sharan is the man. He bowled well. And after that, these 2 batters complete the job. Congratulations for Torpedoes Khana. Hard luck, team Young Friends Urwa. They fought hard, but not good enough to win this match.
Thank you, DJ. The previous match is the man of the match, which is goes to, of course, is a tough choice because super over and the bowler one who responsible for taking that match into the super over. It's Ashwin of Torpedoes Khana, who judged as a man of the match for his outstanding 2 overs. Thank you, DJ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಶರಣ್. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಬದಿಯ ಮೈದಾನಿಗೆ ಯಾರು ತೆರಳಬಾರ್ದು. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. Thank you, DJ. Welcome back for the match between NM Cricketers Mangalore versus the team Sneha Malamar. Winning the toss, elected to ball first, and NM Cricketers Mangalore elected to ball first, and opening batters for Sneha Malamar are in the middle. Yatin and Gitesh, the opening batters, came into bat here. And the first ball. Little bit shaping towards a leg stump and outside the leg stump, and Gitesh, the managed to play that on down to square leg region for an easy single. And Mujib, the bowler, brought it attack from the far end for the first over, the power play over. The fielder down at deep fine leg, and one at the fielder down at deep third man. It's a very interesting field set here. No one there in the
Deep third man and deep fine leg of the fielders are in the deep. Reverse sweep comes into play. Played it very nicely in the gap, and a couple of runs which is completed before throw which is came from the fielder in the deep. With that couple of runs, Scooped moves on to 3 on the board. 3 without. 3 without loss of any wicket. Mujib again. Outside the run of off stump, Athin wanted to go for the drive and went for the quick single before the fielder from short cow point region, Faisal, will go into field that one. Ample time for the batter to complete the single. With that single, Scooped moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Outside the line of off stump and the fire delivery. Well, inside the line of the frame line. That ball is coming into the batter. Jitesh misjudged that line of the ball and no run scored. Mujib again. To Jitesh. Drives that one down to bit off. They're going for the quick single. And managed to complete that single as well with that single scope. But moves on to 4 on the board. 5 lip correction, 5 without loss of any wicket. So steady start from this opening batter for Sneha Malamar. So far, Mujib is also keeping that good line and length, not given any room for the batter to go for the big shot. And again, nicely pedaled that one down to short fine leg region. Rashid Baba, the fielder at short fine leg, fields the ball. And the first over which is comes and steady start from the opening batters of Sneha Malamar is 6 without loss of any wicket. Atif brought it attack to bowl the second over of the power play. Deep square leg and the fielder down at deep long on. The fielders in the deep in the onside region for Yatin. Oh, lovely delivery. Flum in front of wicket. Flum in front of wicket. Yatin, even is surprised with the addition of umpire Mohan Iyadi. But just have a look at the replay. Oh, it's a back footer right in front of middle stump. Absolutely perfect delivery came from the hands of Atif. Slow over one. Managed to read the slowness of the delivery. It's a little bit early into that push. Misses the line completely. And no chance for him to survive from the addition from the umpire. So 6 for 1. Sneha Malamar. The new batter Prithviraj. So walking towards the middle, the number 3 position. Sneha Malamar. How to bat sensibly if they wanted to put some good target in front of NM Cricketers Mangalore. The previous match, it's a close encounter between two good teams. Oh, one more beautiful delivery. Perfect one. Very luckily in the last moment, Prithviraj has got a little bit bat onto that. Tried to work set on the onside region. But Atif bowled an excellent one in the negation. 7 for 1. 8 for 1. 7 for 1. Lip correction. Atif. Gitesh Drives doesn't get hold up that stroke properly. Just wanted to go for his favorite extra cover drive. But because of that slower one there from Atif, quite a different bowling from Atif. Is not bowling quick, but he's just maintaining that line and length with that leg cutter. Again, lovely delivery, beautifully bowled. Holding that line very well.
The consistency we can see that from Atif in the particular over as he keeps the batsman quiet. 8 for 1. Drives, nice looking drive towards the long off Tawfiq. There in the deep long off fields the ball. One more addition. 9 for 1. Atif once again back to his body mark. Now for the batter Gitesh. Deep square leg and long off the fielder. Long on. Played nicely into the deep long on region. One more tidy over. The completion of over number 2. The power play over. We are not witnessing any powerful stroke from the batters. Completion of first over. Total score is 10 on the board for the loss of 1 wicket. Time is exactly 4 past 20. It's a time to say good morning everyone. And not to say that tomorrow will be the final day. Not a tomorrow final day. Today will be the final day for MSC Trophy tonight. Because already it's Saturday. After this match, 3 matches which is remaining in the night tonight. After the power play, the fielding restriction is off. And some protection we can see in the deep square leg. The fielder down at mid wicket, the fielder at long on, long off, deep cow point. It's not a deep cow point, between deep cow point and backward point. Mustafa brought in the attack to ball that third over. This time played it straight to the answer fielder, chance of run out. Oh, direct it. It might be all over for Prithviraj. Very lucky indeed. Gitesh just tried to get the single by tapping the ball into that cow point region. Full toss, swings it hard, and that gone many a miles. It's a huge 6 from Gitesh. Mustafa bowled that juicy full toss. You can't do the mistake of bowling a full toss to this man. Low full toss, but he picked it right from the middle of the bat and sends it into that galleries. But the spectators fails to take the catch. 16 for 1. Oh, what a delivery! What a comeback! What a comeback here for Mustafa! What a delivery that one! Unplayable leg cutter. The off stump is uprooted. Can you believe this? Just I want to see it in a replay again and again. This is the delivery of the tournament, I want to tell you, because have a look at that. Received by the beautiful leg cutter. Unbelievable. Even Gitesh technically very sound, but he is also not really read that delivery. What a delivery that one. This is perfectly bowled leg cutter, unplayable. Great comeback here for Mustafa. It's 16 for 2, Sneha Malamar. Pratap is a new batter in. One more excellent player for the side of Sneha Malamar facing Mustafa. Just wanted to go for the drive. Didn't got enough bat onto that, but good enough for him to rotate the strike towards gully region. 17 for 2 in the over. Number 3 is in progress. Mustafa.
This time again Prithviraj, nice technique to get the ball into the square leg region, stretching his front foot, didn't allow the bowler to settle for the big turn. Getting the bat into the line of the ball, picks up a single, 18 for 2. Down the leg side, nicely flicks it down to square leg region for a single. Both the batters are rotating the strike, rightly so. Unless 1-6 in that over, but it's a good over. He caught a wicket of Geetesh in this over. But good enough for the team Sneha Malamar to get some runs in that over as well. 19 for 2 after completion of over number 3, Sneha Malamar. Faisal brought on the attack to bowl that fourth over of the innings of Sneha Malamar. Right arm over wicket balls. Nice ready one towards extra cover, deep extra cover. Tawfiq the fielder in the deep. At 24, the loss of 2 wicket. Faisal, experienced campaigner for the side of NM Cricketers Mangalore. Right arm over the wicket, second time. Nicely bowled, perfectly bowled. The batter just to get Prithviraj wanted to steer the ball down to gully region, but missed it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Checking the stroke, the last moment, slower one there from Faisal. Played it just wide off that mid-off fielder to bring Pratap into strike with the addition of that single scope and Muzan to 21 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Slow progressing here for Sneha Malamar against NM Cricketers Mangalore. Okay, they're going for the quick single in the negation. Excellent running between the wicket. Again, with the addition of that single scope and Muzan to 22 for 2 in the over number 3 is in progress. Faisal, 5th time in this over. Again, swept the ball down to short fine leg region for an easy single with the addition of that single scope and Muzan to 23 for the loss of 2 wicket. Last ball remaining. Faisal to Pratap. This time dot ball. Good over. One more tidy over. So over number 4 which is comes to an end after completion of 4 overs. Sneha Malamar 23 for the loss of 2 wicket. Another 4 overs remaining in the innings. And wait and see how well these two batters will go to get some acceleration in the run rate. But first over probably the team NM Cricketers Mangalore able to put some pressure by picking up wicket and bowling some good overs. And before the next over will going to start here. The time to change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बन चुके इस वक्त। स्नेहा मालेमार टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ एनएम बेंगलुरु के खिलाफ आज के इस छठे और अंतिम मैच में। और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। गेंदबाज
इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट है। बेहतर कटर गेंद थी इस वक्त, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, लेकिन बेहतर तरीके से विकेट कीपर नासिफ ने विकेट उखाड़े जरूर, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। गेंदबाज हैं इस वक्त मुस्तफ़ा, गेंदबाज इस वक्त शुरू कर चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है पहले 4 ओवर का, तो 4 ओवर में बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त दिया है अब तक एनएम के गेंदबाजों ने। हालांकि एक छक्का गितेश ने जरूर लगाया था, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो बचे हुए गेंदों में एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों ने। तो यहाँ पर दूसरे 4 ओवर में अब स्नेहा मलेमार को कुछ हद तक अपनी रन की गति में एक्सेलरेशन यहाँ पर लाना होगा अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर मुस्तफ़ा इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त पृथ्वीराज सामना करते हुए मुस्तफ़ा की गेंदों का, दाहिने हाथों पर तो विकेट, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद कवर पॉइंट की दिशा में गेंद को खेल दिया, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़ा और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ बोथ ओपनर्स फॉर स्नेहा मलेमार। इस मैच की विजेता टीम टॉर्पेडोस काना का मुकाबला करेगी इस श्रृंखला के सेमीफाइनल मैच में, और वो सेमीफाइनल मैच आज रात को यहाँ पर खेला जाएगा। और इस बीच गेंदबाज मुस्तफ़ा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला लेकिन फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी से पीछे तैनात, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। He just played that one with a reverse shot but can't find the gap as well, and because of that he just got a single for that stroke. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, जस्ट सिंगल ही गॉट। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज पृथ्वीराज और प्रताप जो कि पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए, और मुस्तफ़ा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद झुके, शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, फिर से बाई का इशारा अंपायर का, और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रन। 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं, यतीन और गितेश। और इस बीच मुस्तफ़ा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रही, ये गेंद फुल टॉस एंड बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया इस वक्त, और एक बेहतरीन कैच इस वक्त फॉलो थ्रू में लपकते हुए गेंदबाज मुस्तफ़ा। द बॉल केम लाइक अ बुलेट एट द लास्ट मोमेंट, काफी तेजी के साथ गेंद को बैक टू द बॉलर की दिशा में ड्राइव किया था, लेकिन फॉलो थ्रू में एक बेहतर जजमेंट के साथ जितनी तेजी के साथ गेंद आई उतनी तेजी के साथ गेंद पर अपने हाथ अड़ाते हुए देखिए किस तरीके से बेहतरीन तरीके से स्कॉटन बॉल को लपका मुस्तफ़ा ने, और इसके बदौलत एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। द बैट्समैन पृथ्वीराज डिसमिस्ड, कॉटन बॉल्ड बाय मुस्तफ़ा फॉर 7। स्नेहा मलेमार नाउ लुकिंग इन ट्रबल अ लिटिल बिट एट द सिचुएशन, इट्स 27 फॉर 3। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ रंजीत नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर तैयार, और बल्लेबाज प्रताप इस वक्त सामना करते हुए 6वां ओवर प्रारंभ होता हुआ, और फैजल गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। और फैजल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज रंजीत के लिए, जो कि इस वक्त पैर से गार्ड लेते हुए, और सामना करेंगे इस वक्त मुस्तफ़ा की गेंदों का। विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, और फैजल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रंजीत के लिए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर आते हुए गेंद, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया विकेटों के पीछे, और इस बीच वाइड का इशारा हो चुका है अंपायर का। 1+1 2 runs added to the total, 30 on the board for losing 3 wicket. ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया, शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ
दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और गेंदबाज फैजल अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। प्रताप जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फैजल की गेंद तो दाहिने हाथों पर विकेट जमीन के सहारे गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फीडर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। हालांकि स्ट्रोक बेहतर था प्रताप का, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, तो इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन प्रताप इस गेंद पर प्राप्त करते हुए अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा रंजीत द्वारा शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। दिस द 6th एंड लास्ट मैच ऑफ टुडे मॉर्निंग इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और गेंदबाज फैजल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन जस्ट अ सिंगल ही गॉट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर। कम से कम 50 के आंकड़े को यहाँ पर पार करना होगा स्नेहा वाले मार के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो एनएम मैंगलोर के खिलाफ जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और इस बीच फैजल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार इनसाइड आउट स्ट्राइक इनटू द हैंड्स ऑफ कवर पॉइंट फील्डर। रंजीत ने इनसाइड आउट क्रिकेट जरूर खेला था, लेकिन गेंद सीधे पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के हाथ में। गेंद को ज्यादा ऊंचा इस वक्त नहीं उछाल पाए और कवर पॉइंट फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को यहाँ पर लपक लिया। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। जस्ट इनसाइड आउट क्रिकेट प्लेड बाय द बैट्समैन Ranjit and the ball straight went into the hands of cover point fielder. And that is the wicket number 4. It's 36 for 4. Malamar, Sneha Malamar are now looking in trouble. 5 in fact. 35 for 4 in fact. 35 for 4 in fact. Now 6 overs completed. Now just 2 overs remaining in their innings. और गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मुजीब, जो कि स्ट्राइक गेंदबाज, उनके मुख्य गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते इससे पहले पारी का पहला ओवर वो फेंक चुके हैं। सिर्फ 6 रन पहले ओवर में उन्होंने प्रदान किए थे। और नए बल्लेबाज इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद। और प्रताप दाहिने हाथों पर विकेट प्रताप के लिए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 36 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को। और मुजीब दाहिने हाथों पर विकेट। अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज, मौका हो सकता है लेकिन फील्डर कोई वहां पर मौजूद नहीं। शॉट गली पर। और जब तक गेंद को पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस फील्ड कर फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को। और गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज गुरु, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर आसिफ अड्डूर। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर मुजीब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज गुरु इस वक्त पहली बार उनका सामना करते हुए। ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद लगभग पॉइंट पर पहुंच चुकी है इस वक्त। Scored a bat on that at the last moment और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 38 रनों पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और प्रताप एक जिम्मेदारी भरी पारी यहाँ पर खेलते हुए अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल नॉक जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुजीब की गेंदों का। मुजीब दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद प्रताप के लिए पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त गली पर। और फिर से 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा लेग बाई के रूप में। 39 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। Runs are coming still in singles now for the Sneha Malabar. They badly required couple of
boundary or 6 at this stage to accelerate their run rate in this situation. मुजीब अगली गेंद लेकर तैयार गुरु के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव करना चाहा गुरु ने लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली इनफैक्ट इट्स गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 40 रनों पर 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज मुजीब और दाहिने हाथों पर द विकेट अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद बेहतर गेंद पिकर गेंद रनआउट का खतरा इस बार विकेट उखाड़ चुके हैं विकेट कीपर आसिफ अड्डूर थ्रो को रिसीव करने के बाद लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अब अंपायर इशारा करते हुए तीसरे अंपायर की ओर नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो इस वक्त देखिए किस तरीके से गेंद निकली थी शॉर्ट फाइन लेग पर थ्रो पहुंचा फील्डर का विकेट कीपर के हाथ में विकेट कीपर आसिफ अड्डूर विकेट यहाँ पर चटकाते हुए और देखते हैं तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से विकेट इस वक्त उखाड़े जा रहे हैं और शायद बल्लेबाज खतरे में इस वक्त पड़ सकते हैं और तृतीय अंपायर रोलैंड पिंटो जो है इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर एमएससी ट्रॉफी 2025 which proudly presented by Moodbidri Sports Club and the celebration of their 35 years they are organizing this fantastic cricket tournament Underarm floodlight cricket tournament and this tournament is now progressing along nicely in this morning conditions। हल्की सी धुंध ड्यू इस वक्त मैदान पर गिरते हुए और धुंध की वजह से कुछ हद तक सर्दी भरा माहौल इस मैदान पर छा चुका है इस धुंध की वजह से ड्यू की वजह से। और जहाँ तक का सवाल है आज का छठा और अंतिम मैच इस वक्त प्रगति पर तृतीय अंपायर जो कि इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए So he is gone. In fact, he fell just short out of his crease. He has to go. Guru, the batsman, departs. And now the score is 40 on the board for losing 5 wickets. तो नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ न्यू बैट्समैन नंबर 7 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल फोर्सने हमारे मार और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज मुजीब की ओवर की अंतिम गेंद का 24 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए शैलेश गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार और मुजीब ये गेंद इस बार स्वीप किया गेंद को लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली इज जस्ट गॉट अ सिंगल for that stroke. It's off the bat and a single to end the over. Good over from Mujib came to an end. 7 gone. And after 7 overs, still the batsman stops Nehamaramar searching for the right track. It's 41 for 5 after completion of 7 overs with 1 over to go in their innings. So 8th and the final over starts in the Mangalore innings. Atif, the bowler, is now brought into the attack. निश्चित रूप से जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने के सवाल इस अंतिम ओवर में कम से कम 12 से 15 रन स्नेहा मलेमार को यहाँ पर बटोरने होंगे अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और गेंदबाज आतिफ ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार हालांकि फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज शैलेश मिड ऑफ फील्डर के इस वक्त पीछे भेज दिया जा रहा है लॉन्ग ऑफ पर कुछ हद तक सर्दी भरा माहौल इस नमी ड्यू की वजह से हम यहाँ पर महसूस करते हुए इस सुबह के वक्त सुबह के 4:45 यहाँ पर बच चुके हैं। फर्स्ट बॉल इस बार स्वेप्ट इट अवे फाइन डाउन टू अ डीप स्क्वायर लेग इन फैक्ट ही गॉट जस्ट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ
स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 42 रनों पर 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 8th एंड लास्ट ओवर इन देयर इनिंग्स। प्रताप 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और आतिफ प्रताप के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड पैन पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और इस बीच शैलेश सामना करते हुए आतिफ की गेंदों का फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में सफल। बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद विकेट कीपर को वंचित करती हुई उनकी दाईं ओर से निकली और पहुंची शॉर्ट थर्ड पैन पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और आतिफ अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद प्रताप के लिए उछालना चाहा इस वक्त, लेकिन उछाल नहीं पाए। शफल होते हुए स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, अपील को नकार दिया। गेंद शायद कुछ हद तक लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई 1 रन का इजाफा। 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज आतिफ फेंक चुके हैं। सिर्फ 2 गेंदें बाकी स्नेहा मलेमार की पारी में और आतिफ यह गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। क्लीन पिक, बेहतर फील्डिंग लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट 46 ऑन द बोर्ड एंड नाउ जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। अंतिम गेंद बाकी और आतिफ इस वक्त उस अंतिम गेंद को लेकर तैयार। पहले 5 गेंदों में 5 सिंगल रन यहां पर प्रदान कर चुके हैं आतिफ। अंतिम गेंद लेकर तैयार प्रताप के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में। बेहतर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे आते हुए शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा और गेंद उनके बल्ले और पैर को वंचित करते हुए सीधे मिडिल स्टंप को बिखेर कर ले गए। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ स्नेहा माने मार। The innings is up for them. They stipulated 8 overs completed. They managed to score 46 for the loss of 6 wicket. After the completion of 8 overs, and a good innings came to an end from good innings came to an end from Pratap. Is out. Final delivery. Is out in the final delivery of their innings, and now the target for NM Mangalore is 47. They have to score. 47 runs in the stipulated 48 deliveries with the required run rate of exactly 5.88 runs per over. As far as the required run rate is concerned for them, with the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर 47 रनों का लक्ष्य 47 के लक्ष्य तक एनएम के बल्लेबाज निर्धारित 8 ओवर में पहुंच पाते हैं नहीं 10 विकेटों की मदद से। फिलहाल उनकी पारी की यहाँ पर शुरुआत होगी चंद लम्बों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम टुडे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए जब एनएम मैंगलोर की पारी की यहाँ पर शुरुआत होगी। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जस्ट टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ। तो अब वक्त है एक ब्रेक का और वक्त है डीजे का। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And 47, the target set by Sneha Malamar for NM Cricketers Mangalore. And the opening batters are already they made their way to the middle of the pitch. Altaf is a striker.
And Rashid Baba will be the non-striker. So wait and see how well these two batters will going to lay the foundation for team NM Cricketers Mangalore. Not a huge total to chase down, but you cannot underestimate as well against team Sneha Malamar. They got some good bowling department and even better fielding. So Ranjit will go into start the proceedings from the far end. How to get a good start from the ball, and Sneha Malamar, of course, NM Cricketers Mangalore also, they wanted to get a good start. First ball. Driven finds a gap down to deep square leg region. The ball definitely will not going to cross the boundary. The one of the fielder, Gitesh, how to run from the deep mid wicket to deep square leg to stop that boundary. And here is ample time for the batter to complete 3 valuable runs. Even notice even that not fully controlled stroke there from Altaf, but good enough. Has got his bat speed. Because of that bat speed, he managed to get that 3 valuable runs. So tonight we are going to start the match between Red Wings Kunjat Bail versus team FCT Puttige exactly at 6 p.m. The 3 matches remaining, 2 semi-final and 1 final. Oh, this time a plum in front of wicket, absolutely no doubt at all. Rashid Baba across the line, shuffled across the line of the delivery. Couldn't manage to read that leg cutter, slow leg cutter from Ranjit. And that was absolutely plumb in front of wicket. Right, that ball is hit him a back foot. The wicket number first is back in the pavilion of NM Cricketers Mangalore. 3 for 1. So winner of this match will go into play against team Torpedoes Khana in the semi-final today. That will be the second semi-final of tonight MSC Trophy 2025. After that we are going to witness a mega final. The Moodbidri Sports Club celebrating their 35th year of successful journey. All that we are seeing that today will be the one of the longest night and day. Ranjit again to Asif. Oh, is master of bowling that kind of deliveries like utters. Can surprise any batter. The great start there from Ranjit. 3 for 1. Right arm over the wicket balls. And I wanted to go for the switch, it missed it completely. 3 for 1. Ranjit from the far end. Final time in this over. Quiet over is in progress. Wicket as well. The kind of start which is required for Sneha Malamar. Ranjit so far succeeded. But 1 ball remaining in this over. This time wanted to go for the sweep shot. But missed by the wicketkeeper behind the stump. By call by umpire. Excellent over from Ranjit. Just 4 came from that over. That ball just missing that stump. In fact, 1 ball remaining in this over. Please me note. 1 ball remaining in this over. 4 for 1. That brings Altaf into strike. Ranjit. Oh, what a delivery.
The fantastic one again from Ranjit. There are 2 wickets in that over. And now the Sneh Malmar looks like they are in the game with that 2 wickets. And NM Cricketers Mangalore, they think that this is going to be an easy task for them. But now here onwards, after Ranjit has got a good start with the 2 wickets and 4 runs, the match is going to be very interesting. Tawfiq is a new batter in. Usually is a batter wanted to come to bat with as an opener, but here is coming as a number 4 batter. And Asif and Tawfiq, the 2 batters in the middle. The experienced campaigner for NM Cricketers Mangalore need to bat sensibly here. Kiran brought into attack to bowl the second over of the power play from the commentary box end. No protection in the deep in the offside. The 1-2 protection which is long on and deep square leg. Asif is the good striker of the ball on the onside region. Kiran, left arm over the wicket. Pass umpire Mohan. Catch it is a goal and the fielder is underrated. Wicket number 3 back in the pavilion. The wickets are falling in a hurry for NM Cricketers Mangalore. Asif Adur, the batter who is known to be more dangerous for any opposition, is back in the pavilion. Is out for Golden Duck, facing his first delivery. Ranjit, the fielder, taken the catch. Now they are looking in deep trouble. 4 for 3. I've already mentioned Sneh Malamar has got some excellent bowling department and even better fielding as well. So NM Cricketers Mangalore have to bat sensibly. Now Atif, the top all-rounder, need to bat sensibly, need to deliver for his team. NM Cricketers Mangalore, not a good season for NM Cricketers Mangalore, season 24-25. At least they wanted to finish the season with some big titles under their name. They have to bat really very well. Kiran bowls lovely delivery, perfectly angled, which is moving away from the right-hander batter. Atif, no run scored. 4 for 3. Under pressure moment here for NM Cricketers Mangalore. Lost 3 wickets. Oh, lovely delivery again. Perfectly delivered from Kiran after getting inspiration from his partner. With that great start from Ranjit with the 2 wickets in the first over. Now Kiran is also continuing with some good line and length. Kiran again. To Atif. Swept the ball, swept that very nicely in the gap towards the deep square leg region. Fielder behind the ball. One of the fielder will go to stop that one. And another fielder will go to pick that and returns the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 6 on the board for the loss of 3 wickets. Atif knows that he is a key man now for the team. NM Cricketers Mangalore along with Tawfiq have to build the innings. 6 for 3. This time total misjudgment. Total misjudgment of the line.
And have a look at the Taufik. Very interesting seeing that way that is questioning the umpire Mohan Ayade with the eyes. And now he is asking the umpire to go for third umpire to see whether it's going to be wide or not. Very interesting sometime. So that's a wide ball. That was a good call from Taufik from the non-striker's end. Very difficult for umpire to watch sometime. We can see the line which is covered with the dust. Not so easy for the umpire to watch that line, especially when the ball is very close to that frame line. 7 for 3. Lofted, what a shot! One bounce into the fence. This is what Atif can do. The perfect player to handle the pressure. Just up and over. Just lifting his front foot. Transferring his weight onto the back foot. And straight handsomely down to deep long on for 4 runs. With that boundary scoreboard moves on to 11 for 3. Again across the line, swings it, set is answer field, a chance of run out. Kick work required, diving attempt there from Taufik to save his wicket from that run out. So one more over completed, one boundary in that over altogether after completion of over number 2. NM Cricketers Mangalore 12 for 3. Some great day for cricket, but this is the one you are watching in that LED screen, and that is the legend of MSC. Salam taken that screamer in the deep square leg. One of the best back catch of the day. Just have a look at it in the replay again. The way that Salam is running from the deep. Lovely single-handed screamer, isn't it? Absolutely perfect. Perfect example for the youngsters. The commitment from the deep to that catch has been outstanding. Age is just a number. Salam. Big salam for that catch. So 12 for 3. 35 required from 36 balls. Match is not yet over. But one boundary in that previous over might be that little bit of relief for NM Cricketers Mangalore. So for that catch, 2,000 rupees is announced by the owner of Bedra Cafe for Salam. 2,000. 35 required from 36. Kiran brought into attack. Appeal, Flum, absolutely Flum in front wicket, no doubt at all. Atif going for switch it, pays the penalty for that. My goodness, this is going to be a huge wicket here for Sneha Malamar. Not a great idea. You are facing a first delivery of Kiran, isn't it? You have to see the ball, you have to chase the bowler's ball. This is not a great idea to go for unorthodox switch it. It's absolutely Flum in front of wicket, no doubt at all, in the mind of umpire Harish Padil. 12 for 4. NM Cricketers are looking all short of trouble. Sneha Malamar has got ability. They got a habit of depending a small total. If you look at the history of Sneha Malamar, there's so many times they depended a small total because of their the bowling department what they got. Especially the spin bowler, the spin attack like Kiran, Pratap, Ranjit and Geetesh, all top class bowlers in the side. Even Kiran, also a very good starter for Sneha Malamar, Kiran Senior.
Just going to reach that one to get the single down to cover point region by the new batter Shahz. One more the good player for the side of NM Cricketers Mangalore, young star. With the addition of that single score, moves on to 13 for 4. Kiran balls again. Taufik is a very dangerous man, but he just wanted to play that one dangerously. Losing one more wicket here, definitely asking for trouble. Taufik just wanted to go for the expansive drive, missed it completely. Catch it is just falling short of the fielder Prithviraj. The once this looks like the batter almost played it in the air. Opportunity for Prithviraj to take the catch. Just have a look at that one replay. Just falling short of the fielder. Otherwise, it's going to be one more wicket. The more trouble for NM Cricketers Mangalore. It's a 14 for 4. Over number 3 is in progress. Shahz will going to take the strike. This time down the leg side, Shahz wanted to swing his bat, but missed it completely. Off cutter from Kiran sometime. He will going to get some extra turn, extra deviation. 14 for 4. This time he got a connection. This is a huge one. One of the biggest 6. Ball is disappeared out of the park. My goodness, what a hit there from Shahz. Just have a look at it in replay. Down the leg side and hit that one pretty well. Where the ball is gone. It's out of the park. The biggest sixer of the tournament. No one hit the ball out of the park, especially in that direction. The ball is went many miles out of the park. What a shot. All the efforts are gone in vain in that last ball of the over by Kiran, and scoreboard jumps into 20 for 4 after completion of over number 3. 27 required from 30 balls. That will go into release the pressure straight away from NM Cricketers Mangalore. The 6 which just came in the last delivery of the over by Shahz. Kiran drifted that delivery just outside the line of leg stump. But the way that Shahz has picked that ball right from the middle of the bat. 27 required from 30 balls, and Pratap brought into attack. You need to do something special here, Pratap. One more spin bowler, cutter bowler. Starts with the delivery which is called as a wide. Little margin for error when you try to bring the ball around the legs of the batter. One more extra. 21 for 4. Oh, this is not a good start there, Pratap. Second wide, consecutive 2 wide delivery. Just expecting from Pratap that it is going to be a over for the team. Sneha Malamar, maybe the economical. Again, I wanted to go for the big shot. Chance of run out. Oh my goodness. Direct, it might be all over for Taufik. What is really doing that? After he's completely beaten by the flight. Fumble from Yatin, but Yatin couldn't manage to get the stumps. It's a golden opportunity for the Sneha Malamar which is missed out. Pratap again. Oh, left it right in the gap. One bounce into the fence. What a pick. What a placement there from Taufik. The fantastically struck. What a shot that one. Have a look at that one. Drags it from outside the line of off stump. Even though there is a fielder in the deep mid wicket and deep long on. But fails to stop the boundary.
26 for 4. 21 required from 27 now. Equation. NM Cricketers Mangalore definitely its favors. One more dot ball. 21 more required for the victory. Last 2 balls left in this over because he bowled 2 wide deliveries in the beginning. Again swings and missed. Now the bowler Pratap just shortening the length, realizing that the bowling puller length it's asking for trouble for Taufik. He hit that one pretty well down to long off region. Mani the fielder in the deep. He will go to retain the strike for the next over. So after completion of 4 overs, 26 for 4. 20 required from 24 deliveries for NM Cricketers Mangalore to reach to the semi-final. 27 for 4, 20 required from 24 balls. Needed one good over here for the team Sneha Malamar, but sensible batting required for NM Cricketers Mangalore to reach to the semi-final. It's over to Gopi for the further explanation of the match. Final time in this particular morning. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त 27 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ एनएम बेंगलुरु का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है मलेमार स्नेहा मलेमार के गेंदबाजों को। और रन से इस वक्त चाहिए 20 रन। 24 गेंदें बाकी। 4 विकेट हालांकि गिर चुके हैं। पहले 2 विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव जरूर था, लेकिन उसके बाद तौफीक और शाह जो कि पारी की भागदौड़ को संभाले हुए, और शाह ने एक छक्का भी झड़ा पिछले ओवर में। फलस्वरूप इस वक्त एनएम का तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ। और गेंदबाज रंजीत अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, और विकेट कीपर ने तेजी के साथ, प्रताप जो विकेट कीपर थे, तेजी के साथ विकेट जरूर चटका, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। और जहां तक सवाल है रन का, तो रन से इस वक्त नहीं मिलेगा। और रंजीत का जहां तक सवाल है, पहला ओवर काफी बेहतरीन उन्होंने फेंका था। 4 रन प्रदान करते हुए 2 महत्वपूर्ण सफलता, 2 विकेटों को वो प्राप्त करने में सफल रहे थे। और अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ तक ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार इट टेकन ऑन हिज फॉलो थ्रू। दिस इज एन अ गुड कैच, परफेक्ट लेग कट डिलीवरी। और बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची, जहां पर रंजीत थे। शार्प कैच था, लेकिन अंतिम क्षण में अपने दूसरे प्रयत्न में इस कैच को वो लपकने में सफल रहे। और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज तौफीक का, तो तौफीक की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। स्ट्रगलिंग पारी कहना पड़ेगा। हालांकि एक चौका उन्होंने जरूर झड़ा था, लेकिन सिर्फ 5 रन बनाए, और गेंदों का उन्होंने सामना किया 9। तो 9 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद तौफीक पेविलियन वापस 5वां विकेट गिर चुका है। नाउ इट्स 27 फॉर 5। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, निश्चित रूप से यहाँ पर कम बैक करना है स्नेहा मलेमार के गेंदबाजों को। तो इस वक्त उन्हें चंद विकेट और उखाड़ने होंगे कम अंतराल में। और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार रंजीत की गेंदों का। रंजीत 3 विकेटें अब तक प्राप्त कर चुके हैं। और मुस्तफ़ा नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और इस बीच गेंदबाज रंजीत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद मुस्तफ़ा के लिए क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स बाय प्रताप, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। कोई इशारा नहीं अंपायर का, सही गेंद तक घोषित। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर। 3 बेहतर गेंदें 101 में गेंदबाज रंजीत फेंक चुके हैं, और अंपायर जो कि विकेटों को सही करते हुए। और इस बीच
रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दर्शकों की संख्या काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। पिछले मैच में टॉरपेडोस कान्हा और यंग फ्रेंड्स के बीच जो पिछला मैच हुआ था तब लगभग मैदान दर्शकों से भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद उस मैच के बाद दर्शकों की संख्या में काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और सुबह का वक्त लगभग 5:30 यहाँ पर बजते हुए और इस वक्त द्वितीय सेमीफाइनलिस्ट के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मुकाबला जारी है यहाँ पर एनएम मैंगलोर और स्नेहा मलेमार के बीच। एक एक्सक्विजिट बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान इनके साथ में। और इस बीच गेंदबाज रंजीत अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद परफेक्ट लेग कटर, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, लेकिन अंतिम क्षण में बेहतर विकेट कीपिंग भी जरूर की प्रताप ने, लेकिन गेंद लगभग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए और आखिरकार इस लेग कटर गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए बल्लेबाज मुस्ताफा। फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम रंजीत। और इस गेंद पर बाल बच चुके हैं। 1.4 ओवर्स ही बॉल्ड, कंसीडर्ड जस्ट 4 runs and he already captured 3 wickets. This is an absolutely fantastic bowling performance continuing here in 8 overs format. और अंपायर विकेटों को एक बार फिर से सही करते हुए और अब इक्वेशन स्टैंड्स 20 रिक्वायर्ड फ्रॉम 20 डिलीवरीज। 20 गेंदे बाकी 20 रन चाहिए विजय के लिए। और रंजीत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज मुस्ताफा 2 डॉट गेंदे इस ओवर में वो अब तक खेल चुके हैं। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर रंजीत इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बाउल्ड आउट। इनफैक्ट ही मिसेस एंड इज गॉन। एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है। अपील जरूर थी, बैक लेग पर गेंद टकराई थी, लेकिन अगर बैक लेग पर गेंद नहीं टकराती होती तो निश्चित रूप से गेंद स्टंप्सों को टकराती, लेकिन कुछ हद तक शायद बाहर की ओर निकलती हुई गेंद थी। और यहाँ पर रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में ये विकेट गिर चुका है। शायद गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी। और जहाँ तक सवाल है रनआउट का, तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है मुस्ताफा का। One more wicket fall on 27. This is turning out to be a fantastic over from Ranjit. He conceded no runs in this over in the first 5 deliveries. And now the match stands in a balance. 20 runs required from 19 deliveries. और विकेट इस वक्त गिर चुके हैं 6 और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ। इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज नए बल्लेबाजों के इस वक्त सामना करते हुए रंजीत की गेंदों का। और वो इस वक्त सामना करेंगे रंजीत की गेंदों का। 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में, 5 डॉट गेंदें रंजीत इस वक्त फेंक चुके अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, विकेट कीपर प्रताप तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। लेग बाय का इशारा और मेडन विकेट। यहाँ पर रंजीत का ओवर समाप्त हो चुका। फैंटास्टिक bowling spell came to an end from Ranjit. 2 overs, 1 maiden, 4 runs and 3 wickets. This is an outstanding spell in 8 overs format. तो यहाँ पर मेडन ओवर फेंक चुके हैं रंजीत। जो 1 रन बना था इस ओवर में वो लेग बाय के रूप में बना था। तो इस वक्त 2 ओवर 1 मेडन 4 रन और 3 विकेट। बेहतरीन स्पेल इस वक्त समाप्त हो चुका है रंजीत का। और कुल मिलाकर ओवर नंबर 5 की समाप्ति होने के बाद इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा स्नेहा मलेमार इस ओवर की बदौलत इस मैच में वापस आ चुके। दे कम बैक वेरी वेल इन दिस मैच बिकॉज ऑफ दिस ओवर which bowled by Ranjit conceded just a single run in the face of leg by. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए प्रताप इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और गेंदबाज बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इमरान, जो कि पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर लेग बाय के रूप में 1 रन बटोर चुके हैं। So the scoreboard stays at 28 for the loss of 6 wicket, 19 required from 18 deliveries. पहली गेंद प्रताप की। यह गेंद इस वक्त गेंद को खेलना चाहता, चूंकि डॉट गेंद बेहतर गेंद इस वक्त 17 गेंदे बाकी 19 रन चाहिए।
और दबाव कुछ हद तक बल्लेबाज के ऊपर इस वक्त साफ नजर आता हुआ। और प्रताप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूंकि एक बार फिर से डॉट गेंद। नाउ 16 balls left, 19 runs required. The tide is now slowly turning. और बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज ने हमारे मार के पिछले ओवर में सिर्फ एक रन रंजीत ने लेग बाय के रूप में प्रदान किया था। और यहाँ पर पहले 2 गेंदें प्रताप इस वक्त डॉट कर चुके हैं। और अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद वाइड का इशारा, लेग कटर गेंद फेंकी थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 ऑन द बोर्ड। फुल टॉस ड्राइव कर दिया गेंद को लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। इनफैक्ट ही जस्ट गॉट अ सिंगल। और गीतेश लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे गेंद को फील्ड करते हुए। और गीतेश का थ्रो पहुंचता हुआ नॉन स्ट्राइक पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर। प्रताप इस वक्त गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज शास के लिए। ये गेंद शास ने गेंद को बोड़ना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। इनफैक्ट शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है इट्स ऑफ द बैट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 31 रनों पर। 31 for 6 नाउ इन द ओवर नंबर 6 in progress. The equal battle is now continuing here. प्रताप ये गेंद इस बार चिप किया, जस्ट ओवर द कवर पॉइंट फील्डर सेट। और कवर पावर रन आउट का खतरा इस वक्त थ्रो पहुंच चुका है लेकिन बल्लेबाज यहां पर शायद ऐसा कहना पड़ेगा दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। कवर पॉइंट पर जो फील्डर थे किरण ना कुछ हद तक 2 कदम आगे आ गए थे। अगर 2 कदम पीछे खड़े रहते तो शायद गेंद उनके हाथों में पहुंच सकती थी और ये कैच को लपक सकते थे, लेकिन 2 कदम आगे आने की वजह से गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल गए। इस बीच बल्लेबाज 2 रन तेजी के साथ पूर्ण करने में सफल। 33 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 6 विकेट्स। और गेंदबाज प्रताप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ऑफ कटर गेंद थी, इस वक्त गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 34 ऑन द बोर्ड। और इस वक्त ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है। 6 overs completed, 34 on the board, and now 12 balls left and 13 runs required. 47 the target, 34 already scored in the innings of NM Mangalore, and now 13 required from 12 deliveries. और काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई गेंदबाजों इस वक्त फील्डरों के बीच में स्नेह माल मार के कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है। और जहाँ तक सवाल है क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों का, तो शाहज और इमरान ना जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। और काफ़ी लंबी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज गीतेश के हाथों में, जो कि अत्यंत अनुभवी गेंदबाज है। स्नेह मालेमार की ओर से कई वर्षों से वो स्नेह मालेमार का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर एक परिपूर्ण ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं स्नेहा मालेमार के लिए। पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। इमरान जो कि सामना करने के लिए तैयार रहा और इस वक्त गीतेश ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। 13 to get from 12 deliveries. Still the match is in balance. फर्स्ट बॉल गीतेश, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, प्रताप गेंद तक पहुंचे, रन आउट का खतरा, लेकिन आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा गेंद से अपने शरीर को अलग करने का पूरी तरह प्रयास किया था, लेकिन गेंद के ढकेलते हुए इस वक्त निकल गए बल्लेबाज और रन आउट का मौका इस वक्त प्रताप के हाथों से जा चुका है। तो 1 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। और इस बीच अंपायर दोनों अंपायर कुछ बातचीत करते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बातचीत का, तो देखते हैं यहाँ पर बातचीत करने के बाद दोनों अंपायर्स रोलैंड पिंटो और हरीश पटेल यहाँ पर क्या निर्धार लेते हैं। अब तीसरे अंपायर के लिए सौंपा गया है इसका परिशीलन न करने के लिए।
तो तीसरे अंपायर यहाँ पर इसका परिशीलन करते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त देखते हैं तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। नो डिलिबरेट, दैट मीन्स सिंगल रन एडेड टू द टोटल। जानबूझकर उन्होंने शरीर गेंद पर शरीर लगाने नहीं दिया था, गेंद से अपने शरीर को हटाने की पूरी कोशिश उन्होंने की थी आखिरकार, तो एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस एक रन के साथ 35 रनों पर अब। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए रन का, तो 12 रन चाहिए इस वक्त, 11 गेंदें इस वक्त बाकी। और गितेश दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्डमैन पर काफी करारा प्रहार करना चाहता बल्लेबाज ने, लेकिन इस वक्त गेंद को कनेक्ट करने में सफल। जस्ट सिंगल, ही गॉट 36 ऑन द बोर्ड in the over number 7 in progress, 10 balls left। और ये गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन पर फील्डर थोड़ी सी स्क्वायर तैनात, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, थ्रो पहुंचा, बेहतर फील्डिंग और बल्लेबाज के पास सिर्फ मौका एक रन प्राप्त करने का। 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 10 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 9 बॉल्स। धीरे धीरे ये साझेदारी जमती हुई इमरान और शास के बीच में, और गितेश अगली गेंद लेकर तैयार, बॉल आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन दिस टाइम एंड ही जस्ट लॉस्ट हिज विकेट। और इस वक्त नॉन सेकंड के बल्लेबाज काफी इस वक्त काफी नाखुश दिखाई देते हैं स्ट्राइकर के बल्लेबाज हैं, और तुरंत उन्होंने आकर कहा कि आपने इतना जोखिम भरा स्ट्रोक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर विकेटें सिर्फ 4 बाकी है, और इस वक्त इससे जोखिम भरा स्ट्रोक लगाने की वजह से, स्ट्रोक लगाने के प्रयत्न करने की वजह से यहाँ पर विकेट गिर चुका है। गेंद लेग स्टंप को उखाड़ कर ले गई थी और बल्लेबाज शाज की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। हालांकि इमरान ने काफी असंतुष्टि उन्होंने इजहार की बल्लेबाज शाज से कि ऐसे तरीके का स्ट्रोक उन्होंने क्यों खेला इस गेंद पर, रन इस मैच के नाजुक मोड़ पर। 8 गेंदें बाकी, 10 रन चाहिए विजय के लिए। 10 runs to get from 8 deliveries. One more good match is now progressing here of this prestigious cricket tournament, MSC Trophy 2025, which is proudly presented by Moodbidri Sports Club. The celebration of their 35th year, they are organizing this fantastic tournament. And the 6th and the last match of today morning is now progressing here. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का न्यू बैट्समैन कम्स आउट टू द मिडल। मुजीब इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, लेकिन इस बार गितेश की गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, डॉट गेंद, और अब द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। नाउ 7 balls रिमेनिंग, 10 runs रिक्वायर्ड, और मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। बेहतर गेंदबाजी गितेश की, अगली गेंद धीमी लेग कटर के, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, वाइड का इशारा हो चुका है। परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद फेंकनी चाहिए थी गितेश ने, लेकिन गेंद दिशाहीन इस वक्त उन्होंने फेंकी। 39 द स्कोर नाउ, 7 balls left, 8 runs required. What a match is now progressing here. और इस ओवर में अंतिम बार गितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद गेंद को इस बार रिवर्स शॉट खेला है खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त बल्लेबाज इमरान द्वारा, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। 41 on the board, that means 6 runs to get from the last over, that means in remaining 60 overs they got 3 wickets kept intact, 3 wickets they got in their hand. पिछले मैच में भी 6 गेंदों पर 6 रन यंग फ्रेंड्स शुरुआत को बनाने थे, जब मैच टाई हुआ था सुपर ओवर में टॉर्पेडोज खाना ने विजय दर्ज किया था, और यहाँ पर भी एनएम मैंगलोर को 6 गेंदों में 6 रन बनाने हैं स्नेहा मालेमार के खिलाफ, और देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या होता है। तो अंपायर ने इशारा किया कि they are exceeds their time limit, so one fielder they have to put inside the 20-yard circle. और गेंदबाज किरण, it's already 5:30 in the morning, और जहां तक सवाल है आज का अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। किरण गेंदबाज मैच निर्धारित ओवर, मैच डिसाइडिंग ओवर लेकर तैयार। इस बीच मुजीब सामना करते हुए, किरण जूनियर पहली गेंद लेकर तैयार, 6 of 6, here we go, पहली गेंद लेकर तैयार किरण। दाहिने हाथों पर द विकेट मुजीब के लिए, यह गेंद इस बार मुजीब ने गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, तेजी के साथ एक रन यहां पर बल्लेबाज को मिलेगा।
और वाइड का इशारा। तो वाइड के इस रन के साथ समीकरण इस वक्त आसान होता हुआ एनएम मैंगलोर के लिए। अब 4 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 6। निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना बॉलिंग, इररेस्पॉन्सिबल बॉलिंग कहना पड़ेगा। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर फेंकी थी। मैच के इस नाजुक मोड में गेंदबाज किरण ने अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर और 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। बाई का इशारा, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए थे और आखिरकार बाई के रूप में 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। 45 on the board, that means just 2 runs required for victory in remaining 5 deliveries. The things getting much easier for NM Mangalore at this situation. एनएम मैंगलोर के डगआउट में काफी जोश उल्लास इस वक्त दिखाई देता हुआ। उनके सपोर्टर्स इस वक्त तालियों के साथ, सीटियों के साथ अपनी खुशी का इजहार यहां पर करते हुए और यहां पर सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज इस वक्त इमरान और किरण जूनियर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। लगभग सारे फील्डर इस वक्त बल्लेबाज को घेरे हुए 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। अगली गेंद, ये गेंद स्वीप करना चाहा, इस बार रन के लिए दौड़ पड़े प्रताप पहुंचे, लेकिन गेंद तक जब तक वो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड एंड नाउ जस्ट 1 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 4 डिलीवरीज। और किरण जूनियर अगली गेंद लेकर तैयार। मुजीब के लिए पुल किया इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑफ पर खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए आफ्टर फर्स्ट बाउंस और इस चौके के साथ एनएम मैंगलोर रजिस्टर्ड अ थ्रिलिंग विक्ट्री by 3 wickets with just 3 balls to spare against Sneha Malabaran. With that thrilling victory in the last over with just 3 balls to spare with 3 wickets, they are through to the semi-final of this competition. और एनएम मैंगलोर का मुकाबला होगा टॉर्पेडोज काना के साथ सेमीफाइनल मैच में और वो सेमीफाइनल मैच आज शाम को यहाँ पर खेला जाएगा। So that's it for today morning। और आज के सर्व 6 मैचेस पूर्ण हो चुके हैं और जहां तक सवाल है सेमीफाइनल मैचेस जो कि आज शाम को खेले जाएंगे, पहला सेमीफाइनल मैच शाम को 6:30 को यहां पर शुरू होगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। शाम को फिर मुलाकात होगी आपके साथ 6:30 पर। धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಲಾಂ ರವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಲಾಂ ಇವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಸಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಲಾಂ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So that's it for today morning, and now we'll be back right after the long break. In fact, not with a short break, but it's a long break at exactly 6:30 p.m. on today evening. Till then, we are saying you goodbye. Thank you. Dhanyavad. Man of the match of this match award goes to. Just we have to decide the man of the match, and we're just taking a short break. Thank you. So man of the match of this match award goes to Shaz, who contributed well from the bat, scoring 10 runs, and because of that, including a huge 6, he scored 10 runs, and because of that, he adjudged man of the match. I request Shaz of NM Mangalore, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So that's it today. That's it for today morning, and we'll be back right after a long break at 6:30 p.m. in the evening when the first semi-final match will going to begin. And now we are saying you goodbye right from here, our commentator box. Thank you. Dhanyavad.